Hi guys, how are you? Hello everyone. Hi Vishania, how are you? Hey, good morning. Very good morning guys. So early in the morning, Vishania? Okay guys, so screens are black, is it? Yeah, now is it okay? I hope. So maybe might be some sort of issues.
Okay, guys, I'll be back.
Hi guys. Hi sir. Hi. How are you? Hi. ABD Wallabh. Hi. Hi guys. How are you? I hope everyone is all okay. Fine. So it's winter, guys, and the winter is winter. That's what it is. Anyway,
Guys, I'll speak. Yeah, further. Just wait a minute, guys. Let everyone comes online, then I'll speak. Yes, I understand. Yes. Yes, from Shikhar. Yes, it's all good. Yeah, right now I have not started, but I can. I'll start this with 10 lots. So let me see. I'll buy one trade history. Okay, four of them got bought. So I was planning to buy and the market rallied up. So eventually, anyway. So the cost is not a perfect indicator. There has never been, and that never will be a perfect indicator. But because I have lost so much money in the market with the trades, I think we cannot put a non-compare and very. I don't think so. This like works out. Behind every consistent profitable trader, there is a lot of losses, mistakes, and lessons learned. Yeah, that's true. Yes, guys. Uh, so anyway, guys, let's focus on that part, not onto this one. Hi Vishanya, market direction is up. Yes, it's up. Yes, Vishanya, it's up. Yes, हाँ जी, बोलिए. Yes, Vishanya, yes. How are you doing? Yeah, it's all good. Guys, we are running up, and here it is. Okay, guys, let's see one thing that
we have a stop loss over here, okay, and the target price. Okay, now this thing is having a reverse position. This thing. Now we have a reverse trade over here. This. So guys, the overall performance of the bot was not good. So since we are having 8k losses, and I believe that yesterday the entire day, like only three profits was hit. Rest only the stop loss got hit. So let's see how market reacts today. Okay guys, so let's see. This is what happening. So guys, see, as soon as I bought it, the market rallied towards the upside. Okay, so look guys, the goal is not to, I know the market, I know very well how exactly it works, but trust me guys, you guys do not know. Now I have some less time over here because I'm not able to explain you stuff properly. Okay, so if I would be doing a manual trading, but I cannot, but still I'm trying to make you understand that go to the higher time frame. Okay, if you go in the higher time frame guys, watch, this is the sell stops, okay, and this one is the buy stop. Okay, so yesterday we have a lot of trades that we have taken, but none of them worked out. So right now the market is like kind of a consolidating. Okay, so you have to understand to this that the market will go to this point and it will get reversed back. Okay, or maybe it will go to this point and maybe it will get reversed. Okay, so either way there will be kind of a two things that are going to happen. Okay, but we are not sure, but we are definitely one thing for sure, that the market will hit our targets. So we'll do just one thing.
Okay, guys, said hi. Hi, ringtones. Hi, how are you? And Shom Shekhar Rao. Hi, how are you? How you guys are doing? तो guys देखो यहाँ पे just watch one thing. Uh, over here we have this one. Okay, this is the sell stop. Now we have this one, buy stop. Okay, we have buy stops. Okay, we call this as a buy stop. If the market take this high 4153, we expect market to go little higher. Okay, if it didn't, then trust me, the market will go to this point, it will go to this point. Okay, so it's all depend upon this one. Like we have this one. Okay, now consider this as a range. Okay, a range that needs not to be get, or it needs to be get taken out. Okay, only then you'll be able to make take or trades. Okay, there, because there is a lot of blocks over here. You see, the one block is like the whole this one, the another block is like this one, other block is like this one, from here to here. So all those things. Now see one thing, guys. We have this, we have this point. Okay, now suppose if the market is valid from point here to point here, the next market will come to this point too. Okay, but if this point is get broken up, guys, if this is the point, that is 4149. Okay, if suppose what's the low of this, not getting, I think, let me settings open high, crossbar, one click panel to create separate trade positions, to volume, cut out, line, candlesticks. It's all good. But anyway, guys, all I can do is now, yeah, I can go backward. Okay, finally. So, guys, what you need to focus on to that in this market, look on the point here, the market rallied up towards here. Again, the market rallied towards here. Okay, so this forms a circle. Okay, this forms an M pattern. Okay, here. Okay, it always from point here to just see the point here. Okay, this becomes one. Now this from here, there was an expansion. Now from this point here to point here, so perfect, right? So from here to here, this becomes this one. Okay, there was an expansion. Now this point to this point, it all becomes one. This is simple theory, guys. You can make a lot of things into this one, and you can make nothing out from this one. So this is something that I must say to you. I've just showed you the general picture because I know you guys follow so many concepts, ICT and SMC and indicators. So the one thing that I have said is an universal one, because I know if you become a successful, okay, trader, or when you will become a successful trader, only when your model, when your mental model is perfect picture like ready, okay, only then you will be able to outperform in the market. Till then you won't be able to do this, and to make that model get ready for yourself, trust me, it might take you, either it's going to take you 5 minutes, or it's going to take you 5 years, or it's going to take you 50 years. Okay, so it all depends upon the moment of now. So so that's up to you guys, that's not up to me also. Okay,
My job is to give you or show you the path. Okay, if you have your trade setups, today you are using bot to trade. Bala Murugan, yes, it's just the bot that is managing the position. Yes, Bala Murugan. Antonio Shane Sacramento said hi. Hi Antonio, how are you? How are you doing? Hi Antonio, how are you? From which country you are from speaking? Sacramento. Oh, it's a nice name. ट्रेंडिंग मूवी ट्रेंड्स आपको कितना टाइम लगा है ट्रेडिंग में ऑनेस्टली बोलूं तो इट टुक्स मी ऑलमोस्ट 6 years 6 years I was in loss I was in loss after that I became profitable so it took me 6 years all just because I was doing trial and error method sometimes when I lost the money I have no support so it was all I was doing okay minimum it can be more than that it based on your understanding it based on your logic okay how you take things so seriously that's up to you so maybe I think the first 3 years I didn't took things seriously maybe a lot of things was with me I understood but after that in the next 3 years I was like yeah I got this this is a dynamic hedger okay just go to the visit uforexai.com over there guys you can see the dynamic hedger it one day there's a free trial for 7 days 49 what it does it just manage your positions okay suppose I have had a buy okay now the market is going in my favor so if the market goes against it guys it places a reverse stop like for look I have placed $10 $10 $10 $10 or this $10 I have placed now the reverse order is like 15 15 15 15 15 this is also 5 okay now where it is placed uh look, my stop loss, my target price is 1541. Sorry, 4154. Sorry, 4152. I bought it. So my target would be 4162. Okay, but and my stop loss would be 4142. Okay, but I have a reverse order at 4142.72. That is 10 pips below than this point. Okay, so yeah, sorry, not 10 pips. It's like yeah, so 10 points below. Just let me say 10 points. So it will be perfect for you to know, understand. Okay. Now, so it has automatically placed this reverse order. Why? Which see the lot size is also increased from 5, from 0, it increased to 0.05. Okay. This is how we manage the risk. If the market goes against, okay, there will be a small loss. If the market is within, then there will be not big profit we are expecting. Okay. The market has to be trendy okay in order to make profit out from this. So guys we are not expecting some good movement because today is US bank holiday.
Can you show your balance? Yes. Sir, how to manage bot? Yes, Mission, yeah, I'll teach you that how to manage it. But you can manage it properly, okay, by yourself also. You can cut the positions. I'm not cutting the position because I'm not allowed to cut, but I'm just running it, okay. So you can do it by yourself. Suppose if your stop loss got hit, then reverse trade will automatically get activated. If your target get hit, then all you need is to cancel the previous stop loss, previous order which was placed by the bot manually. That's all you need to do. Yes, look, this is me. Let me show you once more, guys. This is Flexi Market. Okay, this is my name, Priyesh, and this is Flexi Market server point, and this is the balance, and this is the entire history. Started with 107. Now we are running up at a loss. So far it's all running up in loss because we are not expected good days. Market was sideways. Let's see what happens today. Just 1 minute, guys. Just give me 1 minute, okay? Are you carrying yesterday positions? Volume muted. Bala Murugan, just give me 2 minutes. No, no, no. I have just placed a new order today, guys. This was the new order placed by me on today, and let's see how the market reacts to this. Okay. So these are the new orders. I have a 10 orders that for 152. I have placed 5 new orders over here. Okay. Now let me see how the market react to this. This was the order placed by my bot. That ZOUSD. So it's what it does. It manages your risk. Okay. It does nothing. Okay. So just see. You can manually. You can look. This is the order. You can manually readjust the position. Okay. Up and down. Okay. You can do that. So I'm not going to do anything, but I'm going to leave it where as it is.
I think camera is also out there. Yes, I'll just turn it on, turn it off camera. I will turn it on within a moment. Yeah, it's okay, fine. Yes, Pala Morgan. Yes, hi guys. So anyway, the market has gone too high. Let's see. You don't have to do much further. Okay, you have to just relax. We have to observe the market, and we have to manage the positions. Okay, bye guys. You can manually do the positions. Okay, manage your position. But the thing is, you have to let it run. Okay, you have to let it run till it hits either the stop loss or the target. Okay. Vishanya, yes, tell ask me question. Ask question, Vishanya. So yes, guys. Yes, it's okay. Good.
Are you carrying yesterday position? No, I'm not carrying yesterday positions. Okay guys, so the look, the market over here got reversed up. Okay, the moment it got reversed up, it's okay, fine, no issue. Let's see. Let me turn on that one also. Whereas the market is like doing nothing, it's right choppy. So around the level 4156 and 4144. Like you see, from this level, the market 4156 to the level 4142. Okay, market act as a very choppy market. So let the market go where it goes, guys. After that, we'll take some decision. So it is nominal that yeah, you can be wrong. Okay, initially as a beginner, what happens is that we choose a wrong path. Okay, so but still we able to manage to get it. Okay. Okay, guys. So HFT, yes. Sunny Gupta, hi. San Guptil, yes, hi. Whatever the name is. San Gopatil. San Gopatil. Okay. See guys, now once it has this level has been breached, okay, now the market will tend to go to this side. Okay. Now let's see the magic of this one. What this momentum hedger will does. Sorry, dynamic hedger. It's okay, fine. Trade has hit the stop loss. Yeah. Okay, yeah. So it will go. So we cannot do anything. It has to go. विशन ने सर बॉट को पोजीशन तो को मैनेज कर सकते हैं क्या टारगेट विद 20 पॉइंट्स एंड एसएल विद 10 पॉइंट्स yes vision yeah look you can do like this okay we can do anything we can do it we can manage also this is the best thing about that bot like we can put it here also okay अगर
If I feel so that yeah the market is going against, we can place over here also, or we can like cancel this. Right now I'm canceling it. Okay. Yes. According to your, you can adjust. Yes, you can adjust. So see guys, right now the trade, since all the five lots have been kept over this one. Okay, nothing has been done. So we have a just reverse order. So this bot is now right now going in loss. So it's okay. We'll be waiting. Who knows? Maybe the market will rally up from here. Let's see what happens. I think this is the fourth day using what? Yes, Bala Murugan. Yes, Bala Murugan. Yes. Look, guys. Right now, once we see the trade history, we have this. Okay, nothing much. This is the trade history, guys. So let's see. So, guys, the Bitcoin is like rising up. It has already rise to 90,000. So there was not a big fall was coming, but anyway, okay.
Is arbitrage worth today? Yes. I don't think so, but yes. But yes. Uh, yes, kind of. Yes, kind of. But I don't think so. There are like there are lot of risk management softwares, lots of risk management software that are way more better, that are way more better than arbitrage. Yes, I know, I understand. Yes, guys. So let's see. It's all running up in losses now. Okay, so it has about to hit this one. Let's see what it does. Now let's go to the M1 time frame, guys. Lot of big rejection, guys. This the market is great. There has to be one more way. If it's going up, it's okay, fine. But market doesn't needs to go up at this moment of time. Yes,
Let's see, guys. The market is still waiting down, guys. Okay, we have to wait for a little further. Okay, so now it has reversed the position, guys. And the position is that if it has reversed, then let's see how it's going to hunt the SL for the previous one. It's just hunting the SL. Now see how the market will go down. Yes. No, 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 no. Don't say. Don't say the market will go up, or don't say like that. The logic has to be a perfect one. Okay. Yes. Okay, guys. Let's see how the market reacts to this one. Let's see. Let's see. Let's see. Look, it's going down, but unfortunately, it's rising up. Okay. So it's almost one. Okay. And there has to be kind of the market will rally up now. Okay, it will rally. Probably going to hit the stop loss or going to hit the target, guys. It will either does one thing. One of the two, out of two things, it will does only one thing. So we are expecting within half an hour, like, or 10 minutes or 20 minutes, guys. We are expecting some movements. I think it should hit the bottom one because, like, see, we don't have so far anything that we can call. I mean, if like this, the market is not like going sideways. Okay, so we don't have support over here.
Okay. So guys, let's see how the 12 p.m. reacts. Let's see. Yes, the market is a little bit kind of PM. Yeah. So the PM session gets okay, fine. Let me put this two over here. Okay, so it all acts same. True. Yeah, it's really very true. Yeah, the line that we have, see, that things that we are watching is exactly the same. So right now we need to have a kind of a day split over. If we have to find it out countdown, then we need to have 2 hours. It's fine. Like overlapping Tuesday. I think where's the session? Like watermark session, session, session and session end, guys. Civils, others, events. This part. So maybe we can see the event breaks also. Will have to. Yeah. Okay. Got this. Okay. So how the market is reacting? 8:30. Look, guys, the market reversed. So our stop loss didn't get hit. This was the target price, and this was the stop loss. Okay. So from over here, it got reversed to the here.
Fine, we are waiting for this. Now guys, look at the losses. Losses has reduced to like anything. Okay. Yes guys. Let's see where the market is going. Okay. So on 23rd, the market was very good, guys. The market was kept on expanding higher and higher. It went down, but it was a market, where I should have managed to run this dynamic hedger. Would have got, but right now, guys, we see from past 3 days. Okay, today is the day. Yesterday, the market like it was very bad, and still there is no difference between yesterday and today. Still, it will be hard for for this dynamic hedges to perform. But the worst thing is that the most retailers who will come into this market thinking of making money today is going to lose the money. Okay, because it's not an easy market. The condition is like very super choppy. Okay, no, no, guys, this is not. Okay, run. Let's see. It's going to the break-even pass side. Yes. It's going up. It's fine. Uh, hmm? No, guys. This is the trend. Reversal has been changed. Okay, so the reversal has changed. Now it's heading towards upside. Probably feels like the way it was just hunting SL, or you can say it's a time distortion. But now it's like moving up towards C is now going in profit. So market, we have to give space to the market. We have to give time. Okay, cannot make decisions like, oh yeah, just we are flipping a decision just because the market goes against it. No, we cannot do that. Yes, guys.
Yes. Okay. Okay. See, it's going up in profit. Yes. There's a lot of risk management software that are more better than Arbit. Yes. Okay, fine. So I have nothing to say on to this one, guys. Said hi. Anusudhi said hi. Hi, Anusudhi. Hi. How are you doing? Yes. We'll just wait for the moment, guys. Nothing else. Car's going up. Fine, it's going up. So what we can do, guys? Just nothing. Just sit and relax. Okay. Let the market does what it does. Fine, it's going profit, guys. See, it's running up in profit. Look, it just got reversed up. Then the reversal, guys, just now happened and it has confirmed. So
Now the market will go down further. So it can go up. If it breaks, then yes, but I don't think so because now the reversal has happened. So it will go down. Yes. Yes, fine. Let's see how the market reacts. Okay, fine. No issue, guys. Fine. You see, guys, the market is running up now. So sellers didn't have any strength. They were just here for the distraction. Now feels like the buyers got took over. So now the buyers are forcing the market to go up, guys. They're forcing it. Okay. We don't have that much. Yeah. Like no confirmation, guys. It's all very good. So far, I have not done anything, guys. So far, that trade is still active. Still, it is active. This lot same. Nothing has been changed. So, guys, see this one is all running up. Okay, fine. Let's see what we can do up over here. So nothing, guys. This is all running up in profit. Just wait and relax. Let the market goes and hit to this point. Okay, nothing else can be done. All we do is just wait and observe. So we had this consolidation range. Now this act as an expansion now. Okay, fine.
So guys, let's see about the market. So guys, if you open the trading view, guys, just open the trading view on your guys website or whatever the chart you're using. Now I'm trying to explain you something. Okay, just switch on to the New York time zone. Okay, guys. New York time zone is important, but if you are not one, like if you are in some any other time zone, guys, it's good to be all in one time zone because you'll be able to understand a lot of things in a lot of better way. So if you go to the 26th of uh, like 9:35, okay, you see we had a reversal over here. Okay, market gave a very strong reversal from sell side towards the buy side. Okay, so guys, do you think that this reversal was genuine? So guys, now you guys all everyone all on New York session. Okay, so New York time zone, just switch to UTC 5. Now see that
Anyway, guys, let's see. Just want you to jump onto that one, okay? Trading view. So, yeah. So over here, guys, just watch one thing. What I want to make you explain that if you see that at around 10:05, okay, there was 10 a.m. Okay, on 26th. Okay, on 26th November 10:06, the market rallied like anything. Okay, it rallied to 416. I think the high that made around the time frame, that is it was like 1 p.m. Okay, so it made a high of 4169.79, guys. Okay, can you see this one? Okay, now try to understand one thing. Okay, just one thing, because market is supposed to do, okay, this act as an order block. Okay, this candle, the first candle, now the second candle, the third candle, the fourth candle, fifth and sixth, seventh, till seventh candle, guys. Okay, what does it do? So you see this level at time frame at 8:40 a.m. Okay, just look at this, guys. 8:04 and 9 a.m. and just look at the time at 8:30 a.m. guys. You see, this becomes as a one model. See the market's trying to hunt down. Okay, if you see the previous session from 7, like from 7:20, the market went down till 7:50 a.m. Now, guys, try to understand one thing. Look, now it's up to you. Okay, this is what I have to show to you. Now this I have shown to you. Now whatever the concept you use, either the indicator you use, or like SMC use, or you use anything. Okay, guys, trust me, you will become a profitable one. Okay, you will. But only thing is that you will not be able to understand unless and until if you don't spend time. Okay, now this is the thing that I should have twisted and said it to you, but I said it very clearly and I said it very openly. But this is what, now the thing is, now the question is, how should we expect that this should going to rally up? Guys, this is not a point of exception, acceptance that okay, this is the time when the market will rally. Okay, just go back to the previous in the times. Okay, when you don't understand, look, past represents the trauma of a human behavior, and if someone who has a past experience, okay, of kind, so that one is keeps on evolving. Okay, that keeps on evolving, that keeps on reflecting. That's called a human thing. Okay, that's a human thing, a human pattern. If someone has a kind of a bad past experience, uh, that person keeps on accepting that, digesting that, and he becomes one of that. Now over here, like any software, any pattern recognition software, what it does, okay, it's new to him, whatever, it's keep on checking the patterns over here. Now you see the patterns like this, from here to here, that is from the time zone 25 November to 7:10 till uh till like 8:05 p.m. Okay, that's the midnight. That's a kind of pattern over here. Again, if you see that at suppose at okay, not this is not the time. Okay, now consider as 25 November, sorry, 26 November 2020 a.m. Okay, and 26 November till, guys, 1, like 120. Should I be close to that? If I say close to that 150, okay, the load which has made that 4156, that's also represent a pattern. Now look at this at 26 November 3:20 a.m. 3:20 a.m. till the 6:10 a.m. Does it represent one thing? Yes, it does represent one thing, guys. So your eyes are not trained to see what I see. That's why you are not successful. Okay.
Once you will able to see this level, okay, this is nothing. The entire market is made up of this sort of things, not one thing. But if your eyes are trained, you will be able to do a lot of things. Okay, so the thing is you have to achieve it. Okay, you have to see what you need to see, and then when you start seeing, man, trust me, your life will change, your trading style will change, people around you, the things around you, it's just going to keep on change forever. Okay, you don't have to sit, you don't have to talk, you don't have to go anywhere else. You know what you need to do. Okay, so spend time, guys. Okay, spend time onto this one. I know this is not an easy one, but I have showed you. Now also look at the time frame at somewhere around 11. Just click on the 5 minute time frames. Okay, I'm just switching to the 5 minute time frames on 25th November. That is 11:25 p.m. Okay, and now go back to the time frame of 26th November 5:50 a.m. Okay, does you see anything? No, but that's pattern. That's keep on repeating again and again and again. But it's really very hard for the eye to see because you don't know how this entire thing works out. I hope I have given a very logical answers, guys, and rest of the mystery is for you to solve. I know there is a layer to layer to layer to layer. Once you cross the one layer, then there is another layer, then there is another layer that you need to uncover this the entire market. But I believe you can. Okay, it's not. There are many other ways. Okay, now guys, I have to jump on to this one because it's going up. There are other layers too. Okay, now if you follow these rules, I believe you will be a profitable one. Okay, first all you need to do is just manage the risk management. Okay, now I have not showed you till over here. I could have done it a lot more better. So this is 27th November. Okay, now let me mark it over here. I'm going back in time zone, backward. So let me switch to 5 minute time frame. Now it's good. Okay, so now what I'm trying to say is 26th November. This is the time zone. Let me click on to this auto scale, revert scroll bar to the last, reset vertical line. I mean auto scale. Okay. Just think one thing. Okay. Now what we have over here. Uh, 1 p.m. or 2 p.m. That is 15 p.m. That is 26th November. Okay. Now what I told you guys. I told you one thing. Remember the patterns that keep on existing. Mark my words, guys. I know I'm not supposed to say to you guys, but I am saying it. Mark my words, guys. If you are watching back at the previous level, any day, any time, take a time for yourself. Now I am showing it over here. Now we have a lot of executions over here. So still, I am trying to make it very clear to you that go back onto the time frame that is 26th November 8:20. Okay. Now this is the 5 minute time. Okay. Now this is the resistance. Okay, this is what we have. Now the market is rallying up towards upside. Okay, now just focus over here. Now from this point to the 4169.68, that's the market. Sorry, the high is supposed to be, it's not clearly mentioned over here, but still anyway, to the low of 4149.18. Okay, so there is it's a called a fractal pattern. Okay, you should know this one. Okay, this is the one thing that keeps on repeating. The second one is like this one. Okay, I asked you
to go on 26th November. Okay, now the timing would be around this point. Okay, you see this week, guys. Sorry, I need to cancel this one. Close this one. Sorry, not cancel. Now you see this part. This week. Why this week? Prior to this market crash, okay, the market was rallying up. None would have expected that this market will crash. None. This has crashed. Now what happened? Now this level has crashed up. Okay, now the market is like from this point has reversed to this side. Okay, guys, forget about the profit and loss, what is running on the screen, forget about everything. Okay, if you're watching, then pay close attention to this one. Now if this point has crossed this level, this is what the real hole in the matrix, guys. This is what I want you to see. Okay, this thing has crashed like anything. Now what market does? Market is going sideways, sideways, sideways. It goes downside. Now can you tell me, guys, if there is a one question, if I want to ask, if there is a logical buy pressure, if there's a institutional sell pressure, okay, mark my words if you're listening. Right now I'm showing it to you. Why the market went till here? Okay, I'm asking question from you, and then the market reversed till here, and it went till here. Why it went over here? Okay, this point, that is 4152.72. Why market didn't went to this level, that is 4156.07? Okay, it could, it should, or it would. Okay, we don't have an answer for this one, right? But if you see, there's a thing called time distortion in this market. Okay, the time distortion is something that you're not aware of. Okay, that none is aware of. You see that time moves in a linear way, but trust me, guys, time moves in like a bilinear way. Okay, or I can say it moves in like a co-linear way, or not co-linear. You can say it's moves in a multi linear way. Now what I mean to say that I don't have an exact term or word for that, but it moves in a diabolical way, trust me. Okay, so what goes up also goes down. Okay, now remember, there's a logic to that. Okay, and why I said it, if you have not gone through my books or PDFs, I have also mentioned it about the the numbers that are composite numbers. There are two types of numbers that exist. Okay, we define the numbers 1 to 9 and 0, sorry, 0 to 9. So these are the everything is made up of every digit is made up of between this number 0 till 9. Rest is the combination of the numbers. So there is a composite number, there is a prime number, there is a fave number, there are so many stuff, but they are all made from the building block that is 0 to 9. Okay, now you have to understand that the nature itself is a maths, guys. Okay, I'm telling you, mark my words, nature itself is a maths. Okay, anything that exists in an harmony has a maths to it. Okay, the math is attached, the maths is everywhere, guys. In the human science, in the physical world, nothing exists like you say it's kind of a luck. There everything is attached. Okay, right now you and I, everything, okay, it runs on maths. Now if I talk about some fantasy stuff or the science fiction, like you see wormhole or a black hole or teleportation, it all comes back to the science. I know it comes back to the physics, but physics is what? Science. Okay, chemistry is what? Science. There is a science involved into this, like how much quantity, how much this liquid should be added from one test tube to other test tube, and this product, that this will could be act as a byproduct of this one. If you added a lot of more chemical X, then there will be chemical Z formation will be a lot more than that. So it's all comes out to be mystery, but we'll forget about all those things, guys. Now here, just focus one thing. Okay, why my question is to you, that's something else. My question to you is, ask question to yourself. Okay, create a two self of you. First, the one who is observing the market. Okay, you as the individual, your job is to observe the market. Okay, just collect the primary data. Okay, don't go on some sort of conclusion that yeah this is, or draw conclusion based on your observation. The moment you start drawing conclusion based on your observation from your first primary self,
That is the point where you lack. Okay, now what you have to do? Okay, you have to create a second self of you on the second side. Okay, now this, if this market is rising up, okay, if this market is rising up, suppose this was made by an equal low and the market rejected from it here, so it's okay, fine, it's okay, no issue. You see the delivery that has made over here is perfect. Okay, and if we try to mark this range, trust me guys, it's going to be 50% from here to here, from here anything below that is like an institution one. But over here, why it got rejected at such a perfect point? Because this was considered as an equilateral one. Okay, trust me. This, now the market went below. Now it has rejected this price. Now it is slightly shoot up like anything. Now where it does it comes from? It comes to the level of a point of, can you say it can act as a fib level. Okay, that is a golden ratio level. It has retraces from this level golden. Okay, and now the market rallied towards the downside in order to fulfill this level. Okay, this is all about the market. Now what about this one? Wick, look, Wick tries to do the damage. Okay, that's very simple. Wick has nothing to do. Okay, just act as, and this entire, if you combine this candle and this candle, there is a formation of the next candle, and that decides, like if this one is like full candle, full body candle, like suppose if this act as a full body from here to here. Okay, what is it? The buyers enter into the market, they push the market towards the upside. Again the sellers, buyers came, move in, and now they again push the market towards the upside. What happened over here? Now we see the wick, guys, wick. Okay, the wick that has formed. Now the market is going down, the wick is going down. Okay, they're pushing it down. Now the next moment is like the seller stops over here, they started selling it, they started might be booking the profit. Why? Because we have a sell stop over here. So we, the system, like it's not the one person or the individual, it's the algorithm that knows or that sees and that what it does. Trust me guys, there are two things running. Okay, no individual is there to operate the market, there is an operator, also there is a algorithm that you need to understand. Okay, that runs, and that's runs in a harmonic way. Okay, there is no secret that is hidden from you. Okay, everything is running on harmonic way. Okay, it could be anything, it could be a sound, it could be a pattern, it could be anything. Okay, it could be a file, fib spiral also, like Fibonacci. There are a lot of things that exist in harmony, but they have a different way of calculating that harmonic levels. Okay, so the market also runs on a harmonic level. Try to understand one thing. So that's why guys, remember, the fib retracement is like gives you so accurate data. Why? Because it's attached to that one. Okay, but still what makes you unpredictable is market movements, right? That's the mystery for you to solve. But I'm telling you, if you solve that mystery, then market, you will have no interest in market. Okay, you will see that this market, let it run like the way it is running, it's okay, no issue, fine. Now guys, let me check about this one. So I have showed you the way, I have showed you the method, I have showed you this one. Look, if wick is there, too much wick is there. Okay, consider this one thing, that either the market goes in a sidewise or the market goes in upside or downside. So let it be, let there be, should be a wick. Okay, that there should be a lot of upside movements up and down. So this means that buyers are literally confused. Okay, what the market does? Market does nothing. Okay, market always try to hunt for the SL. It is designed to do only one job, guys. Hunt the SL. That's all it is. Okay, go and grab the next liquidity. Okay, market doesn't care about your position, it doesn't care about anything. It is designed to run and designed to do its job. Okay, that's why look, the market delivered over here, now the market delivered to the upside. Make perfect sense. When it does the job, when it does the damage, okay, it has to be delivered this much only because of the previous delivery was this much. Now if the delivery happens too much, okay, what does the operator change? They change the value. Okay, now suppose it was a short term delivery. Okay, that was running.
Now suddenly, if the delivery is too much, now this act as an expansion over here. Look guys, I would have to explain you a lot more things, waves in a different way, but if the expansion has happened over here, what it does, went down. Okay, now how, I'm not describing the numbers guys, okay, I'm not using the numbers, just to, because I'm trying to explain you the ideal architecture of the market system. Trust me, if you trade indices, if you trade in any country market, like currency, USD JPY or USD, or like any currency pair or any indices or any stocks, okay, that you trade all around the globe, it all works on one thing. Okay, they have a system, they have an engine that runs the entire market ecosystem. Okay, and you have to understand there is an engine. Okay, every country controls their own engine. Okay, it's not that US is controlled this, or China's, or China is controlling the other country. No. Okay, look, in order to run everything in perfect harmony, there is a price engine that runs everything. Okay, even if there is a global distress that happens, okay, one country is try to, the market get crashed. Okay, why this country get crashed? Because they want to disrupt it. And trust me, it's not about the disruption. It's not about the buying selling. Yeah, disruption happens just because there is a real money involved. Okay, the buyers and the sellers, they are two trying to push the money. Okay, but it's all controlled and get adjusted by this pattern. Okay, now see over here guys, once the market has given the delivery, okay, goes like to this one. Now what it does to at this level 4.4149.18, okay, market redelivered it, okay, to the opposite side. Now over here the market was confused, so they formed a wick. When downside, it is how, look how the body closed. Our body closed exactly the way on the previous candle closes. Guys, ask question: how can it be that possible? Okay, is this is the part, or this is not the part? Okay, of this candle. It is the part of this candle. I know you will not accept it that this is not the part of this candle. This is the part of this candle, this candle, this candle. These three candles is the part of this candle. But what is happening over here? This is not an order block. Try to understand one thing. I know you call it as an order block. I know you call this as an order block, but no. This all entire thing act as a one candle. Okay, what happens over here? It's just a distortion. Okay, nothing else. And look how perfectly it get harmonized. Okay, why the body keeps on closing like equal way? Why this is why it should have gone to the upside also, little bit upside or little bit downside, like over here. Like the body opens over here at downside. Now the body is closing below to the downside. Okay, now over on this candle, the body kept on closing to this candle. Okay, so guys, trust me, one thing is, it's all about a harmonic pattern that keeps on existing, and it is how it is living. Now look at this one. How long the distortion happened? Market achieved whatever what it has to achieve. If you were onto the trade guys, then you would have entered over here, somewhere over here. Okay, once you have entered over here, if I would have, then I would have entered like over here on these two candles, I would have entered short, because it has already given me a confirmation. Why? Because the previous candle and this two candles, okay, it's making higher low. Okay, once the higher low is formed, it means the trend is trending towards the downside. Okay, now if the trend is trending towards the downside, it goes down, okay. Now you see how perfect is this exist. Over here, you see things keep on repeating exactly the way as it is. I know your eyes are not trained, but look at this point. Now look at this point. Okay. Now look at this point. Okay. Now just look at what I'm trying to show you from a general observation, and let me go back in this time. Look at this point. How this market is acting or behaving. So after this, the delivery has happened. Now when I was talking about this one, look how perfectly from 120 27 November 120 till 320.
Okay, this was the low. How perfectly it has delivered. So guys, if you have to study, I know you will understand that, oh, it's just a consolidation, why should I focus on to this? Guys, you have to focus on to this one. If you don't understand this, then you don't understand the expansion. Okay, I'm telling you, expansion is what you are waiting for. Okay, that's what you want, or reversal, because the market expand like anything. When it will expand, you don't know, they don't know, we don't know, no one knows that. Okay, there is no logic into that. It can expand anytime, it can expand, it can go higher like anytime, because both buyers and sellers are involved into this. How much they're trying to push the market, nobody knows. Okay, but there is a boundaries or limitation that market should go. Okay, that's run by a normal price engine, and after that, whatever the delivery that has happened, it's happened by the institution, that is the foreign or the domestic. That's what they try to do, guys. Okay, they have also the power to push the price up and push the price down. Now there is a one idle situation idle, and now we have a second manipulation thing that's coming up by this institution. That's why, guys, things become like super creepy and super difficult for us to predict the market. Like literally no one can predict the market. That's what it is all about. Okay, now I know you won't understand, so if you don't understand, go watch this part. But if you understand, guys, go. I believe that from day tomorrow itself, you will open your YouTube channel and you'll keep on posting your PNL like again and again and again and again. I know I have just shared a small glimpse, but it's going to take away your night sleep. If you are passionate, it's going to take away your night sleep. Okay. Now, why all this knowledge is like, where should I got this knowledge? The question that you are asking, guys, look, the question that you are asking, you can see your chart properly. Yeah, so it's good, Eunice Siddhi, you can see us. Said yes, hi, okay. Now, if you can see this, that's fine, no issue. Just 1 minute, guys. Now, if you can see this, now ask a question. Okay, there is a lot of distortion. Like you have a one model, but there is a lot of distortion. Now, let me ask question, like the difficult one which you should know. Okay, I know I'm speaking English because if you don't understand, then you will be able to get understand. Just guys try to get, because I cannot speak Hindi. Okay, I have to speak in English. Okay, now whatever the model you choose, guys, I'm not here to disrupt your model. I'm not here to give you my concept. I'm not here to give you any knowledge or any trading tips or any advice. Okay, I'm not. I have no. I'm not the licensed person to do that. Okay, I'm not. I cannot. I cannot break the rules to do that. If I'm doing this, that, then I should. I'm not. Should. I shouldn't be telecasting this. Okay, I'm just showing that this is the thing that we are doing, and this is the stuff that is results that we are getting. Okay, it's just based on the performance, on the observations. Okay, look, either it's up to you whether you follow us or don't follow us, because we have already given a very clear disclaimer so about the thing. So if you see from a broader picture of your observations, we are not here to give you any call signals, guys. We are not here. We are just here that, yeah, we are like running a simulations. We are running an experimentation. But this experimentation is not a kind of a simulation money that you see. It's a real money. Now, what does that mean? We are running it. We know what works. Now, most of the people, okay, out there, they might have a successful model. Okay, I understand. I respect them, but we may not have that successful model. Okay, I'm not trying to compete against other people when it comes to this one. Well, I'm here to just to demonstrate that, okay, this is what it is, this is now what we are running. I'm not trying to prove my greatness. Well, I know my greatness, so I don't have to prove it. And the thing is, everyone tries to run from a short point. Okay, they start from the basics, they move on, they advance things up, they work hard onto that, try to improve it, and then they try to come up with something.
It's okay, fine. But guys, try to know one thing. Without any improvement, you cannot progress. Like you cannot see what you wanted to see. Now, just look at the one thing, guys. Now, over here, I have given this one. Now the wick has gone to this one. This was to considered to be as a sell stop. Now this act as considered to be as a buy zone. Now where is the target? The target is considered almost considered as the 4062. Where the market is running right now, the market is running at 4157. This is the place where the market is running. Okay. Do one thing. Okay. Now what I have showed you guys, just go back and try to learn the consolidation part. Okay. Look, expansion has nothing to do. Okay, it's just the one thing that you know. Once the consolidation gets ended, it expands. Now I know people are new. Most of you haven't watched my lectures. Uh, Use fib retracement. I really suggest you. The fib retracement consists of three parts. Okay, the first is they measure the candle, actually measure the candle. Okay, like how much percentage or how much quadrant the it has a level on it. Okay, because every candle is of different shape and different size and different length. Okay, so what we can do, there has to be one unit of measurement. Okay, well, you should understand that the market keeps on moving, okay, as per the time, but there is one candle. Okay, look, in order to form from this candle, okay, that is from this candle which I have marked over here, and that this candle, look, see the circle which has formed, the weak one. Okay, so it takes how many candles? One, two, three, four. So four candles. And what's the time frame, guys? 5 minutes. Now 5 into 4 considers how much? 20. So from here to here, it takes took 20 minutes. Now, so what's the difference? The difference is 4156, or you can consider 4155. And what's the price over here? 4143. So it took 20 minutes for the market to reach from point A to point B. Now again, look at this one thing. Once the market reached to this level, this is an equal low. This one is all equal. Is this little bit disbalance that you can consider bigs are allowed to do the damage, but it's okay, fine. Now listen to this one. This low, okay, considered to be as an equal one, because body is closing exactly to this level. There might be minor distortion. That minor distortion can be avoided, because you should know there that's the place where institutions are like deploying the stuffs. Okay, it's not the central banks, it's just one person that does reverse everything. Is like central banks are the real players in the market making. Okay, it's not the operator, it's not the any institution affairs. They are like, they act like a, like they're in front, like they're like a cats. Okay, and the real watchdog is the central banks. Okay, they operate everything. Every nation has the central bank. Like, it's not about the central bank, they does one job, they does many jobs. Okay, they look the entire, you know, local banks. Okay, they issue debit, they issue credit, they issue papers, they based on the global data. So they have a lot of things and stuff to do. Okay, it's not an easy one, but it's all, and everything is run up onto this one. Now look at this one. Since this data is being clear to you, now it will be hard for you to digest. Now you will be asking question, sir, what should be this candle? Now, okay, I understand this 1 2 3 4 candle. It acts as a time distortion on from this point to this point. Now, what about this one? 1 2 3 1 2. Okay, this we consider this. Now, what about this bi candle between the two red candles? What does that mean? Okay, so just consider one thing. This blue candle is exactly as a red candle. Okay, why? It's just act as a time distortion. Again, I'm telling you, this blue candle act as a time distortion. Now, whatever the concept you use, guys, okay, I'm not here to deploy you the concept. My concept is universal one, and I know it works because it took a long time to figure out of that. Okay, these are the stuff that I didn't know. Okay, these are the things that I should have known. Sindhu Gupta, hi, and Crypto Niban.
Auto Unban said hi. Hi guys. Hi guys. Hi guys. You guys are doing. Sorry, I was busy in explaining lectures. So, what do you want to say, man? Kirom Samisha. Look, what I'm trying to say is the central banks. Okay, the central bank is the player that you need to see, but central bank never does. Okay, you never see any news based on RBI's or central banks. Like in India, it's RBI. In US, it's Federal Reserve. Okay, you never see. Okay, any news that comes out from those entity. What you see is the political thing. When there is some sort of instability happens, something happens, just because consider that because the people are in, like, it's not good, situation is not good. Okay, the situation is not good, someone or the others will try to hamper one another. Okay, that's the reality. Okay, if you work anywhere, okay, if you stay in a locality and that locality means there is some shortage of water. Okay, so definitely people will try to have an argument, they will try to have a fight. So if you know what's the cause of fight, okay, then that means that's a problem. Okay, that means the water scarcity is the reason for the people to have a fight. Now definitely that area you would not like to stay, or not would not like to buy a house. Okay, just because you know there is the instability and there is a kind of lot of things that are happening. So you need to uh, find the cause and the reason for yourself. Okay, only then you will be able to understand, okay, how this is I know this will be one long one, but guys, you can once I'll stop this running, I'll explain you a lot more stuff in coming ways. So this is what I need to say now. In order to learn further, guys, just focus on the execution one. Look, I have a lot of things. Now this candle is a one. Now what I was saying that, okay, it's a consolidation one, this is a blue candle, this is a green candle that comes between the red candle. Now it acts as a time. Okay, if this candle has not broken the previous high, that means the market is not going higher. Okay, let it be. Now consider this one. Now this becomes a red, this becomes a low. It's okay, fine, I understand. Now what about this one? Now market is reversed. It's okay, fine. It's just a part of this candle. It's just a part of this candle. Why? Because this red candle is still not get overtaken by this upcoming candles. Once this upcoming candle gets overtaken by this candle, it means that market is going down. Okay. Still, this has taken, but the wicks are allowed to do the damage. Sellers were got trapped out. Market was told them to, like, it was designed to go back down. Now once the market went down, it went down like this. Okay, now how to identify this? Okay, buyers, sellers, both are confused, they don't know anything about this one. Market is going up, market is going down, it's like fine. Okay, they don't know about this one. Okay, now I'm marking this point is because for a reason, guys. Okay, try to understand one thing. Here is the wick that buyers and sellers, if the buyers push the price up, okay, but seller took it down immediately, so it becomes like the balanced one. Okay, so empty, so it has a wick. Now the body contains some value, but wick doesn't contain any value. So that's what it is. Like, if something is overpriced, okay, people will not buy it. Okay, if that thing is overpriced, people will wait for that thing to get uh like, if they get it less price, they will go for it. Okay, but if they didn't get it, that's then they don't buy. Now over here the price has reached to this one. Now when they realize that the buyers are not the buyers are not interested in further, okay, price is overpriced, what happens? The price it's got immediately rejection. That's what, even if I can say that ICT said that it's a kind of rejection block. Now price moved down, it's went downside, it went downside, 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 downside. How downside? Why? Initially it could have taken a one candle, two candle, three candle, four candle. No, yeah, four candle. But try to understand. If you measure, the one thing if you don't do is that you don't measure. If you measure, then you will come to realize that this to this is all happened in one. Okay, there's nothing much difference. That's what it's that. If you see the true analytics, okay, look,
Like Singapore always keep an eye on India, okay, and India keeps an eye on Pakistan or any other country, okay. What the country is doing, if there is a slight minor changes happens in the market movement, okay, they will consider to that as if there's a billions or millions or billions of dollars that has been misplaced from the market, okay. That means the nation is not working fine, okay. Either the nation is printing too much money without any permission, they are doing their supplying, or the nation is not growing. If the nation prints too much money, then there won't be any growth, okay. There will be just, okay, you have the money, but you won't see any development, okay. If you want to see the real development, then there has to be a growth, okay. It depends upon what's the demand and supply. So why the China, every person in China, like China is like ahead of 150 years ahead of us. Why? Any nation has become a superpower. I don't understand one thing. The China is a communism country. Now the thing is, China, they work very systematically. Okay, but in India is not that far. Okay, every people is educated and inspired, but every nation, every country, people have this sort of education and talent. Okay, it's not about us. We are like not anything different from others. Okay, you and I have the same blood, same thoughts, same. We live in the same situation. We live in a same environment, but we are not able to accept it. Okay. Now listen, guys. Do one thing. Talking about the running capital and predict the move. Don't go us with the past data animation. Right. Yes. So yes, but I'm trying to give you something that's very confidential, guys. Okay. Just go on to that one, and now you see, if you try to calculate the two things that you need to calculate. Look, one is the market moves is the price. Okay. Every market has a different price. Okay, my question to you is, every market has a different price. It could be $1, $2 cents, or it could be like $1,000. Okay, uh, so it's all depend upon the price. Now you should know the one thing that keeps on changing is the price. Okay, one thing that keeps on changing is the price, but one thing that doesn't change, okay, that no one can change, that has no one in this planet has the power to change it, is the time. They can't change the time, guys. Okay, they can't, they never. What is the, so once you know the price can be manipulated, but time can never be manipulated. Okay, never, no one can do that. If they do, then it's that he or she is like distorting his her own timeline. Okay, so no one ever tries to do play with the time. So time, and no one ever tries to make some time machine. So it's reality, because they are distorting their own time. Okay, I know scientists can make it time distortion using electromagnetic waves and pulses. They can stop the time also. They can stop the nearby surroundings, so they can create a lot of things that is happening. Okay, the science has gone way beyond than that. Okay, I'm pretty sure the cartoon things that you see on the cartoons, science has actually moved way beyond than that. And the information that you see on the television is actually 10 years older. Okay, can you imagine the information that you are seeing on the cartoons, movies is not about the science fiction, at least, but this, you should know the science has moved way beyond than that. They are the scientists, they are the people who are working, they are the organization that are working. A few number of people, few number of elites, those who have that level are moving it. Okay, so it's not about that. So how this hypotheses are coming? This hypothesis, okay, it doesn't come from the fantasy like stuff like all those things. Okay, it has been derived. Okay, either it has been derived by some mathematician or physician or anyone. It could be. So they're trying to working on to that. Now, if science sounds like a fantasy one, or kind of like a unrealistic one, but those ideas, every ideas that we have can be created, can be implemented. Okay, it's not even a science mission. Like before, like 5 years, it was like teleportations, right? Teleportation was very difficult of an object. Now what? In Germany, the scientists have did the teleportations from one object to other object. Although they have from China to Australia, they have teleported the object. Okay, but that object that has came
was not in a real form. But after right after the 3 months, they have teleported the same particles from this to Australia. Okay, how this can be possible? They did it. Now go and do some research onto that. The teleportation is like possible. Okay, so well, do we have an access to those? No. Why mass people will have access to those? Okay, literally it will create a lot of confusion, like all those things. So if you have to evolve, you have to evolve. Now look, guys, my target price is going to get hit. Okay, we have nothing to do with it. Target price will get hit. Now it's all running up like this. So once it hit the target price, guys, nothing to do. Okay, we can place an order again, or we can close the order again. So guys, I've given enough information, so I'll be taking a break for further 5 minutes. So guys, look how carefully the market has hit the target price, guys. So all my position got me instantly closed. Look, right now we are running up in the profit, so we have done nothing. If we check out the history, like we went downside, guys, look, we have made more than 500k USD. So today we made it. Okay, all we have to do is just do that. Now market is not doing anything. It has done it. It has done its job. That's all. Now what we feel like, where the market will be heading. Now let me check the market, guys, how the market will be moving. Okay, uh so now suppose we feel like 1 2 3 4. So how many trades we placed? 4 trades we have placed, so one more trade we will be placing it. Okay guys, so we have placed the trades right now. So from here, so till here, lot of things. So the target is actually, it will reach, it will hit the target again. Let's see, it's all running up in profit right now. Still running in 48,000 profit. It will take time, but it will reach to the point where it's supposed to reach. Now we have the target over here that was hit. We bought here, we sold over here. Again we sold again. Now we will, this would be our TP, and our the buy stops. Okay, buy stops are here, guys. You see the buy stop 4170, because we bought at 4160. This will be as this one, and then we will see how the market does. It all moves, guys, in a very synchronous way, guys. Try to understand one thing.
Just give time to the market and then you will be understanding. Okay, see the market is like going up. So anyway, just give us a time. Let's see how the market reacts to this one. Korosoma say talking about running candles and predict they move. Don't bother us with the past data. Anyone can analyze. Akora Sumuncha. Yes, I think you're intelligent. I think you can figure out market by yourself. So don't waste time. Waste time. Right. If past data is nonsense. If past data doesn't make sense. Look guys, if individual is denied the past data, no one can make profit in this market. No one. Okay? No one. Trust me, no one will do market. Even the banks will be afraid to put their money in the market if the past data is denied. Okay? So they keep record for this. They also have a record of the future data. But based on past events, the market moves exactly because it's a number. One thing is happening. Okay? Either people buy or they sell. Okay, and there has to be pattern of a human behavior. Okay, even though how much money they have, suppose if it is a forex market is considered to be as a 20-30 trillion dollars economy, $30 trillion economy. So overall if I'm combining, so how many people can move this market? Obviously the people who have like more than $500 billion, they can move this economy. Okay, so that comes out to be only one person, that is Elon. He can shake it down, but there are multiples of entities that hold this position, not one but multiple. So in order to take a big decision, in order to like shake down the entire industry, there has to be kind of a big movement. Okay, but that needs to be the need of only one reason to unite and to take action against the one thing. Now, guys, if you have not done, there was a currency pair because of some local disturbance in that country. They have decided to shut down. I just forgot the name of that currency pair. So they like I didn't remember. It happened in the year 2000, I guess 8 when the market crashed. Okay, Indian economy got crashed. There was a reason, not because of some Indian reason that has happened. There was a forex pair. Okay, I just don't remember that pair name. Now they have started it, but they have shut it down for I guess 7 or 8 months. They have shut it down. No, no one was trading. No one. Okay, and the people those who were trading, they were like trapped. Okay, they couldn't sell it. They have everything got diluted up. Everything. Okay, so the government denied there was a two geopolitical instability that has happened. Okay, and for that reason, the two nations, like I just forgot, it was like about the Middle East. Okay, so it was just one. It happened. So anyway, guys, just remember one thing: everything is connected in a geopolitical way. Okay, geopolitical means that there has to be a stability between the two nations. Okay,
If this thing doesn't get sorted out, I mean, if there is a lot of disturbance, then definitely the market will not act in a stable way. Okay, if it has to act in a stable way, then there has to be a stability. Okay, that must exist among the neighboring nations. Hi Harinder, I said hi. Hi Harinder, how are you? You are from where? Yes. No, yes. Uh, how your trading is going on, guys? Lennon Matthew, are you using bot for trading? Yes. This is dynamic hedger. Let's see, guys. What it can. Where will I get this bot, and how do can I use this bot in my funded account? Okay, Lennon Matthew. Go to uforex www.uforexai.com uforexai.com. Okay, the bot name is on website. Bot name is Dynamic Hedger. Dynamic Hedger. Once you receive this bot, guys, you can use as per. So one day you have a free trial. For 7 days it's 49. For 1 month it's 149, and for one year it is $799. And once you did that, just contact support team. Okay, just contact support team. Okay, for that. Let's see, guys. Look, the market is going in my favor right now. It is going in my favor. Like it's going in profit right now.
Traded trade Lux Infinity. I didn't understand what you want to say. Hello, you. I really don't understand what you said. I couldn't understand. I could not understand. So this is the bot running up, guys. This is the bot. Okay. Anyway, even the Google Translate doesn't works out. Sorry, I could not. Yeah. Anyway, so Trade Lux Infinity, I really couldn't understand what you're trying to speak. If you can speak something way like proper way, hope I can understand. Okay. So it's about fee since like you have a channel that doesn't have any subscriber. So anyway, Kryptonian said hi. Let's see, guys. The trade that has been taken up. Now it's all running up in the profit. Okay. Let's see. It's running up in the profit. What we can do is we can do one thing. Okay. Trade loss infinity. Yes. Hi. Hi. So 41770. What you were asking about 4170? Yes. So look, the trade I have shared sell. Now what this bot does, guys, this bot, look, I have sold it from here 4160. Okay, now my target will be 4158. This is my target point, this is my sell point, this is my target point. Okay, so I sold it 0.10 everywhere. Now the trade has a reverse order. Now it is with 0.15 lot and the stop loss is 4170. Okay, if the stop got hit out, that means the market is uptrend. Now my new buy entry would be at this point. Okay, this point, this point, this point, this point. Okay, so this is the market. This is a called dynamic hedge. It's called hedging. Okay, so anyway, you do whatever you want to do, but your risk remains the same, entirely the same. Yes. Show me if you can. Yeah. So I told you, I already showed you. Now, if you see the history over here. So right now we are running up minus 7,507 profit. So it is a past 3 days. So today is the third day for the bot running. So far you see we have the losses over here till now on 25th. Now we have a profit over here. Now on 25th we have a losses. We have profits. Okay, so on 26th we had a profit, we had a losses. Okay, so losses are big on 26th, so we have three profits, rest are all losses. Now today we had a profit. Okay, so this is how it manages everything. Yes. Yeah, hi. I trade luxury. You're from which country?
Okay, how to get your bot? Okay. Look, I have explained. Go to the uforexai.com. Okay. The bot name is Dynamic Hedger. You can get it from there. Oh, uh, so you're from, yes.
अच्छा है। तब तो बढ़िया है। So guys, look X, can you help me to understand the logic behind the sell, because the overall trend seems to be bullish, and we have the liquidity which is resting 4170, likely to be the target of the market. So okay, nice question. Look X, nice question. Nice question. I actually love this type of questions a lot. So yeah, logic bullish. Overall trend seems to be bullish, and we have liquidity resting 4170. So okay, let me check. So as Lukex said that liquidity resting below 4170. Okay, he said that the liquidity and the trend looks bullish. Fine. Well, the thing is, yeah. Uh, for me also the trends always look bullish. Okay, I'm also expecting that the trend should be bullish, but there is a time distortion over here. Okay, for time distortion. Okay, the market may rally up. I know it will rally up. It will take that liquidity too. Okay, it will take that liquidity at 4170, but sorry, but later on, but before the market will take sell side liquidity, because we have 1:1 risk to reward RR ratio. Okay, and it can hunt our target TP easily. It can hunt SL, sorry, it can hunt TP easily. So I'm taking risk over here. Yeah. What's which platform you're using? Price you are using. Price difference is showing for me now 4158, but you is 4162. No, no, no. It's me. It's like right now we are using MT5. Okay. Crypto no one. We are using crypto. This one MT5. Look, this page. Okay. This is your forex. This is flexi market. The first day I used this one, this account. Now the second day we are using this one. Okay. Now this is what the dynamic hedger does. Okay, if your target get hits, this trade automatically will get cancelled, all of it. Okay, if it doesn't, then it remains as it is. If the SL hits, it will automatically retake the trade position. Now guys, as a trader, look, you don't have to predict the trend of the market. It can go up, it can go down. Well, what you can do is you can manage your risk properly. Okay, if you can do that, it will be like anything. Okay, and you don't have to worry about, look, either you're going to lose big amount, or you're going to lose the like a big profit, or you're going to make a big profit, but in doing so you will be only gaining a little profit, or if your loss is going to happen, you have a little losses. So how to buy a bot? Go to uforexai.com. It's called, the bot name is dynamic hedger. www.uforex ai.com. Visit dynamic hedger, dyna dynamic hedger. Okay, look, this means that the sell side liquidity we can go targeting the buy side liquidity. I'm not wrong. Yes, correct. Yes, for short time. Yes,
for short time, because time is a factor that is been ignored. For short time the market will hit the short time for the sell side, downside, and later on for the long time, because it's going, if it's going to hit the long side, guys, market is already trending towards the upside. So if it has to hit the upside, guys, the chances is it's going to hit after 4 hours or 5 hours. But what will I do after like 4 hours or 5 hours? There's a time gap, so I know the market will go reverse it. So that's why I put a sell position, because I know the market will hit the sell side right now, because in short period of time it can hit this level, or then after that it can rebound to back higher. Okay, so you know it goes up down up down up down, it makes like the trend is upside. Okay, so it's a zigzag. So right now this is what the one, the target has already been achieved. I have just reversed the entire position. Look now, see this one, how the body keep on closing below this one. Okay, the body is keep on closing. Now what does the market does? The market will go downside. Mark my words, guys, it will go like the way it did before, from here to here. The way it will does to over here to here, over here to here. If it goes above it, no issue. We'll only lose a certain percentage of it. Okay, not more than that. So that's why that's the real logic, because I know my position is being getting managed up by the bot, not by me. So I don't have to worry about any sort of risk management, or I don't have to worry about anything of kind of a position sizing. Yeah, I have to place the target, I have to place the stop loss, and then I have to figure it out. Guys, I don't have to do all those like heavy lifting. Okay, it's all done by the bot. So it's better, like if you are a scalper, it's very good, you can use this one. If you are a basically it's designed for the scalpers, like the person who goes on scalping the stocks like this momentum. So at this dynamic hedger is the best application, you know, you can use like for scalping. Show me your trade, Mudis Mohammed Qasim. Okay, so okay, let me show you my trade, today's trade, guys. So the history is all recorded up over here. So started with 107,258. That was the deposit rate, and the amount of loss is like minus 7507. Now we had a loss like this trade, five trade. I just took it like, okay, it was like demo one, just took it, and then I went into the Zao USD one. So with the 10 lot, I just took the trade. So we had a losses, then we had a profit, like the profit amount was this much, and then after that we have losses, like then losses. So these are the losses. Now over here we can see these are the profits. These are the levels of profit on 26th. So this comes to the date 26th changed. So we have a profit loss. It's all managed up by the bot. So the 26th was a little bit. Look, the position size also keeps on changing from 0.51. Then it's all gone. Then 26, then 76 position, then 1.14. Then it keeps on going again and again and again. And on today, like we have a profit that is 27th 8. Okay, so we had almost like more than 500 US dollar profits today. So and the bot is down, the bot is running up like $28 profit. So Mohit Kasim, this is the profit and this is the loss that we have right now. Okay, yes. So I'm going back to this one, guys. Now look, in during the Asia session, guys, the market like rallied up.
okay, and now right now like anything, and now the London sessions will get activated. So in London session, guys, if Asia session expanded, that means the London session will go down. Okay, it will go super down. So I'm just waiting for the Londons to get activated. Okay, let's see what happens, because not kind of you say not expecting some big moments, but I'm expecting something. Okay, something from the London, because it's the only the London session that I'm very much comfortable to trade with. Not also in Asia, and not also never. I think no one. Okay, never ever try to trade the New York session, guys. It's the most brutal one. It can wipe out the entire portfolio, because trading the New York session could be the most brutal one. It is like it runs like anything. Okay, there's so much volatility. It's like super difficult to manage the entire position, guys. Katinja ji demo real account है, तो प्रधान जी is the real account. Okay, there is no demo account. You see, this is the account. Click on it, please charge. This is my name. This is Flexi Market. This is Flexi. Okay. Previously, now this is the account. Right now we have this balance also 99750. Right now, the balance which you have seen, this is what it is. We'll go back to this one. So Rocket Team, your boat accuracy, it's like 70%. It's not accurate. Okay, it's not accurate. It's not accurate. Okay, it manages your fund. It's manage your trade. Okay, it's called dynamic hedger. Dynamic hedger. It's not predict the technical stuff, guys. Rocker Tom. It just manage your position. Okay, you take a trade, and the trade, if a SL hit, it automatically pays target and stop loss first, and then second is if your stop loss got hit, if your target got hit, then automatically the reverse trade will get cancelled. If your stop loss get hit, so it will automatically activate your reverse positions, okay, with higher lot size. That's what it does. Okay, nothing else. And you see, in the end it will make profit, because the target and the stop loss is always same. So this is dynamic hedger, guys. It does not predict the market. It just go exactly, it all it does is just manage your risk. And see, once you placed, you can readjust your target price. You can see, you can push it to upside over here target, or you can push it to the downside. You can modify it as per your need. So there is nothing much you can do. Look, stop loss, buy stop. If you want to get activated now, you can click onto this one. Now you can place to the downside. Okay, here you can place it to the downside to the exact price that you want to do. Okay, so that's all it is. I'm closing that. I'm keeping that. I'm just closing this one. Okay, I'm not making some sort of changes, pushing it back to the original place.
Now I start to understand the more it keeps bouncing. If this level keep makes BS by celebrity, which is will taken later done as well. Thank you, brother. Yeah, you're welcome. You're welcome. I So guys, let's see. Let's talk about this one. The charts. Look, it's going up. Fine. Let's see what it does. So nothing else, nothing much. Look at now. I'm starting to understand. Let's keep bouncing. Thanks for that. So guys, just you have to give time to the market because the market doesn't care about your position. What the market does is that market keeps on doing what it needs to be done. सर आपके अल्गो को किस तरह से स्ट्रैटेजी दिया है थोड़ा बताइए प्लीज राम जी भागेरी भाई घोरी ओके Okay, let me explain you guys. Ritanjali, so look, right now, what this is a dynamic hedger, ठीक है? ये काम क्या करता है? ये काम ऐसे करता है कि सपोज मेरे को लगता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो मैं यहाँ पे सेल प्लेस कर दिया, ठीक है? आप देखोगे ट्रेड में जाके कि मैंने 160 पॉइंट पे सेल ट्रेड कर दिया, ठीक है? अब इसमें क्या है कि इसका टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली फिक्स्ड है, तो यहाँ पे देखिए 4160 पे ये सेल प्लेस हुआ, टारगेट प्राइस हो गया 4150 और इसका स्टॉप लॉस हो गया 4170, ठीक है? अब ये डायनामिक हेजर क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली
4170 पे, यानी कि स्टॉप लॉस के जगह पे एक बाई पोजीशन एक्टिवेट कर देता है विथ हायर लॉट। ठीक है, जहां पे इतना लॉस हुआ है उससे आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट होगा। जब जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, ये बाय पोजीशन आपका एक्टिवेट होगा और आपका ये वेट करेगा नेक्स्ट स्टॉप के लिए जब तक आपका टारगेट हिट ना हो जाए। ठीक है, जब ये आपका टारगेट हिट हो जाएगा दैट मीन्स यू आर डन फॉर द डे। ओके, so this is very easy and we have done it. And guys, this is called dynamic hedge. It all manages your position, nothing else. Okay, its job is to manage the position. Okay, so this is what it does. It does not predict the market condition. So guys, dynamic hedger कौन यूज कर सकता है? Dynamic hedger जो लोग को मार्केट के बारे में नहीं पता, एवरीवन शुड यूज। अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप यूज कर सकते हो। इट विल हेल्प यू लॉट, इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द लॉसेस, और कोई भी यूज कर सकता है। एंड गाइस, द बेस्ट थिंग अबाउट कि आप अगर पॉप फॉर्म चैलेंज पास करना चाहते हो तो ये दिस इज द ओनली सॉफ्टवेयर दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द लॉसेस। ओके, सो नथिंग एल्स। ओके, so this is what it does. Now guys, focus on to that one because it's a very powerful bot guys, that is because देखिए यहाँ पे आपको आप बाई तो कर लिए लेकिन आपको टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बॉट ऑटोमेटिकली टारगेट प्राइस और स्टॉप प्राइस ऑटोमेटिकली फिक्स कर देता है। ठीक है, तो जहां पे आपको 30 सेकेंड्स लगता है बाई करने में और टारगेट और स्टॉप लॉस लगाने में, ये बॉट विद इन स्नैप ऑफ सेकेंड्स आपका टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर देता है। तो जब आप अगर स्कैल्पिंग करोगे तो स्कैल्पिंग में ये आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। आप चाहो तो यहाँ पे इस बॉट को आप खुद से रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इट ऑल डज लाइक लाइक दैट। मतलब कितने लॉट साइज बढ़ता है सर? ये 10 पॉइंट बढ़ता है, 10 का बढ़ता है। और 10 टीपी, 10 टीपी, 10 एसएल, 10 10 एसएल। ठीक है, इस बीच में ये खाली आपका रिस्क टू रिवार्ड को मैनेज करता रहता है। ठीक है, अब आपका रिस्क टू रिवार्ड में आपका ज्यादा लॉस तो आपको बड़ा दिखेगा लेकिन आपका लॉस बड़ा होगा नहीं एक्चुअली, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर देता है। मोहब्बत अय्या सुपर बॉट का क्या प्राइस है? बॉट का प्राइस प्राइस बॉट का प्राइस है 1 डे के लिए फ्री, 7 डेज 49, 1 मंथ 149, 1 ईयर इज 799। Now I start to understand. The more it keeps bouncing in those levels, it keeps making this. Okay. Yes.
राम जी भाई भूरी, पर डे में मैक्सिमम कितना डॉलर का रिवॉर्ड्स रुक जाता है? इट विल गिव यू, इट मैनेजेस योर रेट, सो यू कैन एक्सीड मोर देन लाइक 5% आप रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 10% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो. So right now the market is going up. It's okay, fine, done, good. Okay, guys, the winter came too early. Yes, per day, yeah, it's okay. I hope I have given you answers. Okay. अर्जुन कदम बाई सेल खुद करता है क्या? हाँ. Yes, look, guys, market is going up. Safir said hi. Hi, Safir, how are you? अर्जुन कदम बाई या सेल खुद करता है, ये सिर्फ इट डज बाय मैनेज योर पोजीशन, गाइस, नथिंग.
सो यस, एमटी बताओ जो एक जबरदस्त, नहीं लेना आपको रोबो, ओके सर। ऐसी बात नहीं है, 1 मंथ का कितना प्रॉफिट किया। तो अर्जुन कदम, फॉर 1 मंथ वी आर रनिंग, सो इट इज जस्ट 3 डे, इट इज जस्ट 3 days, ओके। इट विल टेक टाइम, it will take time for this to get run up, okay। Suffer said hi, okay। So okay Arjun, I will explain you once more about the bot, how it works। देखिए, so अर्जुन कदम, the bot is all about, द नेम इज डायनामिक हेजर। तो हेजर का मतलब क्या होता है गाइस? हेजर का मतलब होता है हेजिंग, ओके। हेजिंग क्या करता है, मतलब कि रिवर्स पोजीशन लगा देना, ठीक है। अगर आपका पोजीशन बाय पे है तो वो सेल की तरफ लगा भी देगा पोजीशन, इसको हेजिंग बोलते हैं। क्योंकि देखिए, मार्केट इधर अप जाएगा या डाउन जाएगा, ठीक है। यही दो कंडीशन होगा, या तो प्रॉफिट होगा तो या तो लॉस होगा। लेकिन आपको पता नहीं है कि मार्केट किधर जाएगा, या अप भी जा सकता है या डाउन भी जा सकता है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। तो हेजिंग का क्या प्रोसेस होता है कि हेजिंग जो सॉफ्टवेयर होता है, इसमें आपको मार्केट का डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिकली जब आप बाई ऑर्डर लगाते हैं तो मार्केट ऑटोमेटिकली टारगेट और स्टॉप लॉस लगा देता है। अगर आपका टारगेट अचीव होता है तो ऑटोमेटिकली जो आपका रिवर्स ऑर्डर जो लगा हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो हेजिंग क्या करता है, आपका लॉट साइज थोड़ा सा बढ़ा देता है और एक रिवर्स ऑर्डर प्ले कर देता है। उसमें भी फिर से आपका स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस सेम ही रहता है, जहां पे लॉट साइज बड़ा होने के कारण आपका प्रॉफिट भी थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैं यहाँ पे सेल पोजीशन एक्टिवेट किए हैं, 0.10 लॉट, 0.10 लॉट, 0.10 लॉट, 10 10 10 10 10 10, करेक्ट। अब ये मार्केट में या तो मेरा टारगेट प्राइस हिट होगा, ठीक है, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। ये मेरा स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है, ये मेरा टारगेट प्राइस है सेल का और ये मेरा टारगेट प्राइस है, और ये मैंने सेल यहाँ पे कर रखा है। अगर ये मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, बाय स्टॉप, तो यहाँ पे मेरा एक बाय ऑर्डर भी लगा हुआ है जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगा और इसका टारगेट 4186 तक लेकर के जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट में मोमेंटम आता है तो ये डायनामिक हेजर है, ये पोजीशन को कैलकुलेट करता है। अब देखिए यहाँ पे मेरा बाई है 4163 पे, ठीक है, राइट नाउ, सॉरी 4149 पे, 59 पे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो मेरा स्टॉप लॉस भी मेरा 4159 होगा और मेरा जो टारगेट प्राइस है वो मेरा 10 पॉइंट अबव होगा, यानी कि 1:1 का मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस है। तो गाइस, अर्जुन जी, आपको ये सेटअप समझ में आया कि ये डायनामिक हेजर है। तो ये आपका पोजीशन को कैलकुलेट करता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली विद इंक्रीज इन लॉट। अगर आपको ऐसा हिट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली एक लॉट साइज बढ़ा के एक रिवर्स ट्रेड कर देगा विदाउट एनी लगता है इंस्टेंट, ओके, ठीक है। जहां पे आपका
सेकंड में टाइम बर्बाद होगा, वो चीज इसको प्रोवाइड करेगा गाइस। इसका बेनिफिट ये है कि आप प्रॉफर्म को चैलेंज को पास कर सकते हो। और यहाँ पे बेस्ट थिंग है कि आप इसका जो स्टॉप लॉस लगा है या टारगेट प्राइस लगाया है, आप उसको मैनुअली भी रीएडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो गाइस दिस इज डायनामिक हेजर गाइस, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गाइस टॉक टू सपोर्ट टीम। ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। So I hope you guys have a lot of information I have given to you guys. So that's it. So guys, right now the market is going against. Now what I will do, I will close this position. ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे पोजीशन को क्लोज ऑल भी कर सकता हूँ या मैनुअली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्लोज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड मेरे अगेंस्ट में गया तो मैं इसको क्लिक किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं जाकर के क्लोज भी कर सकता हूँ। ठीक है, एसएल हिट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बस इसको हिट कर देता हूँ। तो एनीवे डिलीट दिस ऑर्डर, कोई बात नहीं। लाइक इफ आई वांट टू क्लोज, आई एम क्लोजिंग ऑल माय पोजीशन हियर। तो गाइज देखिए यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर्स था प्रीवियसली, उसको भी मैं ऑर्डर्स को भी मैं डिलीट ऑल ऑर्डर्स कर देता हूँ ऑटोमेटिकली। तो इट्स नाउ फाइन, डन। तो राइट नाउ गाइज आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस। नाउ इट्स ऑल डन, द पोजीशन इज बीन क्लोज्ड। ठीक है।
ओके, हेलो गाइस। हेलो हेलो। आवाज आ रही है क्या सभी को? ओके, तो इससे पहले आप जिनका आवाज सुन रहे थे उनका नाम था मिस्टर प्रियेश और मेरा नाम है सुमित। ठीक है, तो टीम को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए लोग इस यूट्यूब चैनल पे हैं, मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अभी के लिए हमने कोई भी अपना बाइंग पोजीशन नहीं रखा है या फिर कोई भी ट्रेड इनिशिएट करके नहीं रखा है। ठीक है, देखते हैं मार्केट को, एक सेटअप फाइंड करते हैं, आफ्टर दैट में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे चार्ट को अगर देखेंगे हम लोग ध्यान से, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजन है अभी मार्केट में कि सडन बाइंग सडन सेलिंग इस टाइप का मोमेंटम मार्केट शो कर रहा है। ये देख सकते हो, मार्केट कहीं ना कहीं अभी साइडवेज जोन में है, कह सकते हैं। देखते हैं, कुछ सेटअप फाइंड आउट करते हैं, अगर कुछ सेटअप मिलता है तो ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, ये जोन कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन की तरह देखने को मिल रहा है हमें। ओके, वेट अ सेकेंड गाइस, मैं थोड़ा सेटिंग्स इसका चेंज देखने में सही रहे। हाँ, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मार्केट जिस जगह पे अभी है, ये कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन है। ठीक है, तो अभी ये अगर बस ये चीज देख के अगर ट्रेड लेंगे तब तो यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बन रहा है। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज के ऊपर ट्रेड कभी इनिशिएट नहीं करना चाहिए। कम से कम डबल कंफर्मेशन तक का तो वेट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिल रहा है कि ये एक सप्लाई जोन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे कुछ और अगर हमें ट्रेड कंफर्मेशन मिलता है तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, अब ये तो सप्लाई जोन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर लिक्विडिटी है अभी मार्केट में। ये जो जोन देख रहे हैं आप, या फिर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये जो जोन है ये एक सब लिक्विडिटी जोन है। मार्केट अगर इस जोन के ऊपर एक लिक्विडिटी बना के और फिर से अगर गिरता है तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वेट करते हैं और देखते हैं, और अगर कुछ सेटअप मिलता है हमें तो ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अभी के लिए तो देख रहे हैं मार्केट को, तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला है। ये कहीं ना कहीं अगर देखेंगे हम लोग तो ये एक बुलिश ट्रेंड की ओर ये देखने को मिल रहा है। ये जो यहाँ से बाइंग आया है ये एकदम से बुलिश मोमेंटम है अभी मार्केट में। ठीक है, तो और एक जोन है मार्केट का जो कहीं ना कहीं को अभी के लिए डिलीट करते हैं, क्योंकि जितना चार्ट को क्लीन और साफ रखोगे उतना ट्रेड लेने में जल्दी डिसीजन ले पाओगे ट्रेड में। ठीक है, तो चार्ट को हमेशा क्लीन रखा करो, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये कहीं ना कहीं बहुत वीक
बाइंग आया है, क्योंकि इस टाइप का मोमेंटम में इस तरह का अगर हम मार्केट में अगर ट्रेड लेंगे तो फिर हाई चांसेस होगी कि हम लॉस कर दें, ठीक है। तो हम वेट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो बहुत वीक बाइंग है अभी मार्केट में, तो कुछ सेटअप बन नहीं रहा है, ठीक है। तो जबरदस्ती का ट्रेड लेने से अच्छा है कि वेट कर लेते हैं, ठीक है। जबरदस्ती का ट्रेड लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रेड लेते भी हैं तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। वेट करना ही बेटर रहेगा। यहाँ पे बनने देते हैं पहले। सुनीता सेल। देखो, अगर आपको ये चीज देख के सेल करना है तो फिर आप अपने हिसाब से ट्रेड लो, क्योंकि हम ये बस एक एक कंफर्मेशन पे ट्रेड नहीं दे सकते, ठीक है। तो अभी वेट कर रहे हैं। अगर आप लोग भी वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि देखो फालतू का लॉस लेने से अच्छा है कि वेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम है जिसको हम अभी के लिए एक ट्रेंड लाइन कंसीडर करके चल सकते हैं इस चीज को, क्योंकि अगर देखोगे तो ये एक बार यहाँ से बाइंग आया है, उसके बाद फिर इस जगह से कहीं ना कहीं बाइंग आया था, और ये लेवल पे भी बाइंग आया था, और अभी जिस एक बार फिर इस लाइन को इसने रिटेस्ट किया, लेकिन फिर से देख सकते हो एक कहीं ना कहीं बाइंग मोमेंटम ही दिख रहा है अभी मार्केट में। अभी देखने के लिए बस हमें यही देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड होगी तो फिर हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और नहीं तो एटलीस्ट इस लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे जाता है मार्केट तो फिर हम अपना सेलिंग क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है। अगर मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम मार्केट में सेल करना स्टार्ट करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर देखते हैं, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है। तो भी ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, तो इसको भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा हमें, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बार यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है मार्केट। प्रीवियस में अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे देख सकते हो कितना कितना बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, फिर इस जगह पे देखो, फिर इस जगह पे देखो, है। तो मार्केट ने बहुत बार इस लेवल से रिजेक्शन लिया है। वेट कर लेते हैं, क्योंकि देखो वॉल्यूम नहीं है अभी मार्केट में, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है अभी के लिए, तो वेट करना ही बेटर होगा, ठीक है। और डायनेमिक हेजर का कौन कौन यूज़ कर रहे हो एक बार चैट में बताना, ठीक है। डायनेमिक हेजर जिसको नहीं पता, जो पहली बार स्ट्रीम पे आए हैं उनको मैं बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पे एक बाय पोजीशन यहाँ पे लिया, ठीक है। जैसे मैंने एक यहाँ पे बाय पोजीशन लिया, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, मैनुअली अगर ट्रेड करते हैं तो क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं, अपना कुछ एसएल रखते हैं,
एटलीस्ट ये तो होगा, ठीक है। और इसमें टीपी सेट करते हैं आप अपना, एटलीस्ट 1:2 या 1:3, ये अपने सेटअप के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये बॉट क्या करता है, जैसे ही हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो बॉट क्या करेगा, ऑटोमेटिक खुद ब खुद एक टीपी डिसाइड कर देगा, ठीक है, और एक एसएल भी खुद कैलकुलेट करके सेट कर देगा ऑटोमेटिक सिस्टम पे, ठीक है। और सेट करने के बाद अगर आपका टीपी हिट होता है, ये है टीपी, सपोज मान लो मार्केट यहाँ से एक इस टाइप का बुलिश कैंडल बना देता है, ठीक है, तो हमारा टीपी अगर हिट हो जाता है तो हम तो प्रॉफिटेबल हो गए, उसके बाद तो फिर बॉट हमें प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। और इनकेस अगर हमारा लॉस हो जाता है, लाइक इस टाइप से कैंडल बना दिया इस मार्केट में, तो हमारा टीपी इस लेवल पे कट चुका है, ठीक है। तो ये उसके बाद ये बॉट क्या करेगा, ये जो जितना भी लॉस हुआ होगा स्टॉप लॉस का, ठीक है, उसको ये रिकवरी में लग जाएगा, ठीक है। जिनको, एक सेकेंड, जिनको इस चीज को लेके कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे टेलीग्राम चैट सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो, ठीक है। मार्केट में कुछ मोमेंटम नहीं है अभी, इसीलिए हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं। ये देख के मत अभी ट्रेड लेना कोई, 1 मिनट पे फाइंड करेंगे तो मिल जाएगा ट्रेड, लेकिन वो सेफ ट्रेड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एज अ सेफ ट्रेड कंसीडर करके नहीं चल सकते, तो देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो फिर प्रॉफिट बनाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट किधर भी जाए प्रॉफिट से मतलब है हमें। मार्केट बुलिश मोमेंटम शो करे, बियरिश मोमेंटम से शो करे, नो मैटर, हमें प्रॉफिट बनाने से मतलब है मार्केट से, ठीक है। तो देखते हैं अगर कुछ मार्केट यहाँ पे वो करता है तो फिर हम एक इसमें पोजीशन ऐड करेंगे, ठीक है। अभी के लिए तो ड्राइव होने देते हैं, सेकेंड, इसलिए हमने अपना बैकग्राउंड में MT5 का टर्मिनल खोल के रखा है। बीटीसी को चेक करें क्या, एक बार बीटीसी में देखते हैं, अगर बीटीसी में कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिलता है तो बीटीसी में ट्रेड इनिशिएट करेंगे हम लोग। बीटीसी अभी कहीं ना कहीं फिर से अराउंड 80,000 के आसपास गया था बीटीसी, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बुलिश मोमेंटम शो किया है बीटीसी, तो इसमें थोड़ा सेफली अभी ट्रेड करना, क्योंकि इसमें अकाउंट वाइप आउट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है अभी के टाइम है, तो इसमें थोड़ा संभल के ट्रेड करना। अभी अगर पीओवी अगर हम चेक करें, ये भी कहीं ना कहीं अपने सप्लाई जोन पे ही है। यहाँ पे अगर देखोगे कैंडल के साइकोलॉजी को अगर समझे हम लोग बीटीसी, तो ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिला है हमें, ठीक है। ये देखो, ये जो इतना बड़ा सेलिंग है, ये कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन क्रिएट कर दिया इस जगह पे, ये इस लेवल पे एक सप्लाई जोन है, और वहीं के आसपास अभी मार्केट ड्राइव भी कर रहा है। तो डिसिप्लिन के को फॉलो करो, डिसिप्लिन को फॉलो करके ही ट्रेड लो, क्योंकि मार्केट एसएल हंटिंग ज्यादा करता है आजकल, क्या ट्रैप ज्यादा करेगा।
लिक्विडिटी पे ही तो मार्केट चलता है, ठीक है। तो आप लिक्विडिटी ना बने इस मार्केट में, ठीक है। लिक्विडिटी बनाने का कोशिश करिए, बनने का कोशिश मत करिए कभी। अगर आप लिक्विडिटी बनोगे तो फिर मार्केट आपको हमेशा लॉस ही देगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने सप्लाई जोन पे है, इसको भी एटलीस्ट ये इससे नीचे आता है तो ही कुछ हो पाएगा। अगर इसको ब्रेक कर देगा तब एक अच्छा खासा हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर ये देखो ये क्या हुआ है, यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आया है, अगर ये थोड़ा बहुत रिटेस्ट लेके अगर हम आपको 1 मिनट पे शो करें तो यहाँ से बैक टू बैक बाइंग आया है। एटलीस्ट मार्केट अगर इस लेवल तक आता है तो एक सेकेंड रुक जाओ, इसका चेंज करना पड़ेगा। फिबोनाची को जिसको जिसको यूज करना आता है वो मार्केट में यूज करो, क्योंकि कभी कभी आपको हेल्प कर देगा ये, ठीक है। और यूजफुल है क्योंकि ये आप एक तरह से मैथ कैलकुलेशन बोल सकते हो, क्योंकि देखो ये जो मैंने यहाँ से लगाया, ये लो टू हाई मैंने लगाया है फिबोनाची, ठीक है। और ये 0.3 का लेवल है, मतलब ये जितना ऊपर गया यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी ऊपर गया ये उसका 30% का एरिया हो गया, ठीक है। और ये इसका 50% का हो गया। तो फिबोनाची कॉन्सेप्ट में यही है, मार्केट अगर अपने 0.3 के लेवल से, देखो जैसे यहाँ से मार्केट आया ऊपर, ठीक है, तो मार्केट हमेशा ऐसे नहीं जाता है, ठीक है। मार्केट रिटेस्ट लेगा तो एटलीस्ट 0.3 तक तो रिटेस्ट लेता ही लेता है, तभी हम इसको हेल्दी एक रिटेस्ट बोल सकते हैं। अगर ये यहाँ तक रिटेस्ट नहीं लेता है तो फिर मे बी यहाँ तक ले ले, ठीक है, 0.5 तक, और उसके बाद ऐसे इस तरह का मोमेंटम देता है मार्केट। तो ये आना, ये जो रिटेस्ट है ना, ये मार्केट में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्केट कभी भी एकदम से गिर सकता है। तो ये आना बहुत जरूरी है, हमेशा रिटेस्ट मार्केट में आता है तो फिर नए बायर्स एंटर होते हैं, लिक्विडिटी मिलता है इस सबसे मार्केट को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो एटलीस्ट मार्केट अगर इस जोन के आसपास आता है तो फिर ये एक इसमें एक बाइंग पोजीशन ऐड कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम हमें देखने को यहाँ पे प्रीवियस में मिला है, ठीक है। और एसएल छोटा सा कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास रखेंगे अराउंड। अगर मार्केट इस लेवल तक आता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक पोजीशन बनता है बाइंग का, छोटा सा रिस्क लेना यहाँ पे बनता है, क्योंकि देखो मार्केट कहीं ना कहीं सप्लाई जोन पे है और ये इसको ब्रेक करेगा तो फिर बहुत बहुत लोगों का लिक्विडिटी लेगा मार्केट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हेवी बाइंग हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो एक बाइंग पोजीशन ऐड कर लेना, छोटा सा क्वांटिटी ऐड करना और छोटा सा स्टॉप लॉस रखना, और प्रॉफिट प्रॉफिट एटलीस्ट 1:3-4 रख सकते हो, क्योंकि मार्केट अभी बहुत पीक पॉइंट पे है। ये एक मेजर जोन है, ये जो आप देख रहे हैं ये सप्लाई जोन है इसका, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग मोमेंटम शो हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट नीचे आएगा ही आएगा, इतनी बार मार्केट इस जगह से भी ऊपर जाता है ताकि न्यू बायर्स एंटर ना कर पाए। मार्केट आजकल बहुत स्मार्ट हो चुका है, ठीक है। तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे अगर चलोगे तो लॉस आएगा आपके हाथ में। गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड का क्या हुआ। गोल्ड भी दो मूव कर रहा है अभी, कुछ ट्रेड बन नहीं रहा है। देखो हम जैसे ही यहाँ पे आए गोल्ड ने एक मूव दे दिया, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम एक सेलिंग क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, ठीक है। और एसएल अराउंड इस लेवल के आसपास का रखेंगे, 0.5 इस लेवल पे एसएल रखना। मार्केट को यहाँ आने दो, ठीक है। ओके, तो मार्केट को एक बार यहाँ आने दो, जिन जिन लोगों ने इसमें एंट्री ले रखा है वो होल्ड कर सकते हो, और जो जो लोग लेट हो चुके हैं तो वो लोग यहाँ पे री एंट्री कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था, पहले ही बोला था, ये एक सपोर्ट जोन है कहीं ना कहीं, तो मार्केट ने ब्रेक किया। यहाँ पे सपोर्ट था, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ट्रेंड लाइन था, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी एक छोटा सा सपोर्ट का काम कर रहा था।
तो यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे जिस जिस लोगों को एंट्री करना है 4161 पे एंट्री कर लेना, और या फिर जो भी कुछ लोग लेट हो चुके हो तो वो लोग थोड़ा रुक के ट्रेड ले लेना, या फिर जो लोग लेट हो या वो लोग छोटा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। और एसएल इस लेवल तक का आसपास रखना है, 4163 पे एसएल रखो। अभी हम ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे बैकएंड में कुछ काम चल रहा है, ठीक है। तो ट्रेड अभी इनिशिएट नहीं कर सकता मैं। अगर आप लोगों को ट्रेड लेना है तो यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि सुबह से बहुत सारा ट्रेड इसमें हो चुका है इस अकाउंट में। तो इसमें कुछ बैकएंड में काम चल रहा है इस वाले अकाउंट के, ठीक है। तो मैनेजमेंट लेवल से कुछ डिसीजन आएगा, उसके बाद ही इस अकाउंट से ट्रेड किया जाएगा। तो अभी के लिए आप लोगों को अगर ट्रेड लेना है तो आप ले सकते हो। मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया ये वाला, ये वाला ट्रेड अगर किसी को लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। तो ब्रेकआउट करे एक बार तो फिर टीपी अराउंड यहाँ तक का रख सकते हो, ये लेवल तक का टीपी रख सकते हो, ठीक है। कहीं इसको टीपी 1 कंसीडर करके चलना। ये अगर ब्रेक करेगा तो ये टारगेट को हिट करना चाहिए। वेट कर लेते हैं। ये ट्रेड किसने एंट्री किया है बताना जरा, ठीक है। ये ट्रेड में जो जो भी एंटर कर चुके हो चैट में लिखो, ठीक है। गोल्ड में अगर आपका भी ट्रेड रनिंग है तो होल्ड करो, सेलिंग का ट्रेड होल्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एसएल है, छोटा सा एसएल है, 61 पे मैंने एंट्री करवाया है और 63 पे एसएल है, 63 पे। तो होल्ड कर सकते हो, ज्यादा एसएल नहीं है, बस 20 पिप्स का एसएल है। और उसके बदले में अभी तो प्रॉफिट के लिए अगर देखोगे तो यहाँ पे तो पूरा अभी खुला मैदान है, ठीक है। यहाँ पे अभी प्रॉफिट के लिए पूरा खुला मैदान है, तो प्रॉफिट के लिए होल्ड करो। एटलीस्ट टीपी 1 तो इस लेवल तक रखना है, ठीक है। पार्शियल क्वांटिटी करके एग्जिट करना अगर लोगे भी तो। यूसीबी आउटलेट 5 लॉट सेल, हाँ कर सकते हो। कोई यहाँ पे एग्रेसिव जाना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि एसएल छोटा बन रहा है यहाँ पे। और कभी भी ट्रेड लो तो एसएल के बेस्ड ही लो, एसएल छोटा रखो और ट्रेड लो। एसएल जितना छोटा रखोगे उतना। और देखो, और जिनको ज्यादा सेफ होना है, जिनको ज्यादा सेफ होना है वो इस लेवल के ऊपर रख सकते हो। जिनको स्विंग के लिए होल्ड करना है इस ट्रेड को, जो लोग इस ट्रेड को स्विंग ट्रेड की तरह होल्ड करोगे तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एसएल कर देना। जो लोग स्विंग ट्रेड के लिए इसको लोगे तो 4169 कर देना, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए मार्केट देख सकते हो फिर से साइलेंट हो गया है। मार्केट कुछ मूव देना नहीं चाह रहा है अभी। अभी के लिए अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा लिक्विडिटी लिया है मार्केट ने, ठीक है, और कुछ मूव दे ही नहीं रहा है अभी। जब से मैं लाइव आया हूँ मार्केट कुछ मोमेंटम शो नहीं कर रहा है, ठीक है।
देख सकते हो मैंने जहां पे आपको एंट्री बताया था मार्केट वहीं से गिर रहा है और बहुत ज्यादा गिर सकता है मार्केट यहाँ से, ठीक है। मैंने आपको इस जगह पे एंट्री दिया, बोला था करने के लिए। जिन जिन लोगों ने ले लिया है वो अपना एसएल 4162 के आसपास रखो या 4163, ओके। और देख सकते हो मार्केट धीरे, देखो मोमेंटम है नहीं यहाँ पे, मोमेंटम ये इस टाइप का कैंडल चाहिए हमें, ठीक है। कभी भी ट्रेड इस तरह के कैंडल में होता है जो 1 गो में टीपी हिट करे। अभी देख सकते हो बहुत वीक सेलिंग का टाइप जैसा बन रहा है अभी यहाँ पे, तो इस मार्केट में मजा नहीं आता ट्रेडिंग करने में, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी तो मैं अपना पोजीशन ऐड किया नहीं हूँ क्योंकि हमारे बैकएंड में कुछ काम चल रहा है, तो जिस वजह से मैं यहाँ पे अभी कुछ पोजीशन नहीं ऐड किया हूँ। अगर मैं आप लोगों को ये ट्रेड प्रेफर करूंगा, जो भी लोग अभी ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, मेक श्योर आप ये वाले ट्रेड को इनिशिएट करो, छोटा सा एसएल रखो इस लेवल तक, और इस ट्रेड को एटलीस्ट देखो। ये हो गया टीपी लास्ट, ठीक है। अब आपको एक जोन ये भी हो गया है यहाँ पे, अगर देखोगे तो ये भी जोन है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को रोक सकता है, तो फिर भी होल्ड करेंगे, ठीक है। जो भी लोग ये ट्रेड लिए हो एटलीस्ट यहाँ तक होल्ड करो 4143, और एसएल को धीरे धीरे ट्रेल करते जाओ। 4163 एसएल था, अगर ये मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, एक सेकेंड, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो एसएल ट्रेल करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे आएगा तो एसएल को ट्रेल करेंगे। देख सकते हो यहाँ पे बहुत बढ़िया सेलिंग मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है कुछ खास, देख पा रहे होगे यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे जितने भी बायर्स लोग यहाँ पे बाय करके बैठे थे उन लोगों का लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, हमने कंफर्मेशन का वेट किया, मार्केट ने फिर से एक रिटेस्ट दिया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री करके अभी हम प्रॉफिट में हो हैं अभी, ठीक है। और जो जो लोग ये ट्रेड लिए हो आप लोग भी प्रॉफिट में होगे, तो होल्ड करो ट्रेड को, ठीक है। चलो ठीक है, मैं भी इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर ये पुल बैक देता है तो मैं अपने लेवल तक के आने का वेट कर रहा हूँ। अगर मार्केट फिर से अगर ये इस लेवल तक आता है तो मैं भी इस मार्केट में गोल्ड में मैं भी एक 0.10 के आसपास का लॉट सेल करूंगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ अपने लेवल तक आने का, अगर मार्केट इस लेवल तक एटलीस्ट आता है तो फिर मैं भी अपना क्वांटिटी ऐड करूंगा, ठीक है। अभी देख सकते हो मार्केट फॉल कर रहा है, लेकिन वीक सेलिंग है कहीं ना कहीं, ठीक है। एसएल को थोड़ा टाइट करके ही चलना, एसएल टाइट ही रखना अभी मार्केट में। लग नहीं रहा है मुझे री एंटर करने देगा मार्केट, लेकिन देखते हैं। इनकॉग्निटो हैकर, हाय, वेलकम टू आवर स्ट्रीम। यहाँ पे तो मनी फ्लो हो रहा है जैसे देख पा रहे होगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करूँगा, इस क्वांटिटी ऐड करूँ यहाँ पे कि नहीं करूँ, क्योंकि मेरे लेवल मैं तो यहाँ पे सेल का लेके बैठा था, ठीक है। तो मेरे दो सेकंड वाले अकाउंट में ये ट्रेड रनिंग है, तो वेट कर लेता हूँ। अगर कुछ पुल बैक देगा तो मैं भी आपके सामने लाइव ट्रेड कर पाऊंगा। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ पुल बैक जैसा देता है तो मैं भी यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करूंगा, ठीक है। तो एटलीस्ट इस लेवल तक अगर पुल बैक दे दे तो फिर क्वांटिटी ऐड करूंगा मैं। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे एक 0.10 का क्वांटिटी मैंने यहाँ पे सेल कर रखा है, और मैं एसएल ज्यादा नहीं दूंगा मार्केट को, है। यहाँ पे रनिंग है शायद ये ट्रेड, हाँ रनिंग है, और मैं एसएल छोटा सा रखने वाला हूँ। तो ये लेवल है अभी के लिए मेरा एसएल, एक सेकेंड गाइस, एसएल है मेरा 4161.71, 4161, हाँ ये भी एक ठीक एसएल है, सही एसएल है।
इस लेवल, ये लेवल भी एसएल रख सकते हो। ये जो लेवल है यहाँ पे ट्रेल करके एसएल कर सकते हो अभी के लिए, लेकिन मैं 4163 पे रख रहा हूँ एसएल, ठीक है। 4163 पे मैं एसएल कर रहा हूँ अपना। 4163, ओके। मेरा एसएल अभी 4163 पे है। तो मार्केट को ड्राइव होने देंगे, देखते हैं मार्केट हमें प्रॉफिट देता है कि लॉस। क्योंकि देखो कोई भी ट्रेड लो तो पहले सब कैलकुलेशन करके बैठ जाओ कि मुझे कहाँ पे एसएल रखना है, कहाँ पे टीपी रखना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, ठीक है। एक बार मार्केट में एंट्री कर जाते हो तो आप मार्केट के ऊपर छोड़ दो, आप टीपी एसएल अपना एक डिफाइंड रखो, ठीक है। और मार्केट के ऊपर छोड़ दो, मार्केट आपका टीपी या एसएल दोनों में से जो भी मार्केट को डिसाइड करना होगा वो खुद कर लेगा, ठीक है। देख सकते हो हमने जहां से ट्रेड लिया वहां से अभी तक मार्केट एटलीस्ट 1:5 दे चुका है मार्केट। हम एटलीस्ट 1:8-9 तक का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन देखो ये मार्केट में अभी वॉल्यूम नहीं है, मैं अगर कहूं तो वॉल्यूम नहीं है, नहीं तो हमारा इजी टारगेट अभी 1:9 हिट हो जाता। लेकिन फिर भी मार्केट गिर रहा है तो वेट करते हैं। और देखो इस तरह का अगर रिस्क रिवार्ड रखोगे ना, तो अगर आप 9-10 ट्रेड भी अगर आप लॉस करते हो और एक ट्रेड अगर आप प्रॉफिट करते हो, तो आपका वो 9-10 ट्रेड का जो भी स्टॉप लॉस रहेगा वो आपके एक ट्रेड में रिकवर हो जाएगा, ठीक है। इतना खराब एक्यूरेसी तो किसी का नहीं होगा जो 10 में से 10 ट्रेड लॉस कर रहा होगा, ठीक है। जो बिगनर होंगे शायद उन पे डाउट किया भी जा सके, लेकिन जो भी है देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरा छोटा सा प्रॉफिट चल रहा है अराउंड $40 के आसपास का, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे मेरा MT5 का टर्मिनल, तो ये क्या किया है मैंने, अरे देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही ट्रेड लिया इस बॉट ने क्या किया, ऑटोमेटिक मेरा टीपी भी सेट कर दिया, एसएल भी सेट कर दिया। मैंने अपने एसएल को तो मॉडिफाई किया, लेकिन मैंने अपने टीपी को मॉडिफाई करना ही मैं भूल गया, ठीक है। लेकिन देखोगे तो इस ट्रेड में अराउंड हमें ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है, अराउंड $50 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, हाँ। लेकिन अगर आप लोग होल्ड कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आप अपना पार्शियल क्वांटिटी एग्जिट कर लो। देख सकते हो मार्केट अराउंड 1:7 दे चुका है, ठीक है। तो पार्शियल मैं बोलूंगा अराउंड 50% क्वांटिटी एग्जिट कर लो अपना, ठीक है। और 50% को होल्ड करो। और एसएल में बता देता हूं, एसएल में आपको बता देता हूं कहां से आपको होल्ड करना है, ठीक है। एसएल अब आप अपना यहाँ इस लेवल पे मैं बता देता हूं, वेट अ सेकेंड गाइस। आप 4155 पे अपना एसएल को ट्रेल कर लो, ठीक है। 4156 कर लो, ठीक है। 4156 पे अपना एसएल को ट्रेल कर लो। हाँ एक सेकेंड, 41, और कितना प्रॉफिट चल रहा है क्रिप्टो ननबन आउटलेट जी, आपने 5 लॉट सेल किया था, आपका कितना प्रॉफिट चल रहा है ये बताइए आप कमेंट में, ठीक है। और जो जो लोग भी प्रॉफिट बनाए हो ग्रीन हर्ट के साथ चैट में आप लिख सकते हो कि मेरा इतना प्रॉफिट रनिंग है, मेरा इतना प्रॉफिट रनिंग है, ताकि मैं आपको और आगे अच्छे से एनालाइज करके मार्केट का क्या डिफिकल्टीज है, क्या मार्केट का बिहेवियर है, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। देखो हमारा टारगेट अराउंड 70% हिट हो चुका है, ठीक है। तो 30% के लिए आप छोटा सा क्वांटिटी ऐड करके रख सकते हो, क्योंकि 50% देखो 50% क्वांटिटी जो लोग एग्जिट कर चुके हैं वो अपना एसएल इस लेवल पे आप रख लोगे, ठीक है। ये आपका ट्रेलिंग एसएल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एसएल लिख देता हूँ, समझ जाना आप लोग। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है हमारा। अगर मार्केट इस लेवल तक आता है तो ठीक है, हमने तो प्रॉफिट बना ही लिया है, ठीक है। तो ट्रेलिंग एसएल है ये हमारा, और इस लेवल से ज्यादा होल्ड मत करना अगर मार्केट मार्केट फिर से रिवर्सल देता है, क्योंकि देखो मार्केट में मोमेंटम है नहीं, ठीक है। तो अगर मार्केट इस लेवल तक आता है तो निकल जाना सभी। ये मेरा 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, जिनको कोई भी कंफ्यूजन है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
किसी भी तरह का कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि इस ट्रेड का लॉजिक बताओ या कुछ भी ऐसा, ठीक है। लॉजिक जो लोग ट्रेड ये स्ट्रीम को जो लोग लेट से ज्वाइन हुए हैं उन्हें मैं बता दूं, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप लोग देखोगे तो ये कहीं ना कहीं बैक टू बैक बुलिश मोमेंटम इतने यहां तक शो किया, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर में एक सप्लाई जोन था जिसे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। हाँ, आउटलेट 50% बुक $1500, वेरी गुड, वेरी गुड, $1500 बुक, प्राउड ऑफ यू। एंड ऐसे ही मार्केट में डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म तक आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे अगर इसी डिसिप्लिन इसी रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड मेन है, ठीक है। अगर आपका थोड़ा बहुत एक्यूरेसी भी अगर आपका कम है तो आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है तो आपको मार्केट में आप सरवाइव कर सकते हो एटलीस्ट। यू स्पेसिफाई द री एंट्री पॉइंट। देखो अभी के लिए तो कुछ री एंट्री पॉइंट है नहीं, ठीक है। देखते हैं अगर इस लेवल तक अगर मार्केट फिर से आता है तो मैं री एंट्री के लिए बताऊंगा। आप तब तक स्ट्रीम पे जुड़े रहो, मैं आपको बताऊंगा अगर कुछ हमें री एंट्री के लिए मिलता है, ठीक है। टीएसएल मतलब है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर मार्केट यहां से अगर पूरा रिवर्स हो जाता है तो इस लेवल पे निकल जाना सभी के सभी, क्योंकि हमारा जो ये ट्रेड है अराउंड 1:11 दे चुका है, 1:11 दे चुका है हमें। तो वेट कर लेते हैं, बहुत छोटा सा डिफरेंस बचा है अराउंड, देखोगे तो। और मैं हमेशा जो भी ट्रेड दूंगा आपको वो छोटा सा स्टॉप लॉस वाला ही होगा, ठीक है। अराउंड 50 पिप्स और बचा है मार्केट को। अगर मार्केट हमें और 50 पिप्स देता है तो अपना फुल क्वांटिटी एग्जिट करके हम निकल जाएंगे। हमारा 50% क्वांटिटी अभी एग्जिट है मार्केट से। ये आउटलेट भाई जो है उन्होंने $1500 के आसपास बुक किया है। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करते हो तो आप भी प्रॉफिटेबल रहोगे। जो स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस में हमेशा निकलना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करते हो, लॉस को होल्ड करते हो, तो आपका अकाउंट लॉन्ग टर्म तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, आपका अकाउंट लो हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से साइकोलॉजी जो खराब होगा वो तो होगा ही। मतलब अगर आप देखो, मैं बताता हूं, मैं ये सब चीज को फेस करके तब इस लेवल तक हूं, ठीक है। देखो क्या होता है, अगर आप एक ट्रेड में लॉस कर लेते हो बड़ा सा, ठीक है, तो बड़ा अगर आप लॉस कर लोगे तो आप जो नेक्स्ट ट्रेड लोगे ना तो उसमें आपका क्या मेंटेलिटी रहेगा, भाई मुझे तो अब लॉस रिकवर करना है, बहुत बड़ा लॉस हो गया। एक तरीके से आपका साइकोलॉजी खराब होगा, आप मार्केट्स में फाइट करने आओगे। कहीं ना कहीं मार्केट कहीं भी जाएगा लेकिन आपको मार्केट से आपका कहीं ना कहीं पीओवी बनेगा कि नहीं, मुझे मार्केट से प्रॉफिट लेके ही जाना है, लॉस मुझे लेना ही नहीं है। तो उस चक्कर में आप क्या करोगे कि और लॉस कर दोगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अपना लॉस छोटा करो ताकि उसको रिकवर करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, ज्यादा डिफिकल्टीज ना आए, ठीक है। मार्केट देख रहे हो थोड़ा बहुत रिकवर करना चाह रहा है, इस लेवल तक देख लेते हैं मार्केट को, क्योंकि री एंट्री यहाँ पे कुछ कुछ सेलर लोग यहाँ पे री एंट्री किए हैं इस लेवल पे, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी हमारा इस लेवल पे है। अगर मार्केट कुछ हैवी बुलिश मोमेंटम शो करेगा तो फिर हम लोग इस लेवल पे काट देंगे ट्रेड को, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये कहीं ना कहीं वीक हैंड्स को निकालने वाला भी चीज हो सकता है, ठीक है। देखो जो जो लोग जिन 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 लोगों ने इस लेवल पे सेल किया था उन लोगों का एसएल जा चुका है कहीं ना कहीं। नहीं, अभी भी पेंडिंग है इन लोगों का एसएल, क्योंकि इस कैंडल का हाई है 4152 के अराउंड। तो मार्केट फिर से इसी लेवल से रिजेक्शन लिया है। ओके, सो वेट कर लेते हैं, अभी होल्डिंग ही होगा, सभी का ट्रेड होल्ड होगा अभी, तो होल्ड करो। क्योंकि क्या है, आज रोबो ने लॉस किया या प्रॉफिट सर? रोबो में अभी कोई हम लोगों ने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है, ठीक है। अभी हम लोग एक मैनुअल ट्रेड लिए हुए थे जिसमें इसने एक ऑटोमेटिक टीपीएसएल सेट कर दिया और हमारा इसमें टीपी हिट हो गया ये वाला, ठीक है।
ये वाला देख सकते हो। अभी ये जस्ट लाइव ट्रेड था, मैंने अपने टीपी को ट्रेल करना भूल गया। मैंने एक ट्रेड लिया और बस टीपीएसएल इस बॉट ने सेट कर दिया था। आफ्टर दैट क्या हुआ कि मेरा टीपी हिट हो गया, ठीक है। टीटीसी डन, होल्ड ऑन। हाँ होल्ड करो। देखो अगर मैं अब यही बोलूंगा अपना टी ट्रेलिंग एसएल इस यहाँ पे रख लो, ठीक है। लेवल मैं बता देता हूँ। इस कैंडल का हाई है 4154 पे अपना ट्रेलिंग एसएल रखो, ठीक है। 4154 पे अपना ट्रेलिंग एसएल रखो, क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो मे भी आपका प्रॉफिट जा सकता है। तो अगर आप 80-90% तक हमारा प्रॉफिट आ गया था, ठीक है, लेकिन मार्केट यहां से अगर रिवर्स ले रहा है तो जो प्रॉफिट है उसको जाने नहीं देना है। अगर मार्केट फिर यहाँ पे कुछ अगर हमें सेटअप दिखता है, अगर यहाँ पे फिर से कुछ सेलिंग का, तो फिर हम लोग री एंट्री कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वेट कर लेते हैं। और वेट अ सेकेंड गाइस। देखो अब री एंट्री पॉइंट के लिए मैं बता रहा हूँ, ये ट्रेड में जो जो भी लोग हो वो लोग अपना ट्रेलिंग एसएल मैंने आपको अभी बता दिया था, आप लोग निकल सकते हो, ठीक है। अब मैं री एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ, जो भी लोग सेलिंग में इंटरेस्टेड हैं अभी मार्केट में, वो लोग के लिए मैं एक री एंट्री पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। जे आर ट्रेडर, हाय, वेलकम टू आवर आवर स्ट्रीम, कैसे हैं आप। री एंट्री पॉइंट अब हमारा ये रहेगा। और अगर हम एसएल का बात करें तो हाँ, कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास रख सकते हैं हम लोग अपना एसएल, ठीक है। हाँ, तो अभी के लिए अगर देखोगे तो मार्केट अगर इस लेवल पे आता है, इस लेवल पे अगर आता है तो फिर री एंट्री कर सकते हैं हम लोग। लेवल पे अगर आता है मार्केट तो ये जो है, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। 645 बुक। हाँ, मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए बोला था पहले ही, ठीक है। आप पहले ही निकल निकल जाना चाहिए, या फिर आप शायद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे ही निकले हो, ठीक है। तो ठीक ठाक प्रॉफिट बन गया। अगर देखते हैं अब अगर अभी कुछ और सेटअप देखने को मिलता है तो हम लोग और ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है।
प्रियेश भाई बिग फैन। प्रियेश भाई अभी नहीं है स्ट्रीम पे, मेरा नाम सुमित है। वो आपको थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। वो अभी लंच पे गए हैं, वो उनके जगह पे अभी मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। मेरा नाम सुमित है, ठीक है। अगर आपको भी सेल में पोजीशन ऐड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो ये मेरा सेल पोजीशन इसमें ऑलरेडी एडेड है। मैं अपना एसएल रख लेता हूँ 4160 पे। वेट अ सेकेंड गाइस, ये ट्रेड में अभी कुछ ब्रेक इवन के आसपास ही चल रहा है, तो वेट कर लेते हैं। हाँ, जिनका फंड छोटा है वो अपना 4158 पे एसएल रखो, और जो थोड़ा होल्ड करना चाहते हो वो 4161 या 4160 के आसपास अपना एसएल रखना, ठीक है। तो मैं अपना एसएल रख रहा हूँ 4161 पे, ठीक है। 4161 इज द स्टॉप लॉस। ये रहा 4161 पे मैं अपना एसएल रख रहा हूँ। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर रिवर्स हो जाएगा मार्केट। देखते हैं, अगर कुछ यहाँ पे और हमारे लेवल तक आता है तो इसमें और क्वांटिटी ऐड करेंगे, नो इशू। इस जगह पे अपना और क्वांटिटी ऐड करेंगे 4158 पे। अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो फिर एग्जिट हो जाएंगे मार्केट से छोटे से एसएल में, और नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे उसके बाद, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं अभी के लिए। और टीपी तो अराउंड 1:2 तो लेंगे ही, ठीक है। टीपी 1 अराउंड इस लेवल के आसपास रहेगा हमारा, लेकिन मार्केट और भी गिर सकता है नीचे। इसका टाइम फ्रेम अगर देखेंगे, देखते हैं, वेट कर लेते हैं थोड़ा। जो भी लोग ईएमए का यूज जानते हो तो देख सकते हो, ईएमए भी हमें अभी ट्रेड का कंफर्मेशन दे रहा है, तो बेटर रहेगा कि होल्ड करें। और एसएल भी देख सकते हो, बेटर जगह पे अभी हमारा एसएल है, तो होल्ड करेंगे ट्रेड को। अगर इसमें प्रॉफिट आता है हमारा तो फिर बुक करेंगे इसको, ठीक है। 1:2 तो एटलीस्ट लेना है। और अगर आप हमारा मेरा प्रॉफिट का बात करोगे तो अभी ब्रेक इवन के आसपास है, तो $8-9 के आसपास का मेरा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और देखते हैं, होल्ड करेंगे इस ट्रेड को। ये MT5 का टर्मिनल है, जिसको भी कुछ कंफ्यूजन है, ये MT5 का टर्मिनल है, मेटा ट्रेडर 5, ओके। और ये जो ब्रोकर मैं ये यूज कर रहा हूँ, फ्लेक्सी मार्केट का ब्रोकर यूज कर रहा हूँ। और आप जो इतना ये देख रहे हैं, तो ये जो भी आपको दिख रहा है, मैंने बस इसमें एंट्री लिया है और बाकी का काम मेरा बॉट ने किया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो बाय स्टॉप लगाया है, ये मेरे बॉट ने लगाया है। ये इसलिए लगाया है ताकि मेरा अगर एसएल हिट भी हो तो ये अपना कैलकुलेशन सेट कर दिया है पहले से, ताकि अगर मेरा लॉस भी होगा तो ये ऑटोमेटिक अपना कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये खुद ब खुद एक ट्रेड इनिशिएट कर देगा, ठीक है। और वैसे भी हमारा एसएल बहुत छोटा है, लेकिन अगर हमारा एसएल जाएगा भी तो हमारा बॉट रिकवरी में लग जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपका भी ज्यादा एसएल जाता है तो आप लोग इस बॉट को यूज कर सकते हो। 1 डे के फ्री ट्रायल में है अभी, एक दिन का फ्री ट्रायल है रखा है हमने, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। आफ्टर दैट अगर आपको ये पसंद आता है परचेज कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो हमने इस बॉट के रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, आप वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो कैसे इस बॉट को कनेक्ट करना है, यूज करना है। और फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन बच जाता है तो हमने अपने लाइव चैट में एक टेलीग्राम का लिंक पिन किया है, वो हमारे चैट सपोर्ट टीम का लिंक है, आप उस पर क्लिक करो।
आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाओगे, और कोई जो भी आपका कंफ्यूजन है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आप बता सकते हो। ठीक है, तो आपको 100% सॉल्व करके दिया जाएगा। एक मिनट वेट करो गाइज। आज कैसा लग रहा है मार्केट आपको? देखो, मार्केट बहुत देर से वीक बाइंग जहां तक हमको देखने को मिला, मार्केट में बहुत देर से कंसोलिडेटिंग है, वीक बाइंग है। लेकिन जब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, यहाँ पे एक बाइंग मूवमेंट शो कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जब पूरा बायर लोगों का एसएल लिया है मार्केट ने, उसके बाद थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिला है हमें। ठीक है, तो इसीलिए हमारा सेलिंग ऐड है, अभी सेल के तरफ क्वांटिटी ऐड है। अगर आप देखोगे तो हमारा प्रॉफिट अराउंड ब्रेक इवन के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो कुछ खास नहीं बोल सकते हैं मार्केट को, मतलब ठीक ठाक है। कुछ ज्यादा मोमेंटम भी नहीं है और कुछ ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं है, और ज्यादा कुछ चौपी भी नहीं है, इस टाइप का बोल सकते हो। सुबह से तो चौपी ही था। ठीक है, अभी थोड़ा कुछ मोमेंटम आया है, तो देखते हैं अगर मार्केट कुछ ट्रेंडिंग होता है तो फिर इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट लेने का ट्राई करेंगे। ये अभी हमारा गोल्ड का ट्रेड है, ये मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको भी कुछ कंफ्यूजन है मैं आपको बता दूं, ये गोल्ड का चार्ट है, ये मत आप बीटीसी में जाके सेल का क्वांटिटी ऐड कर देना, नहीं तो लॉस आपका ही होगा। मैं बता दे रहा हूं इसीलिए बार बार, ये गोल्ड का है चार्ट, और मैं ऑटोमेटिक इसमें एक ट्रेड लिया था जिसको ऑटोमेटिक बॉट ने अपना टीपीएसएल सेट कर रखा है, तो मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला। देख सकते हो अराउंड ब्रेक इवन के आसपास ही चल रहा है। मैं अराउंड 15 मिनट से इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। एक ही जगह पे मार्केट है, वेट करते हैं, अगर कुछ प्रॉफिट अगर देखने को मिलता है तो कुछ पार्शियल करके बुक करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं भी करता है तो छोटा सा एसएल जाएगा, और उस एसएल को हमारा बॉट रिकवर करेगा। जो देख सकते हो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके इसने अपना एक पोजीशन ऐड कर रखा है पहले से ही। ठीक है, और ये बाद में पोजीशन जब ये लेगा, क्वांटिटी जब ऐड करेगा ये बॉट ऑटोमेटिक, तो ये फिर बाद में उस टाइम भी ये कुछ अपना कैलकुलेशन करके फिर करता है, क्वांटिटी ऐड करता है। ठीक है, अगर आपको भी ये बॉट यूज करना है तो आप हमारे yoforexai.com पे जाके विजिट कर सकते हो। आपको टॉप पे दिखेगा डायनेमिक हेजर, ये ठीक है, आप उस पर क्लिक करोगे, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैट सपोर्ट टीम से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, एसेंचर ब्लेज, एसवेंचुरा ब्लेज। ठीक है, और एक सेकेंड गाइस, एक मिनट वेट करो गाइस, थोड़ा आ रहा हूँ मैं, एक मिनट वेट करो। जिन जिन लोगों को ये स्ट्रीम पसंद आ रहा है, मेक श्योर आप इस स्ट्रीम को लाइक करो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये स्ट्रीम पसंद आ रहा होगा तभी आप इस स्ट्रीम को लाइक करना है। क्योंकि मैं आपको अगर आपको ये पसंद नहीं आएगा तो आप क्यों ही इस स्ट्रीम को लाइक करोगे। ठीक है, तो अगर आपको ये स्ट्रीम पसंद आ रहा है तो आप मेक श्योर इस स्ट्रीम को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप यहाँ से कुछ आपको सीखने के लिए मिल रहा है, अगर आपको 1% भी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप इस स्ट्रीम को लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और मेक श्योर आप डेली ज्वाइन हो। आप डेली ज्वाइन होंगे तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारे एंट्री लेवल के आसपास ही मार्केट ड्राइव कर रहा है। पीपी फॉरेक्स, हेलो, वेलकम टू आवर स्ट्रीम। कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग? एक काम करते हैं, अगर मार्केट और थोड़ी देर हमें अगर फंसाएगा तो फिर मैं और छोटा कर लूंगा अपना एसएल। ठीक है, मैं और छोटा कर रहा हूं अपना एसएल, थोड़ा वेट कर लेता हूं। इस कैंडल
तक का मैं वेट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट अगर ऐसे ही कंसोलिडेशन जोन में रहेगा तो मैं एग्जिट भी कर दूंगा, ठीक है। मैं या तो एसएल छोटा कर दूंगा या फिर मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए मार्केट को ड्राइव होने देते हैं, देखते हैं मार्केट क्या डिसाइड कर रहा है। मार्केट अगर इस लेवल से ऊपर अगर अभी निकलता है तो निकल जाएंगे, ठीक है। ज्यादा लॉस नहीं लेंगे इस ट्रेड में। अराउंड 4158 के आसपास अपना एसएल को रख लो, ठीक है। मेरा एसएल इसमें है 4161 के आसपास, ठीक है। देख लेते हैं क्या करता है मार्केट। देखो, जो भी छोटे फंड से ट्रेड कर रहे हो वो निकल सकते हो अभी, क्योंकि अभी अराउंड 1 टिप का 10 टिप का एसएल गया है, तो आप लोग एग्जिट कर सकते हो, छोटे से एसएल में निकल जाओ, ठीक है। और जो 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 अभी थोड़ा हेवी क्वांटिटी ले रखे हो वो 4161 तक का वेट करो, 4161 तक का वेट करो। देखते हैं मार्केट क्या डिसाइड करता है, उसके बाद एग्जिट करना होगा तो एग्जिट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। छोटा सा एसएल जाएगा, अगर हमारा टीपी देता है मार्केट तो सही रहेगा। देखते हैं, वेट करते हैं। अभी के लिए तो ट्रैप कर रहा है कहीं ना कहीं ये मार्केट, अभी कहीं ना कहीं सभी को ट्रैप कर रहा है, एसएल हंटिंग कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे बायर अपना बाइंग पोजीशन ऐड करके रखे थे इस लेवल पे, तो यहाँ पे भी देख सकते हो किस लेवल का एसएल हंटिंग हुआ है, मतलब बायर्स को निकलने का मौका भी नहीं दिया, ठीक है। जो लोग सिस्टम पे एसएल नहीं लगा के रखे होंगे उन लोगों को तो बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिला होगा यहाँ पे। और जो लोग सिस्टम पे, इसीलिए मैं बोलता हूँ सिस्टम पे हमेशा एसएल लगा के रखो, ठीक है। और आप देखोगे तो मैंने भी अपना सिस्टम पे एसएल वगैरह, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, बस मैं अपना मैनुअल एक ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, बाद बाकी काम तो मेरा अपना बॉट कर देता है, ठीक है। तो मुझे तो उतना कुछ करना है नहीं, लेकिन आप लोग मेक श्योर आप अगर बॉट यूज नहीं करते हो तो आप अपना सिस्टम पे एसएल हमेशा सेट करके रखो, ताकि अगर मार्केट में सडन एक मूवमेंट आता भी है अगर बड़ा सा, तो वो आपको ज्यादा लॉस देके ना जाए। और हमेशा छोटे से लॉस में निकलने का कोशिश करो, अगर लॉस बड़ा होगा तो फिर रिकवरी में बहुत प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। छोटे छोटे लॉस पे काम करो, अगर आप अपना लॉस छोटा करोगे तो फिर प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक बड़ा हो ही जाएगा। अगर आप अपना रिस्क रिवार्ड 1:2 1:3 का रखते हो तो ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका लॉस कब रिकवर हो गया, ठीक है। तो जो प्रोसेस है प्रोसेस को फॉलो करो हमेशा, अपने सेटअप पे बिलीव रखो। देखो, जो जो लोग मैंने जो भी लोग ये इस वाले जगह पे जो भी लोग एंट्री किए थे, ठीक है, वो लोग निकल सकते हो जिनके पास छोटा क्वांटिटी है। जो लोग छोटे फंड से ट्रेड कर रहे हो लाइक $50 $40, तो वो लोग निकल सकते हो, क्योंकि अभी आपका अकाउंट में अराउंड 0.50 या फिर $1 के आसपास का लॉस चल रहा होगा, $1 का लॉस चल रहा होगा आपके अकाउंट। आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि अभी मार्केट इसका मतलब चौपी है, टैप कर रहा है कहीं ना कहीं, तो आप लोग छोटा लॉस में निकल जाओ, कि अगर आप बड़ा लॉस लोगे तो फिर रिकवर नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी लोग छोटे फंड से ट्रेड कर रहे हो आप लोग निकल सकते हो। मेरा अगर आप देखोगे तो अराउंड $25 के आसपास का लॉस चल रहा है, ठीक है। तो मैं अभी इस ट्रेड को होल्ड करूंगा, देखते हैं मार्केट कहाँ तक ड्राइव होता है। आज कैसे लग रहा है मार्केट आपको, अगर आप देखोगे इस मार्केट को ध्यान से, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट जोन से वीक बाइंग आया था यहाँ पे, ठीक है, वीक बाइंग ही बोलेंगे इसको। और इस लेवल पे इसने लिक्विडिटी लिया है मार्केट ने, और यहाँ से बहुत ज्यादा फॉल किया था मार्केट ने, और ये अपने एक रिटेस्ट जोन पे है, तो हमने यहाँ पे एक री एंट्री लिया था, ठीक है, री एंट्री लिया था। ये जो मोमेंट आया ये तो हमने ऑलरेडी कैप्चर कर ही लिया है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है।
अगर मार्केट फिर से अगर यहाँ से फॉल करना चाहता है तो फिर हम अगेन इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो जो भी लोग ये ट्रेड लिए हुए हो वो होल्ड कर सकते हो, अपना एसएल को 4161 तक रख सकते हो, ठीक है। बहुत छोटा सा एसएल है, बहुत छोटा सा एसएल है। अगर आप प्रॉफिट को देखोगे उसके सामने तो बहुत छोटा सा एसएल है, ठीक है। अराउंड $5 के आसपास का एसएल है। मैं एक काम करता हूं, मुझे यहाँ पे अगर कुछ और कंफर्मेशन आता है तो इसमें मैं एक क्वांटिटी और ऐड करूंगा। तो वेट कर लेते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे कुछ अपना एक सेटअप क्रिएट करता है तो हम यहाँ पे और एक क्वांटिटी ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी ऐड किया था, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये TPSL बाय स्टॉप ये सब बॉट ने ऑटोमेटिक सेट किया है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक ट्रेड इनिशिएट किया अपने सेटअप को देख के। तो मुझे यहाँ पे सेटअप दिखा, मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट किया, बाकी काम अपना बॉट ने कर रखा है पहले से। अगर मेरा इसमें एसएल जाता भी है तो ये बॉट अपना रिकवरी में लग जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा टीपी हिट हो जाता है तब तो प्रॉफिटेबल हो ही चुके हैं हम। तो मेन इंटेंशन हमारा मार्केट में प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, साइडवेज हो, कहीं भी जाए, हमारा मेन इंटेंशन है इस मार्केट से प्रॉफिट लेके जाना, ठीक है। अभी देख सकते हो मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी और यहाँ पे ऐड करूंगा। यहाँ पे अगर थोड़ा सा कंफर्मेशन अगर मुझे और मिल जाता है तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा क्वांटिटी। चलो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ अपना क्वांटिटी। मैंने यहाँ पे 0.10 लॉट और सेल किया है, ठीक है। और मेरा एसएल ये है, मेरा एसएल ये है, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, या तो अब ये मार्केट एसएल लेगा या फिर टीपी देगा, ठीक है। मार्केट को ड्राइव होने देंगे, देखते हैं। बीच में नहीं निकलना है, ठीक है। अगर लेगा मार्केट तो एसएल लेने देंगे या फिर प्रॉफिट आएगा, ठीक है। या तो जो जहां तक हम एसएल रखे हैं अपना पूरा एसएल तक होल्ड करेंगे, या फिर जहां तक हमारा टारगेट है वहां तक होल्ड करेंगे। बीच में नहीं निकलना है, कहीं भी बीच में नहीं निकलना है। बीच में अगर निकलोगे तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। आगे से अगर कोई भी ट्रेड लोगे तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आगे अगर ट्रेड करोगे तो। इसलिए अपने सेटअप पे भरोसा रखो और होल्ड करो। और जो भी लोग इस ट्रेड में एंट्री किए हो, ठीक है, वो लोग एटलीस्ट यहाँ तक अपना एसएल रखना। और देख सकते हो मार्केट अब थोड़ा बहुत गिरने का कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत लो वॉल्यूम है अभी। मार्केट में ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। हमें चाहिए इस टाइप का वॉल्यूम, इस टाइप का मोमेंटम। तीन मोर देन 2 से 3 कैंडल में हमारा प्रॉफिट बुक, ठीक है। तो अभी मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नहीं है, फिर भी हम एक ट्रेड लेके बैठे हैं। अगर देखते हैं मार्केट टीपी देता है कि एसएल देता है। और जिन लोगों को ये बॉट का नाम नहीं पता है उनको बता दूं, इस बॉट का नाम है डायनेमिक हेजर, ठीक है। अगर आपको ये बॉट यूज करना है तो आप हमारे yoforexai.com पे जाके आप क्रोम पे जाके लिखोगे yoforexai.com, ठीक है। आपको टॉप पे दिखेगा डायनेमिक हेजर ईए, आप वहां पे क्लिक करोगे तो आपको इस बॉट का पूरा गाइड मिल जाएगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या इसका प्राइसिंग है। एक दिन का फ्री ट्रायल भी रखा है हम लोगों ने, तो आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। इसको पसंद आता है परचेज कर सकते हो। अगर कोई भी तरह का इशू आता है तो हम लोगों ने इसके रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया है योफोरेक्स यूट्यूब चैनल पे, आप लोग नेक्स्ट उस वीडियो को चेक करो। और फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो हम लोगों ने लाइव चैट में हमने एक टेलीग्राम चैनल का पिन कर रखा है लिंक, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम लोगों ने पिन कर रखा है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली हमारे चैट सपोर्ट टीम से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। ओके, तो ब्रेक इवन के आसपास है कहीं ना कहीं ये ट्रेड, होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है अराउंड 6.70 के आसपास का। जो ट्रेड हम लोगों ने री एंटर किया था, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया था, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट चल रहा है। ब्रेक इवन ही है अभी, ठीक है। जो भी लोग ये ट्रेड में एंटर हो वो लोग होल्ड करो, और जो भी छोटे क्वांटिटी वाले हो वो लोग एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि आपका छोटा अकाउंट है तो आप लोग एग्जिट कर दो, क्योंकि $1 के लॉस पे आप लोग एग्जिट हो सकते हो। यहाँ पे देखो, $1-2 का लॉस अगर आप लेते हो तो प्रॉफिट एटलीस्ट एक्सपेक्ट करना $5, $10, $6 इस टाइप का, ठीक है। अगर आप छोटे अकाउंट से ग्रो कर रहे हो तो
और अगर आपका छोटा अकाउंट है और अगर आप होप रखते हो मार्केट से, नहीं है मैंने यहाँ पे टीपी रखा है, तो एसएल को आप भूल जाओगे, तो फिर आपका अकाउंट बहुत जल्दी ब्लो हो जाएगा। मार्केट में कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे अब मोमेंटम देखने को मिल रहा है, देखते हैं क्या होता है। एसएल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा एसएल है हमारा, अराउंड 20 पिप्स के आसपास का है। और अगर हमारा एसएल जाता भी है तो हमारा बॉट है यहाँ पे, बॉट हम लोगों ने कनेक्ट करके रखा है, ऑटोमेटिक ये रिकवरी में लग जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर हमारा एसएल भी जाता है तो बॉट है हमारा, ठीक है। अगर आप लोग भी ये बॉट यूज करोगे तो आप अपना लॉस को रिकवर कर पाओगे बहुत जल्दी, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हो पूरा एसएल हंटिंग चल रहा है अभी, ठीक है। एकदम से सडन वी टाइप रिकवरी है, देखो यहाँ पे पूरा एकदम से सेलिंग आया और पूरा एकदम से बाइंग जा रहा है, तो ये एक टाइप से वी टाइप रिकवरी है। ये टोटली एसएल हंटिंग चल रहा है मार्केट में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पहले एक बाइंग आया था, इस लेवल पे बाइंग आया और फिर इस लेवल से बाइंग आना चाहिए, तो लोग यहाँ पे बाइंग क्वांटिटी अपना ऐड करके रख रखे थे। उन लोगों का एक कैंडल में पूरा एसएल ले लिया मार्केट ने, देख सकते हो, जो यहाँ पे ऐड हुए उनका भी एसएल गया, जो यहाँ पे ऐड हुए उनका भी एसएल गया। ये जो कैंडल है, इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल एक लिक्विडेशन कैंडल है, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या किया कि अपना एंट्री का वेट किया कि हम भी एक सेलिंग क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो कभी भी ऐसे चलते ट्रेन में नहीं बैठना है, ठीक है। मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दिया, हमारा सेटअप आया, ये एक बार रिटेस्ट करके कुछ इस टाइप से बनना चाहिए था अभी, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोगों ने कुछ कुछ ऐसा मोमेंटम एक्सपेक्ट किया था मार्केट से, ठीक है। अगर मार्केट ऐसा मोमेंटम नहीं देगा तो कोई नहीं, हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, हम लोग फिर से री एंट्री कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम लोग स्टॉप लॉस तक का वेट करेंगे, ठीक है। और जो भी लोग इस ट्रेड में एंटर हो, होल्ड करो, अभी एसएल तक तो एटलीस्ट होल्ड करो, क्योंकि ये जो मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि वीक हैंड्स को निकालने के लिए भी हो सकता है ये। तो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं बनना है कभी भी, ठीक है। छोटे से एसएल में निकलो, लॉस को ज्यादा होल्ड मत करो, प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हो, ठीक है, प्रॉफिट को होल्ड करो, लेकिन लॉस को होल्ड मत करो। लॉस जितना छोटा लेके निकलोगे उतना फायदे में रहोगे, उतना प्रॉफिटेबल रह पाओगे, ठीक है। 2 मिनट गाइस वेट करो एक सेकंड। देख रहे हो मार्केट अभी बहुत कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। जब से एंट्री लिए हैं पूरा मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है। वेट करते हैं, अगर एसएल जाएगा तो कोई इशू नहीं है, हमारा बॉट वर्किंग है, बॉट अपने काम पे लग जाएगा, ठीक है। देखो अगर आप बॉट कनेक्ट करके अगर आप ट्रेड लेते हो ना, तो आप थोड़ा माइंड फ्री होके ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि आपका अगर एसएल भी जाता है तो आपको ये कहीं ना कहीं बैकअप में रहेगा माइंड में कि बॉट तो है ही, उस टाइप से आप थोड़ा और कॉन्फिडेंट होके ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। और कौन कौन इस ट्रेड में एंटर हो, बाइंग या सेलिंग, बता सकते हो चैट में। अगर किसी ने और कोई ट्रेड भी इनिशिएट किया है तो चैट में बता सकते हो, आपने बाइंग किया है या फिर सेलिंग किया है, कितने पे बाइंग है आपका। इनफैक्ट बीटीसी को एक बार देखते हैं, बीटीसी कहाँ पे है। बीटीसी तो
बीटीसी भी आज कहीं ज्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा है आज, ठीक है, ये अपने सप्लाई जोन को ब्रेक किया, फिर इधर पूरा साइडवेज हो गया है। ओके, तो गोल्ड को देखते हैं, इसमें अभी हमारा ट्रेड रनिंग है, ठीक है। ये जो देख रहे हो ये बॉट ने ऑटोमेटिक लिया है, ठीक है। ये जो बॉट ने ऑटोमेटिक ट्रेड लिया है उसमें देख सकते हो, हमने जो मैनुअली ट्रेड इनिशिएट किया है उसका एसएल इस लेवल पे है। अगर एसएल जाता है तो फिर बॉट ने ऑटोमेटिक हमारा एक बाय पोजीशन ऐड करके रखा है, तो ये पोजीशन ऑटोमेटिक कट हो जाएगा और उसके बाद बाइंग मोमेंटम हो सकता है हमें देखने को मिले, ठीक है। निश्चल कुमार, अगर आपने सेल किया है मार्केट को 4156 पे, ठीक है, तो आप अभी निकल सकते हो, क्योंकि आप इससे ज्यादा अगर एसएल लोगे तो फिर आपके लिए ये डेंजर हो सकता है, आपके अकाउंट के लिए डेंजर हो सकता है। तो आप यहाँ पे एग्जिट कर दो, क्योंकि ये एसएल है। मैंने भी ये 4158 पे एंट्री किया था, मैं 61 पे निकल चुका हूँ, ठीक है। 4158 पे एंट्री किया और 4161 पे मैं निकल चुका हूँ, तो छोटे से एसएल में निकल जाओ आप, ठीक है, बेटर रहेगा आपके लिए। तो चलो देखते हैं और कुछ सेटअप फाइंड करते हैं, अगर कुछ नया सेटअप देखने को मिलता है तो आफ्टर दैट हम एक और ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आप ये स्ट्रीम पे जुड़े हुए हो तो मेक श्योर आप इस स्ट्रीम को लाइक करो। देख सकते हो किस लेवल का यहाँ पे एसएल हंटिंग हुआ है। अगर अब ये मार्केट यहाँ से गिरता है तब तो समझ जाओ कि पूरा ही ट्रैप चल रहा है अभी। अगर मार्केट अब यहाँ से अगर गिरता है तो फिर समझ जाओ कि एसएल हंटिंग, फुल एसएल हंटिंग हो रहा है, ठीक है। अभी हमारा ट्रेड रनिंग ही है, देख सकते हो एसएल अराउंड इस लेवल के आसपास है, लेकिन मैं अब आप लोगों को बोलूंगा कि निकल जाओ अभी इस ट्रेड से, क्योंकि एसएल जा चुका है कहीं ना कहीं। छोटे से एसएल में निकल जाओ, ठीक है। इससे पहले जो हमने ट्रेड लिया था ये वाला, जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लोगों ने कैप्चर किया, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हमको देखने को मिला था, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट इस लॉस के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो लॉस अभी, जो एक ये छोटा सा एसएल गया, वो इस प्रॉफिट के सामने कुछ भी नहीं है, लाइक 20% भी नहीं है उसका, ठीक है। तो प्रॉफिट बड़ा करो, लॉस छोटा करो, ठीक है। और कोई इस मार्केट में और कोई रूल फॉलो नहीं करेगा। अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेते हो तो प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे एक और बियरिश कैंडल अगर यहाँ पे शो करता है तो मैं सेलिंग के तरफ और क्वांटिटी ऐड करूंगा। अभी मेरा सेलिंग का ट्रेड रनिंग है, अभी तक मेरा एसएल नहीं गया है, एसएल इस लेवल पे है और मार्केट इस लेवल से रिटर्न पुल बैक ले लिया, तो मैं वेट करूंगा। अगर मेरा एसएल हिट होता है तो फिर एग्जिट हो जाऊंगा। 1 मिनट पे अगर देखोगे तो देख सकते हो किस लेवल का वीक बाइंग है कहीं ना कहीं, ठीक है। पूरा कंफ्यूजिंग है, एसएल हंटिंग चल रहा है मार्केट में, कुछ खास मोमेंटम नहीं है।
ये जो कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, इस कैंडल में कहीं ना कहीं जितने भी सेलर लोग थे वो बाहर हो चुके हैं मार्केट से, ठीक है। मार्केट तो टोटली एसएल पे काम होता है यहाँ पे, ठीक है। जहां पे मार्केट को एसएल दिखेगा, जहां पे लिक्विडिटी दिखेगा, मार्केट उसी ओर जाएगा। तो मार्केट अगर अब यहाँ से गिरता है तो समझ लेना कि सेलर लोगों को निकालने वाला ये मूव था, ठीक है। अभी के लिए होल्ड कर रहा हूं मैं इस ट्रेड को, क्योंकि मेरा एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ है, 4161 पे है। अब देख सकते हो मार्केट एग्जैक्ट लेवल से गिरना स्टार्ट हो चुका है। जिन जिन लोगों का ये ट्रेड रनिंग है, ठीक है, वो लोग अभी होल्ड करना। ये वाला ट्रेड मेरा प्रॉफिट में आ चुका है। ये वाला जो ट्रेड है ये बॉट ने ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। तो ये बॉट ऑटोमेटिक ये अपना कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग करेगा जो होगा उसको। लेकिन स्टिल मेरा ट्रेड जो है अभी प्रॉफिट में चलना स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको बोला था यहाँ पे ये एसएल लेने आएगा, एसएल लिया। जितने भी रिटेल लोग थे उन लोगों का एसएल लिया और मार्केट अब यहाँ से फॉल करना स्टार्ट कर दिया। अभी हम जहाँ पे एंट्री लिए थे वहां पे मार्केट आ चुका है। एसएल हमारा 4163 के आसपास था, मार्केट ने 4161 से रिटर्न पुल बैक ले चुका है। देखते हैं, होल्ड करते हैं इस ट्रेड को, अगर प्रॉफिट आता है तो बुक करेंगे, ठीक है। देख सकते हो जिस लेवल पे मैंने बोला था, मार्केट यहाँ से एसएल लिया है, सेम जगह से एसएल लिया है और मार्केट अभी ब्रेक इवन के आसपास चल रहा है। मार्केट अगर ये जोन को ब्रेक करता है तो इसमें और मैं क्वांटिटी ऐड करने वाला हूँ सेलिंग के तरफ, ठीक है। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर इसमें मैं अपना सेलिंग का क्वांटिटी अगेन ऐड करूंगा, ठीक है। क्योंकि अब क्या हुआ है मार्केट में, ये सेलर लोगों का एसएल ले चुका है, लेकिन स्टिल हमारा जो एसएल है वो अभी तक मार्केट ने नहीं लिया है, ठीक है। वेट करते हैं, अगर एसएल भी जाएगा तो छोटा सा भी एसएल है, कोई इशू नहीं है। अगर एसएल लेगा तो छोटा सा एसएल है। अगर आप लोग भी इस ट्रेड को होल्ड कर रहे हो तो छोटा सा एसएल सेट कर दो सिस्टम पे और छोड़ दो अभी के लिए, क्योंकि मार्केट टोटली एसएल हंटिंग के मूड में है। ड्राइव होने देते हैं इस ट्रेड को। शायद से यहाँ पे मार्केट को लिक्विडिटी मिल सकता है, जिस वजह से यहाँ पे मार्केट ड्राइव कर रहा है, ठीक है। बेटर रहेगा वेट करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये बॉट जो आप देख रहे हो, ये जो पोजीशन ऑलरेडी एडेड है इसमें, ये मैंने नहीं किया है, मैं आप लोगों के सामने लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ये सब पोजीशन ऐड नहीं किया है। ये ऑटोमेटिक जो हमारा डायनेमिक हेजर जिसका नाम है बॉट का, उसने ऑटोमेटिक इस पोजीशन को ऐड कर रखा है ताकि हमारा लॉस कम हो सके, ठीक है। मार्केट अगर अब इस जोन को अगर ब्रेक करेगा तो फिर एग्जिट हो जाएंगे इस ट्रेड से, ठीक है। इस जोन को अगर अभी मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो फिर एग्जिट हो जाएंगे इस ट्रेड से, ठीक है।
अभी मार्केट को अगर देखोगे तो कुछ भी अभी खास मूवमेंट नहीं आ रहा है, कुछ भी रैंडम सा मूव आ रहा है मार्केट में अभी, ठीक है। और इसीलिए हमने अपना एसएल छोटा करके रखा है, ठीक है। अगर एसएल भी जाता है तो छोटे से एसएल में निकल जाएंगे, और अगर प्रॉफिट आना होगा तो प्रॉफिट हमारा वेट कर रहा है अराउंड 1:3 का, ठीक है। अगर हमारा 2% का लॉस होगा तो अराउंड 6% का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह का रिस्क रिवॉर्ड रखे हैं हम अभी। अभी तक हमारा एसएल स्टिल नहीं गया है, ठीक है, तो अपने एसएल तक होल्ड करेंगे। देखो अगर 1 मिनट पे देखेंगे चार्ट को, तो देखो कितना गंदा मार्केट अभी यहाँ पे देखने को मिला है। जहां से एंट्री लिए हैं मार्केट देखो कितना कंसोलिडेट किया है यहाँ से, टोटली साइडवेज। इस तरह के मार्केट को ट्रेड कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर प्रोफेशनल्स भी अगर इस मार्केट को देखने आए तो शायद वो भी लॉस कर बैठे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नेदा अब्दुल खनी, हाय, वेलकम टू आवर स्ट्रीम। कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग, कैसे आप अर्निंग कर रहे हैं, बता सकते हो चैट में। कैसी चल रही है आपकी लर्निंग अर्निंग। ओके, तो देख सकते हो फिर से वही मार्केट कर रहा है। अगर मैं इस चीज को अगर हाइड करता हूं, देखो ये जो एक जोन है, ये मार्केट इस जोन में तब से साइडवेज है मार्केट। ये जो जोन देख रहे हो, इस जोन से अगर बाहर निकलता है मार्केट तब कुछ देखने को मिलेगा हमें। या तो अब तो एसएल भी चले जाए तो मतलब देखो यहां से बहुत साइडवेज है मार्केट तब से। फिर से गिरना स्टार्ट हो चुका है, मतलब कोई भी लॉजिकल मूव अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। कहीं भी रैंडमनेस है अभी मार्केट में, कहीं से कुछ भी बाइंग कुछ भी सेलिंग का आ रहा है मूव, ठीक है। तो इस मार्केट से बच के रहना चाहिए। मैं तो अभी एंट्री ले चुका हूँ इस ट्रेड में, तो मैंने अपना एसएल सेट कर रखा है, तो एसएल तक एटलीस्ट तो होल्ड करूंगा मैं, ठीक है। अगर जाएगा एसएल तो छोटे से लॉस में मैं निकल जाऊंगा। अगर अभी भी मार्केट अगर प्रॉफिट देना चाहता है तो यहाँ से मेरा 1:2 और 3 का ट्रेड अभी होल्ड है। अभी तक ये ट्रेड मैं होल्ड कर रहा हूँ। मेरा एसएल है 4161 और मार्केट चल रहा है 4157 पे, ठीक है। तो ट्रेड को रन होने देंगे, ड्राइव होने देंगे। और ये वाला जो ट्रेड देख रहे हो आप, ये मैंने नहीं लिया है, ये हमने जो बॉट को कनेक्ट किया है, तो ये लॉस रिकवरी बॉट है, ठीक है। तो ये बॉट का ट्रेड है, इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमने जो ट्रेड मैनुअली इनिशिएट किया है हम उसको देखेंगे, बाकी बॉट तो अपना काम कर ही देगा। अब यहाँ पे देख सकते हो मार्केट फिर से गिरना स्टार्ट हो चुका है हमारे तरफ। हमने जो ट्रेड लिया है सेलिंग का, तो हमारे फेवर में ही है अभी मार्केट। एसएल अभी तक बचा हुआ है, देख सकते हो कितना पास आके अभी भी एसएल हमारा बचा हुआ है। अगर यहाँ पे एक और बियरिश कैंडल अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे बनाता है, मैं इसमें और एक सेलिंग क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, ठीक है। जस्ट अभी एक कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूं मैं। एक कंफर्मेशन मिलेगा मैं इसमें क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, और एसएल सेम रहेगा 4161। आप लोग बता सकते हो अगर आपने और कोई ट्रेड इस गोल्ड में अगर आपने और कोई ट्रेड लिया है तो आप लोग चैट में बता सकते हो कि आपने कौन सा ट्रेड लिया है, बाइंग का लिया है या फिर सेलिंग का लिया है। अगर मैं उसमें कुछ हेल्प कर पाऊंगा तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है। ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर हम एग्जिट हो जाएंगे। मतलब ये इस लेवल को अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है, लाइक इस टाइप सा कैंडल अगर ऊपर बनाता है, तो फिर हम निकल जाएंगे मार्केट से। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऐसा कुछ बनाता है तो फिर हम इसमें क्वांटिटी और ऐड करेंगे। क्लोजिंग इसके नीचे आना चाहिए बस,
ठीक है, मैंने एग्जिट कर दिया। देखो मैं इसी चीज का बात कर रहा था आपसे अभी। आप जो ट्रेड लेते हो तो आपको बीच में नहीं निकलना है, कभी भी नहीं निकलना है। आपने जो एसएल डिसाइड किया है आपको एसएल तक होल्ड करना है, नहीं तो अगर आप नेक्स्ट ट्रेड जो कभी लोगे, नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ भी एनालिसिस करोगे, कुछ भी ट्रेड लोगे, तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे, आप प्रॉफिट भी नहीं होल्ड कर पाओगे। ठीक है, आप फियर और ग्रीड, ये दो चीज का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, आप इस दोनों चीजों में फंस के रह जाओगे, कॉन्फिडेंट नहीं रह पाओगे कभी ट्रेड लेने में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, देखो लॉस जाएगा तो ये आपका अभी शॉर्ट टर्म के लिए लॉस जाएगा आपका, लेकिन अगर ये लॉस जाएगा तो शॉर्ट टर्म के लिए जाएगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करके जाएगा ये। ठीक है, लेकिन अगर आप बीच में निकल रहे हो, अपना आपने टीपी रखा है इस लेवल पे, एसएल रखा है इस लेवल पे, मार्केट यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और आप बीच में निकल लिए, तो ये तो कहीं ना कहीं आप अपने सेटअप को फॉलो नहीं कर रहे हो। जो भी एक ट्रेडिंग का प्रोसेस है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, वॉल्यूम कम करो सर। ओके, वेट अ मिनट गाइज, मैं वॉल्यूम कम कर देता हूं। हेलो हेलो, हाँ अब सही है क्या? चैट में बताओ, मैंने वॉल्यूम कम कर दिया है, अगर सही है तो बता सकते हो। ठीक है, देख सकते हो मार्केट में अभी कोई भी मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिल रहा है, पूरा एक तरह से कंसोलिडेशन जोन में है मार्केट। मैंने जोन बना के रखा है, जिन लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ये मेरा MT5 का टर्मिनल है। ठीक है, ये ब्रेक इवन के आसपास चल रहा है, जो हमने सेलिंग का ट्रेड लिया था ये वाला, और ये ट्रेड तो बॉट ने ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट किया है, और ये हमारा सेलिंग का ट्रेड अराउंड इस लेवल के आसपास है। अगर हम देखते हैं, अगर ये लेवल को ब्रेक करेगा तो इसमें हम और क्वांटिटी ऐड करेंगे। ठीक है, सेलिंग के तरफ। ओके, इसमें थोड़ा हमारा एडवांस एंट्री हो चुका था। ठीक है, ये जो हमने इस जगह पे एंट्री किया, ये कहीं ना कहीं एक एडवांस एंट्री हम इसको मानेंगे। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, कुछ इस टाइप का कैंडल अगर क्लोजिंग देता है यहाँ पे, तो हम इसमें क्वांटिटी ऐड करने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हो बहुत स्लो मूवमेंट है। मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, अभी तक होल्ड कर रहा हूं मैं ट्रेड को। ऐसे मार्केट में मजा नहीं आता ट्रेड करने में। पर्सनली मैं बताऊं तो ऐसे मार्केट में लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, और ट्रेडिंग तो वैसे भी, अगर आप जब इस चीज को लेके सीरियस हो जाओगे तो आपको ये बोरिंग लगेगा, लेकिन बोरिंग चीज अगर आप इसमें अगर टिके रह जाते हो, हर उस चीज में आप प्रॉफिटेबल रहोगे जो चीज आपको बोरिंग लगता है। ठीक है, ये मैं बस ट्रेडिंग के लिए नहीं बोल रहा हूं। हर आप वो चीज, जो चीज आपको बोरिंग लग रहा है, आपको उसमें कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में फायदा ही होगा। देखते हैं मार्केट को ये लेवल ब्रेक करने देते हैं, उसके बाद इसमें एक और ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 1 आवर पे एक बार देखते हैं क्या मार्केट मूव देना चाह रहा है। ठीक है, 1 आवर पे अगर हम देखें तो ये एक सपोर्ट जोन है, अच्छा खासा है कि ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, जिसको मार्केट ब्रेक कर चुका है, बायर लोगों का लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट यहाँ पे। ठीक है, वेट करते हैं एक सेकेंड। अगर अब यहाँ पे मार्केट को देखोगे ध्यान से, तो हमने जिस लेवल पे एंट्री किया था, मार्केट उस लेवल पे फिर से आ चुका है।
ठीक है, हमारे लॉ हमने जहां पे अपना स्टॉप लॉस सेट किया था वहां के बहुत पास आके मार्केट फिर वहां से हमारे फेवर में आ चुका है मार्केट। तो मैं अभी स्टिल वेट कर रहा हूं, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है अगर ये कैंडल, तो इसमें मैं सेलिंग का क्वांटिटी और ऐड करूंगा। ठीक है, बस एक कंफर्मेशन का मैं वेट कर रहा हूं, उसके बाद मैं इसमें सेलिंग का क्वांटिटी अपना और ऐड करूंगा और एसएल को और छोटा करने का ट्राई करेंगे। स्टिल अभी तो मार्केट बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है, चॉपी बोल सकते हैं अभी, क्योंकि बहुत देर से साइडवेज की तरह मूव कर रहा है ये मार्केट। जब एंट्री लिए हैं हम तब से मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज हो चुका है। ठीक है, वेट करते हैं स्टिल। देखो यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया था, तो मार्केट अराउंड हमारे एसएल के पास गया, लेकिन मैंने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जो हमने ट्रेड लिया था इसका टीपी और एसएल हमारे बॉट ने ऑटोमेटिक सेट कर दिया था। इन केस अगर हमारा एसएल हिट भी होता, इसीलिए मैं अभी टेंशन फ्री होके ट्रेड कर रहा हूँ, कोई ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। आप अपना एक सेटअप फाइंड करो, अगर आप नहीं भी कर पाते हो सेटअप फाइंड, तो एक जस्ट नॉर्मल सा एक ट्रेड ऐड करो। ठीक है, ये बॉट ऑटोमेटिक टीपीएसएल सेट कर देगा। ठीक है, इनकेस अगर आपका टीपी हिट हो जाता है तब तो कोई इशू इशू है नहीं, आप प्रॉफिट हो, एंजॉय योर प्रॉफिट्स, ओके। बट अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, ये जो बॉट है, क्योंकि ये जो एसएल है ये तो बॉट ऑटोमेटिक खुद से सेट करेगा अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर आपका एसएल हिट होता है तो ये बॉट अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक और ट्रेड इनिशिएट करेगा। ठीक है, और उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसमें ज्यादा पैनिक नहीं हूं इस ट्रेड में। मैंने बस जस्ट एक यहाँ पे एंट्री ले लिया, बॉट ने ऑटोमेटिक टीपीएसएल सेट कर दिया है, बस आराम से अब इस ट्रेड को मैं होल्ड कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे टीपीएसएल सेट करने का झंझट रहता तो फिर शायद मैं इस ट्रेड को इतनी देर तक होल्ड नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। देख सकते हो फिर से वही एंट्री लेवल तक आ चुका है। तो स्लो है, जहां तक अभी सुबह से देख रहे हैं चॉपीनेस था मार्केट में, थोड़ा सा मूवमेंट आया, उसके बाद फिर से मार्केट साइडवेज हो चुका है। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं। एक यहाँ पे अगर क्लोजिंग आएगा तो मैं फिर से एक सेलिंग का क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। जो भी लोग री एंट्री करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी जब ऐड करूंगा तो री एंट्री कर सकते हो। जो लोग इस लेवल पे छोटा सा लॉस पे एग्जिट हुए थे, $1 के लॉस पे जो लोग भी एग्जिट हुए थे, वो लोग यहाँ पे री एंट्री कर सकते हो। अभी रुक जाओ, जब मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा यहाँ पे कन्फर्मेशन का वेट करो, कंफर्मेशन मिल जाएगा, आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम कम करो सर, एक सेकेंड। हाँ, अभी देखो आवाज जा रहा है क्या प्रॉपर? चैट में बताओ।
जिस लेवल पे अभी मार्केट है ये बहुत एक डिसीजन मेकिंग लेवल है, क्योंकि अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर मार्केट फॉल कर सकता है अच्छा खासा। अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है मार्केट तो फिर से वो एक बोल सकते हैं कि साइडवेज हो जाएगा मार्केट। तो अच्छा रहेगा कि मार्केट यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ पे सेलिंग क्वांटिटी ऐड करके रखा है, तो मार्केट अगर यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू करता है, बियरिश मोमेंटम अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है, तो ये हमारे फेवर में ट्रेड आएगा और प्रॉफिट देके जाएगा हमें। ठीक है, तो जो लोग भी वेट कर रहे हो तो वेट कर लो अभी। जो लोग पहले से एंट्री कर चुके हो तो वो लोग अभी होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने इस ट्रेड को लॉस में होल्ड किया तो आपको प्रॉफिट में भी होल्ड करना चाहिए। ये नहीं कि आपने इस ट्रेड में अराउंड $20 के आसपास आपने लॉस देख लिया और आप $5 के प्रॉफिट में निकल गए, तो इस टाइप से नहीं हो पाएगा आपसे ट्रेडिंग। हाँ, देख सकते हो जिस लेवल का हम बात कर रहे थे उसको ब्रेक कर रहा है मार्केट। क्लोजिंग आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर देंगे सेलिंग के तरफ। ठीक है, ब्रेक इवन के आसपास अभी चल रहा है हमारा ट्रेड, यहाँ पे देख सकते हो आप हमारा क्वांटिटी। और इससे ऊपर जो मैंने इस लेवल के आसपास जो एंट्री किया था, ठीक है, उसमें अराउंड $18 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि अराउंड ब्रेक इवन के आसपास है। वेट करते हैं, अगर इस लेवल को अगर निकाल देता है मार्केट तो फिर इसमें और क्वांटिटी ऐड करेंगे। ठीक है, ट्रेड का लॉजिक अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लॉजिक बता देता हूँ इस ट्रेड का। देखो, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है गोल्ड का। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे तो बैक टू बैक यहाँ पे बाइंग मोमेंटम, हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिला था मार्केट में। ठीक है, और इस लेवल पे अगर देखोगे ये जो है, तो इस लेवल से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था नीचे से। और ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है मैं बताता हूँ, जहां पे बैक टू बैक सपोर्ट लेता है। लाइक देखो, यहां से बाइंग आया, फिर यहां से बाइंग आया, और फिर इस लेवल से भी बाइंग आया। ठीक है, तो मार्केट को यहां से फिर से एक बुलिश मोमेंटम शो करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने वो ना करके क्या किया, यहाँ पे बहुत बड़ा एक बियरिश कैंडल फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि जितने भी बायर लोग थे उन लोगों का एसएल कट चुका है। आफ्टर दैट क्या हुआ, मार्केट बहुत तेजी से फॉल कर गया यहाँ पे, यहाँ तक। उसके बाद देखो, यहाँ तक तो आया मार्केट, तो अब इस बीच में एंट्री करने का कुछ लॉजिक ही नहीं है। अगर हम इस बीच में कहीं पे भी अगर एंट्री कर लेते तो एसएल हम कहाँ पे रखते ये बताओ। तो हमेशा एसएल को पॉइंट आउट करके चलो। तो मार्केट यहां से नीचे आया, फिर ये रिटेस्ट दिया एक इस लेवल तक। ठीक है, तो इस लेवल पे एक एंट्री बनता है, क्योंकि हमेशा अगर मार्केट कभी भी नीचे आता है या फिर कभी भी ऊपर जाता है तो उसको रिटेस्ट करने तक का वेट करो, जिसको पुल बैक बोलते हैं। पुल बैक का हमने वेट किया, पुल बैक देखने को मिला, हमने अपना क्वांटिटी ऐड किया, अभी अराउंड हम लोग प्रॉफिट के आसपास चल रहे हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक था इस ट्रेड का। अगर किसी को भी कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो कुछ भी इसके रिलेटेड।
देखो अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये जोन किस चीज का है, तो मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ से सेलिंग आया, दोबारा यहाँ से आया, 3 बार आया, मतलब मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह इसको ट्रीट किया है, इस लेवल को। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया है, तो जिसको अभी हम इसको सपोर्ट कंसीडर करके चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, फिर इस जोन को रिटेस्ट किया इस लेवल पे, फिर ब्रेक किया। अभी ये कहीं ना कहीं उसी जोन के आसपास है। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे अगर थोड़ा सा भी अगर क्लोजिंग देता है, हम इसमें सेलिंग क्वांटिटी ऐड करेंगे। मेक श्योर आप भी आपका वीआईपी भी है क्या टेलीग्राम पे? हाँ, हमारा वीआईपी चैनल भी है टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत छोटे से प्राइसिंग पे आप ज्वाइन हो पाओगे। हमारा पेड टेलीग्राम चैनल भी है जिसपे हम लोग डेली ट्रेडिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो आप उस पे भी ज्वाइन होके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके आप उस पर भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और वैसे अगर आप लाइव स्ट्रीम डेली ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको विद लॉजिक ट्रेड बताया जाएगा, विद बॉट, कैसे बॉट को यूज किया जाता है एंड एवरीथिंग। ओके, तो जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर चुका है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 0.10 का क्वांटिटी और ऐड कर रहे हैं। जिन जिन लोगों को एंट्री करना है कर सकते हो, मैंने यहाँ पे एंट्री अपना कर दिया है। ठीक है, इस लेवल पे एंट्री कर लो अपना। और एसएल के लिए वेट करो एक सेकेंड, एसएल में बता देता हूँ। एसएल अराउंड इस लेवल के आसपास रखना, 4158 4158 पे अपना एसएल रखना। हमारा एंट्री हुआ है 4156 पे, तो अराउंड 20 पिप्स का एसएल है। अगर आप 0.01 क्वांटिटी अगर ऐड करते हो गोल्ड में, तो आपका $2 का एसएल है। ठीक है, और आप प्रॉफिट अराउंड 1:3 का रखो। मतलब अगर आपका $2 का एसएल जाएगा तो आपको एटलीस्ट प्रॉफिट $6 टारगेट करके चलना है इस ट्रेड में। और मिनिमम 1:2 रख के चलना है, क्योंकि अगर आप $2 का एसएल दे रहे हो तो $4 का प्रॉफिट बना के जाओ मार्केट से, नहीं तो कोई फिर मतलब नहीं बनता ट्रेडिंग का। ठीक है, सुरेंद्र कुमावत, हाय, वेलकम टू आवर स्ट्रीम। कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग? ओके, तो मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो भी लॉस था वो रिकवर होके अराउंड ब्रेक इवन के आसपास आ चुका है। ठीक है, तो वेट करते हैं। ओके, तो एसएल अपना 58 पे रखना। ठीक है, मैं इसमें भी दिखा देता हूँ। वन इज टू थ्री है अभी हमारा टारगेट। ठीक है सर, लॉस में हूं तो किस जगह पे आपने एंट्री किया आप बता सकते हो? व्हाट इज द टारगेट नंबर? 4144। या दिस इज द फाइनल टीपी। ओके, आपने जो यहाँ पे एंट्री लिया है तो इस ट्रेड का फाइनल टारगेट ये है 4144, या फिर 4155 रख लेना, क्योंकि मे बी यहाँ पे पुल बैक आ सकता है। 4145 रखना अपना टारगेट। ठीक है, और एसएल रखना है 4158 और एंट्री पॉइंट है हमारा 4156। सर लॉस में हूँ। आप शायद एडवांस एंट्री ले चुके हैं, जब मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुका है, शायद आप तब एंट्री लिए हैं, इसीलिए आपका लॉस चल रहा होगा। तो जो एक प्रॉपर एंट्री पॉइंट है वहां पे एंट्री लेना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है,
अगर आप मेरा ट्रेड देखोगे, जो मैंने आप सभी को साथ ट्रेड इनिशिएट किया था, तो मेरा अराउंड प्रॉफिट में ही चल रहा है। ठीक है, इस ट्रेड को अभी फोकस नहीं करना है। ये ट्रेड ऑटोमेटिक बॉट ने इनिशिएट किया था। तो ये जो हमने 3 सेलिंग का क्वांटिटी ऐड किया है, तो ये देख सकते हो, और ये जो बॉट ने क्वांटिटी ऐड किया है ये ऑटोमेटिक रिकवर करेगा। ठीक है, तो इस पे फोकस करके अभी नहीं चलना है हमें। ओके, सो ड्राइव होने देते हैं मार्केट को, देखते हैं क्या होता है। अब एसएल और छोटा करेंगे, 4158 हम पहले रखे थे 4161, अभी हम एसएल छोटा करके 4158 पे रख दिए हैं। ठीक है, ड्राइव होने देते हैं मार्केट को, देखते हैं अगर, क्योंकि अब यहां से अगर पूरा पुल बैक आता है तो फिर अभी के लिए छोड़ देना है मार्केट को, क्योंकि पूरा चौपीनेस है अभी मार्केट में। मार्केट के लिए अभी अगर आप नियरेस्ट सपोर्ट जोन देखोगे तो ये है एक सपोर्ट जोन। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो प्रॉफिट शायद हमें बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। ठीक है, जो लोग भी री एंट्री नहीं कर पाए थे, अभी भी मार्केट सही जगह पे है, आप री एंट्री कर सकते हो सेलिंग के लिए। और एसएल आप अपना रखोगे 4158। ओके, क्योंकि देखो अगर मार्केट अब यहां से अगर बुलिशनेस शो करता है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डबल बॉटम की तरह देखने को मिलेगा, जो ब्रेकआउट करके इस लेवल तक आ सकता है। तो हमें 4167 तक का वेट नहीं करना है, छोटे से स्टॉप लॉस में निकलने का हमेशा कोशिश करते हैं। तो हमने अभी भी छोटा सा एसएल रखा है अपना। जिन लोगों को पीएनएल मेरा शो नहीं, हाँ शो हो रहा है अभी, ठीक है, तो अभी भी एंट्री पॉइंट के आसपास है। अभी यहाँ से फॉल किया था, फिर से मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम शो किया है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो टीपी देखने के लिए मिल सकता है। मैं अगर स्टॉप लॉस भी लेगा तो 4158 पे है। हम लोग यहाँ से ट्रेड होल्ड कर रहे हैं, अभी तक मार्केट कुछ भी मोमेंटम नहीं दे रहा है। ठीक है, वेट कर रहे हैं स्टिल हम। अराउंड 1 घंटे से इस ट्रेड में, 1 घंटे से इस ट्रेड में एंटर किए हैं हम, 1 घंटे पहले, और अभी तक मार्केट कोई भी मूवमेंट देने को रेडी नहीं है। ठीक है, बेटर रहेगा वेट करते हैं हम लोग। और अराउंड 11-12 डॉलर के आसपास का प्रॉफिट है, जो कि ब्रेक इवन के आसपास ही है। ठीक है, देख सकते हो मार्केट फिर से फॉल करना स्टार्ट कर चुका है। फ्लो फ्लो में प्रॉफिट लेना सही नहीं रहेगा अभी। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम कुछ आ नहीं रहा है। चलो ठीक है, वेट करते हैं, क्योंकि एसएल लॉस में अगर हम लोगों ने होल्ड किया है तो प्रॉफिट में भी होल्ड करेंगे।
बीच में निकलेंगे नहीं, ठीक है। ओके सर, बॉट का एक्सेस कैसे मिलेगा? देखिए, आपको yoforexai.com पे जाना है, ठीक है। क्रोम पे जाइए, वहां पे लिखना है आपको yoforexai.com। आफ्टर दैट आपको बॉटम पे नहीं, टॉप पे आपको देखने को मिलेगा यो फॉरेक्स डायनेमिक हेजर ईए, ठीक है। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको वहां पे उसका प्राइसिंग वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। अभी हमने इस बॉट को एक दिन के फ्री ट्रायल में रखा है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो आप ट्राई। अगर आपको फ्री ट्रायल एक्सेस करने में कोई भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो हम लोगों ने एक यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड कर रखा है इससे रिलेटेड, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन है या फिर रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैट सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो। मैंने उसका लिंक अपने लाइव चैट में पिन करके रखा है, आप उस पर क्लिक करो, आप हमारे चैट सपोर्ट टीम से कनेक्ट हो जाओगे, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। तो ट्राई कर सकते हो एक बार, ठीक है। सुरेंद्र कुमावत, हाँ। और अगर आपको ये स्ट्रीम पसंद आ रहा है तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। और ये लाइव स्ट्रीम डेली 10 बजे से 6-7 बजे तक होता है, ठीक है। जहाँ पे लाइव ट्रेड करके दिखाते हैं हम, लाइव क्वांटिटी डाल के लाइव प्रॉफिट बना के दिखाते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे 1% का भी अगर कुछ नॉलेज गेन करने को मिलता है इस चैनल से, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी अराउंड $20 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, वेट करते हैं। देखो, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो बहुत तेजी से फॉल करेगा मार्केट, लेकिन प्रॉब्लम एक यही है कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है अभी ज्यादा। सर, आप क्या फंडेड अकाउंट में करते हो क्या? नहीं, ये मेरा रियल अकाउंट है। देखो, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, वेट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पे अगर मेरा MT5, ये जो देख रहे हो ये इंटरफेस, ये मेरा MT5 का टर्मिनल है, ठीक है। और मैं जो ब्रोकर यूज कर रहा हूँ उसका नाम है फ्लेक्सी मार्केट। ये देख सकते हो, ये मेरा अराउंड 1 लाख USD का अकाउंट है, ठीक है। और इसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ और ये मेरा रियल अकाउंट है, ये प्रॉप फर्म वाला मेरा अकाउंट नहीं है। और मैं ज़्यादा प्रॉप फर्म को ट्रेड नहीं करता हूँ। ओके, तो आप भी इस ब्रोकर को अगर यूज करना चाहते हो तो आप fleximarket.com पे जाके आप साइन अप कर सकते हो, ठीक है। इजी यूपीआई डिपॉजिट विड्रॉल सिस्टम इस पे अवेलेबल है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा फंड डिपॉजिट और विड्रॉल करने में, ठीक है। चलो अब ट्रेड पे फोकस करते हैं। देख सकते हो फिर से मार्केट सेलिंग कंटिन्यू कर रहा था, फिर से बाइंग, मतलब अभी टोटली साइडवेज है, तो होल्ड ही करते हैं इस ट्रेड को। और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हमने जो इस ट्रेड को जब से लिया है, अपने लोग स्टॉप लॉस तक इसको होल्ड किए थे। तो अभी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि इस ट्रेड को प्रॉफिट तक भी होल्ड करें, पूरा प्रॉफिट टारगेट आने तक का भी वेट करें, ठीक है। क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस हिट होने का भी वेट कर रहे थे, लेकिन नहीं लिया मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस, तो अभी हम लोग टारगेट आने तक का वेट करेंगे। अभी अराउंड $20 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, $21 के आसपास का चल रहा है, ठीक है। होल्ड करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या डिसाइड करता है। बीटीसी को देखते हैं एक बार, 1 मिनट। बीटीसी में कुछ अगर मूवमेंट देखने को मिलता है तो फिर उसमें भी ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये एक सपोर्ट जोन था, इसको ब्रेकआउट किया मार्केट ने, और फिर यहाँ पे भी एसएल हंटिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एसएल हंटिंग हो रहा है, कुछ खास मूवमेंट नहीं है बीटीसी में भी। तो गोल्ड पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा ट्रेड अभी रनिंग है।
तो अच्छा, अब ये बताओ, ये जो ट्रेड मैंने आपको दिया था, कौन कौन लोग अभी इस ट्रेड को होल्ड कर रहे हो, ये चीज बताओ। टारगेट क्या है? टारगेट मैंने रखा है 4145, जो कि अराउंड 1:3 के आसपास का टारगेट है। अगर मार्केट इस लेवल तक नहीं भी आता है तो एटलीस्ट 1:2 तक तो होल्ड करेंगे इस ट्रेड को, ठीक है। सर आपका फंडेड रियल में 99,445 है क्या? हाँ, ये तो बल्कि हमारा छोटा सा फंडेड ये फ्लेक्सी मार्केट का अकाउंट है, ठीक है। इसमें अभी हम लोगों ने ज्यादा फंड डिपॉजिट नहीं किया है, ठीक है। सर जी इस ट्रेड का टारगेट बता दीजिए। ये 4145 लास्ट टारगेट है, और अगर आप 1:2 पे निकलना चाहते हो तो एटलीस्ट आप इस लेवल तक होल्ड करना है इस ट्रेड को, 4148 तक, ठीक है। और 4145 हमारा लास्ट टारगेट है। और एसएल आप लोगों को मैं बता देता हूँ, प्रॉफिट पे बाद में ध्यान देना, पहले एसएल देख लो। एसएल है 4158। इससे ज्यादा एसएल मत लेना। अगर इससे ज्यादा एसएल दोगे तो फिर आपका ट्रेडिंग करने का कुछ मतलब बनता नहीं है, ठीक है। ओके, तो लेट्स होल्ड होल्ड दिस ट्रेड। अराउंड $15 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। कुछ मार्केट मूवमेंट देना नहीं चाह रहा है, ठीक है। 1 घंटे से 1.5 घंटे इस ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं हम लोग। कुछ खास मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो अभी भी होल्ड ही करेंगे, क्योंकि बहुत एसएल के बहुत पास आके ये मार्केट फिर से डाउन हो रहा है। डाउन ट्रेंड को फिर से ये फॉलो कर रहा है। अगर देखो ये ट्रेंड लाइन देखोगे ऊपर से जो ये वाला आ रहा है, मैंने जो ये एसएल रखा है, इसका लॉजिक अगर पूछोगे तो बस यही लॉजिक है। अगर ये इसके ऊपर ब्रेक करता है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये अगर निकल जाता है, तो मार्केट बहुत तेजी से बुलिश मोमेंटम शो कर सकता है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि ज्यादा लॉस में निकले, उससे अच्छा कम लॉस में निकल जाना, ठीक है। तो इसीलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट को ड्राइव होने देंगे। जो भी लोग इस ट्रेड में बने हुए हैं बने रहिए, ठीक है। होल्ड करिए इस ट्रेड को। क्या हुआ मोहम्मद कासिम, सुबह से चिल्ला रहे हो तुम, और बड़ा प्रॉफिट भी नहीं हुआ। देखो मैं तो अभी जस्ट 1 घंटे पहले मैं आया हूं। मेरा नाम सुमित है। इससे पहले मिस्टर पीएचडी ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। तो देखो, मार्केट से अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेके चलते हो कि मुझे मार्केट से डेली प्रॉफिट लेके ही जाना है, तो फिर ये मार्केट आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप लॉस कर बैठोगे इस मार्केट में। अगर मैं आज बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाया हूं तो कोई इशू नहीं है, मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है कि मैंने आज सुबह से कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं किया, ठीक है। क्योंकि मार्केट पेशेंस चेक करती है, आपका डिसिप्लिन चेक करेगी। डेली मार्केट आप प्रॉफिट लेने के पर्सपेक्टिव से अगर आप डेली आओगे तो फिर आप लॉस कर बैठोगे। आप मेरे बातों को मार्क कर सकते हो, ठीक है। मैं जो चीज बोल रहा हूँ, आप अगर मार्केट में डेली प्रॉफिट लेने के लिए आते हो तो फिर ये मार्केट आपके लिए नहीं है। मार्केट आपको बड़ा लॉस भी देगी, और जब आपको बस आप अपने आप पे कंट्रोल करना है। जब आपको लॉस हो तो भी न्यूट्रल रहना है, और आपका जब प्रॉफिट हो तो भी न्यूट्रल रहना है, ठीक है। और अगर नहीं कुछ होता है तो वो आपके डिसिप्लिन को दिखाता है कि आप सुबह से कुछ नहीं किए, कोई ट्रेड नहीं लिया, आप बस अपने सेटअप का वेट कर रहे थे। आपने अपने सेटअप का वेट करते करते कोई ट्रेड नहीं लिया, आपको कोई सेटअप नहीं मिला, तो ये एक कहीं ना कहीं आपके डिसिप्लिन को शो करता है, ठीक है। पहले आप लोग एसएमसी पर ट्रेड करते थे। देखो, एसएमसी एक ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो कोई ब्रोकर नहीं है जो एसएमसी पे हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। और मैं एक ही चीज बोलूंगा आप लोगों को कि आप
जितना बेसिक सेटअप रखोगे आप अपने ट्रेडिंग का, उतना आप प्रॉफिटेबल रह पाओगे। और जितना ये एसएमसी, आईटीसी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, भरे पड़े हैं इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। कॉन्सेप्ट्स बहुत भरे पड़े हैं, ठीक है। अगर आप उस वो सब कॉन्सेप्ट्स को अगर सीख लो तो आपके लिए ट्रेडिंग करना ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो, मैं आपको एक एग्जांपल कल भी दिया था, आज भी दे रहा हूं। अगर आप कल ज्वाइन नहीं हुए थे तो मैं आपको अभी बता देता हूं। एसएमसी के अकॉर्डिंग क्या है, ये लेवल एक एफवीजी का एरिया है, ठीक है। और अगर आप एफआईबी का देखोगे तो ये तो एक सेलिंग का सेटअप बन रहा है। और अगर आप एसएमसी को अभी फॉलो करोगे तो ये कहीं ना कहीं एक बाइंग का ट्रेड बन रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एसएमसी आईटीसी को मत देखो, बस नॉर्मल सा अपना सेटअप देखो, कैंडल के साइकोलॉजी को समझो, मार्केट किस और फ्लो हो रहा है। आपको इस चीज से मतलब नहीं रखना चाहिए कि मार्केट बुलिश शो कर रहा है कि बियरिश जा रहा है, मुझे क्या। आपको पैसे बनाने से मतलब है, ठीक है। मार्केट बुलिश मोमेंटम शो करे, बियरिश मोमेंटम शो करे, नो मैटर। आपको जिस तरफ पैसा बन रहा है, या फिर मैं आपको यही बोलूंगा, आप जो भी स्ट्रेटजी या जो भी कुछ लगा के अगर आप इस मार्केट से प्रॉफिटेबल हो तो आप यूज करो, कोई इशू नहीं है। आप जो भी स्ट्रेटजी यूज करके आप प्रॉफिटेबल हो पाते हो, आप उस स्ट्रेटजी को यूज करो, नो इशू। पहले आप लोग एसएमसी पर ट्रेड करते थे, अब टेक्निकल का ट्रेड क्यों? देखो, एसएमसी भी एक टेक्निकल ही एनालिसिस है। मार्केट में दो तरह का एनालिसिस किया जाता है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, जो कि बस प्रीवियस जो भी उसका डेटा होता है, लाइक वो देख के लोग इनिशिएट करते हैं ट्रेड, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि लोग यही सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, ये सब देख के लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं, ठीक है। प्रीवियस हिस्ट्री देख के इसमें, लाइक देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, टेक्निकल का मतलब हुआ कि देखो यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिला, तो इस जिस जिस लेवल पे देखने को मिला तो ये मार्केट के लिए क्या हो गया, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। तो इसको बोलते हैं टेक्निकल। और एक होता है फंडामेंटल, जो बस आप इस देख सकते हो कि 4 ईयर में कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया। तो फंडामेंटल एनालिसिस से अगर आप ट्रेड करोगे तो आप इन्वेस्टर बन सकते हो, ठीक है। आप इन्वेस्टिंग वगैरह सब करोगे तो वो सब के लिए फंडामेंटल एनालिसिस आप सीख सकते हो, कर सकते हो, नो मैटर। लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो या फिर अगर आप ट्रेड करते हो, इंट्राडे ट्रेड करते हो, तो आपको ये थोड़ा बहुत सीखना जरूरी है। गौतम चोकशी, हाय, वेलकम टू आवर स्ट्रीम। कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग? ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो हमने जो एंट्री लिया था, फिर से मार्केट पूरा कहीं ना कहीं साइडवेज हो चुका है। उसके बाद रैंडमनेस है मार्केट में आज, ठीक है। एसएल क्या लगा है? एसएल आप 4158 के आसपास लगा दो, क्योंकि मार्केट अभी कुछ मूवमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूं, ये देखो हमने इस जगह पे एंट्री किया था, उसके बाद मार्केट क्या मूवमेंट दिया है, देखो पूरा साइलेंट हो गया। मतलब 2 पिप्स 3 पिप्स भी मार्केट मूवमेंट करने के लिए सफिशियंट नहीं है, ठीक है। तो इस मार्केट में ट्रेड करना सेफ नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि फालतू का एसएल जाएगा। फालतू का एसएल लेने से बढ़िया है कि आप वेट करो, जब मार्केट में मोमेंटम आएगा तब ट्रेड लो, ठीक है। तो एसएल मैंने इसीलिए अपना बहुत छोटा रख रखा है, अराउंड 30 पिप्स का एसएल रखा है, और टारगेट अराउंड 1:3 रखा है। अगर मार्केट एसएल लेगा तो नो इशू, हम अभी मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। फिर जब मार्केट में कुछ हमारा सेटअप दिखेगा तो हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टिल होल्ड कर रहे हैं इस ट्रेड को। 4158 पे एसएल है, 4155 पे हमारा एंट्री हुआ था। अगर आप लोगों को मेरा ये पीएनएल दिख रहा होगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी अराउंड ब्रेक इवन के आसपास है। तो ड्राइव होने देते हैं इस ट्रेड को। और ये वाला जो ट्रेड देख रहे हैं आप, ये बॉट ने ऑटोमेटिक ट्रेड इनिशिएट किया है, तो वेट करेंगे स्टिल। गौतम चोकसी, गुड।
और आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, आपको ये स्ट्रीम कैसा लगता है। अगर आपको ये इस स्ट्रीम से 0.1% भी अगर आपको सीखने के लिए मिल रहा है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रॉफिट बनाओ, ठीक है। क्योंकि मार्केट में आजकल स्कैमर्स का कमी नहीं है। आपको यहाँ पे देख सकते हो मार्केट फिर उसी लेवल पे आ चुका है, ब्रेक इवन के आसपास, ठीक है। तो वेट करते हैं और देखो, अब अगर आप ये चीज को देखोगे, मैं चलो एक चीज नया चीज आप लोगों को, जिन जिन लोगों को वैसे तो मोस्ट ऑफ ज्यादातर लोगों को ये चीज पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूँ, फिबोनाची कॉन्सेप्ट। क्योंकि मार्केट तो अभी कुछ मूव दे नहीं रहा है, तो इससे अच्छा मैं आपको कुछ एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, मार्केट ने क्या किया, यहां से यहां तक एक बाइंग मोमेंटम शो किया, ठीक है। तो मार्केट हमेशा ऐसे नहीं चलता है, पूरा ऊपर ऐसे ही नहीं जाएगा। समझ रहे हो मेरा बात? एक सेकेंड, हाँ ये देखो, मार्केट हमेशा ऐसे ऊपर ही नहीं जाएगा। मार्केट को अगर फिर से इससे भी ऊपर जाना है तो वो एक रिटेस्ट लेगा एटलीस्ट। अब कितना तक रिटेस्ट लेगा ये तो किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या कितना तक रिटेस्ट ले सकता है मार्केट और कब रिवर्सल आने वाला है, ये चीज भी आप इससे समझ पाओगे। तो यहाँ पे क्या करना है, एक आपको टूल दिखेगा फिबोनाची करके, आप इसको लो टू हाई पे सेट करोगे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अब इस लेवल का मतलब आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। ये जो 0.3 का लेवल है, ये 0.3 का जो लेवल है, ये क्या बताता है, अगर मार्केट इससे ऊपर है तो मार्केट अभी सेफ है, मार्केट अभी बाइंग दिखाना चाह रहा है, मतलब बुलिश मोमेंटम शो करना चाह रहा है, ठीक है। अगर मार्केट 0.5 तक आता है तो फिर यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। कितना टाइम क्या होता है कि इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर मार्केट क्या होता है, तेजी से फॉल कर जाता है, ठीक है। तो फिबोनाची कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें या तो मार्केट 0.3 से पुल बैक लेगा या फिर 0.5 से पुल बैक लेगा। अगर मार्केट इससे नीचे जाता है तो इसका मतलब वो पुल बैक नहीं है, वो रिवर्सल है। तो आप पुल बैक और रिवर्सल को इस तरह से आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। जिन लोगों को ये चीज समझ में आया एक बार कमेंट में लिख सकते हो, और जिन लोगों को इस चीज से रिलेटेड कुछ भी अगर कंफ्यूजन है तो वो लोग पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं अभी और मुश्किल से 5 मिनट अब स्ट्रीम करूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे टीम मेंबर आपको ज्वाइन करेंगे, मिस्टर प्रियेश, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पूछ लो, जिन लोगों को इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कंफ्यूजन है, जिनको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो लोग पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये 1 मिनट पे काम नहीं करेगा कभी भी। एटलीस्ट 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस सब टाइम फ्रेम पे आप यूज करोगे तो ये और अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। चलो अभी के लिए देखते हैं मार्केट फिर क्या करना चाह रही है, क्योंकि सुबह से तो साइडवेज है, एक मोमेंटम दिया, उसके बाद फिर से साइडवेज हो गया है। इस जोन में हम लोग यहाँ से ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं और अभी तक फिर से कुछ मूवमेंट नहीं दिया है, एक ही लेवल पे ऊपर नीचे कर रहा है। रैंडमनेस ज्यादा है आज मार्केट में अभी, ठीक है। हमारा एसएल भी जाएगा, नो इशू, क्योंकि बहुत देर से इस ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। मोटिव क्या है अलग अलग ट्रेडर का लाइव आना? देखो, बेसिकली ये चैनल पे आपको मिस्टर पीएचडी ही लाइव आते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो लंच टाइम पे जाते हैं तो हम लोग जो है, मेरा नाम सुमित है, ठीक है, हम लोग बड़े बड़े फंड्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो वो लोग जब लंच पे जाते हैं तो मैं आप लोग बोर ना हो, आप लोगों को कुछ न्यू लर्निंग
जिससे आप लोगों का हो पाए, आप लोग कुछ नया सीख सीख पाओ, इसीलिए आप मैं लाइव आ जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग बोर हो गए, वो लोग मिस्टर पीएस तो लंच पे चले जाते हैं, तो आप लोग बोर हो गए, इससे अच्छा मैं आपको कुछ नया सिखाने के लिए अराउंड आधा से 1 घंटा के लिए लाइव आता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको भी इससे रिलेटेड अगर कुछ सीखना है तो आप डेली ज्वाइन कर सकते हो। तो आपके ऑफिस आ सकता हूं मैं? हाँ, आ सकते हो। यहाँ दुबई में है हमारा ऑफिस, और भी बहुत सारे जगह पे है। अगर आप दुबई विजिट करना चाहते हो तो आ सकते हो, नो इशू, ठीक है। इंडिया में कहाँ है? इंडिया में हमारा अभी ऑफिस फिलहाल नहीं है, ठीक है। आप हमारे दुबई वाले ऑफिस में विजिट कर सकते हो, बहुत बड़ा ट्रेडिंग फ्लोर है हमारा, ठीक है। तो हमारी टीम है आपको सिखाने के लिए, गाइड करने के लिए, ठीक है। कैन आई गेट अ ट्रेडिंग अकाउंट इफ आई कम टू योर ऑफिस? देखो, आपको ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे नहीं दिया जा सकता, ठीक है। आप ऐसे हमसे विजिट करने के लिए मिलने आ सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे नहीं देते हैं हम लोग। आपको उसके लिए बहुत सारे टेस्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे प्रोसीजर हैं, आप हमारे चैट सपोर्ट टीम से बात करके इस सब बारे में बात कर सकते हो। हाँ, अभी के लिए तो मैं इस ट्रेड पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट ईयर आने वाला हूँ दुबई, तो आपसे कांटेक्ट करूंगा। हाँ, आप जरूर करना, ठीक है। आप जरूर कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम चैट सपोर्ट टीम से बात करके आप आ सकते हो। और वैसे भी हम लोग बहुत जल्दी एक मीटअप रखने वाले हैं, तो मेक श्योर आप उसमें आओ, हमसे मीटअप करो, ठीक है। इज 2% प्रॉफिट गुड? या इट्स गुड, बट यू नीड टू फॉलो योर रिस्क मैनेजमेंट एंड रिड्यूस योर स्टॉप लॉस। देखो, 2% जो आपने बोला, ये आपका विजन बहुत सही है, ठीक है। क्योंकि कितने लोग क्या करते हैं कि 100% प्रॉफिट का एक्सपेक्ट कर लेते हैं मार्केट से। जैसे ही मार्केट में एंट्री किए, बस 100% प्रॉफिट उनको चाहिए। इस तरह का विजन वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव नहीं कर पाते। अगर आप 2%, 5%, 7%, 10% का भी अगर आप प्रॉफिट बना पाते हो तो इट्स अ गुड प्रॉफिट। कितने लोग क्या करते हैं, देखो मैं छोटे से अमाउंट का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 2% पर डे, देखो रियल राल्फ ट्रेडिंग, हाँ ऐसा ही करके आपका कुछ नाम है, मैं आपको बताता हूं। देखो, आपके पास अगर $100 है, तो आप 2% का प्रॉफिट करोगे तो आपके लिए $2 हुआ, ठीक है। जो आपको बहुत कम लगेगा, जो आपके लिए बहुत कम है, ठीक है। आप शायद $2 पर डे, 2% पर डे नहीं बना, मतलब बना तो लोगे, लेकिन आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे। तो आप क्या करोगे, उससे ज्यादा प्रॉफिट बनाने जाओगे। आप $100 से अराउंड $20, $10 बनाओगे, तब जाके आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन ये क्या है, ये 10-20% ये सब आपको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सर्वाइव नहीं होने देगा। समझ रहे हैं आप मेरा बात? क्योंकि देखो, अब मैं
आपने जो 2% बोला, मैं इसका रूल समझाता हूं आपको। देखो अभी के लिए मैं ये चार्ट को हाइड कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब आप देख सकते हो ये मेरा रियल अकाउंट है, ठीक है। अब अगर मैं आपको अपना फंड दिखाऊं, ये देखो 99,445, अगर मैं इस पे 2% बनाता हूं, या फिर आपके पास अगर इतना फंड दे दिया जाए और आप अगर इस पे 2% बनाओगे, तो शायद आप सेटिस्फाइड रहोगे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपके फंड के ऊपर डिसाइड होता है। अगर आपके पास हेवी फंड है तो आप 2% इनफ हो जाता है एक दिन के लिए, ठीक है। 2% बनाओ और बस उसके बाद मार्केट को छोड़ दो एक दिन के लिए, ठीक है। माई एम ऑफ 2% इज फ्रॉम $1 लाख। सेम चीज मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अगर आप इस फंड पे 2% बनाओगे तो दिस इज अ हेल्दी प्रॉफिट एंड योर विजन इज वेरी गुड। राल्फ ट्रेडिंग, अगर आप इस माइंडसेट से अगर आप इस मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आप इस मार्केट में बहुत लंबे टर्म तक सरवाइव कर पाओगे। एनीवेज आप प्रॉफिट भी बना पाओगे बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो 2% अगर आप लोगे मार्केट में, तो इसके लिए बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप $100 पे अगर आप ट्रेड करोगे तो उसका माइंडसेट कुछ और होता है, उस टाइम आपके माइंड में कुछ और चलेगा। लेकिन अगर आप जब 1 लाख USD से ट्रेड करने उतरोगे मार्केट में, तो वो एक अलग माइंडसेट से होता है ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आप $100 से आप ट्रेड करते हो और वही वाला माइंडसेट अगर आप 1 लाख USD पे अगर आप अप्लाई करोगे, तो कहीं ना कहीं रिस्की हो जाता है, ठीक है। हाँ, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू आपको इतना कुछ एक्सप्लेन कर पाया। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। ओके, ट्रेड एक्टिव है या एसएल लग गया, चेक करना पड़ेगा ब्रो। अभी तो चल रहा है, ठीक है। अभी अराउंड $6-7 के आसपास का लॉस चल रहा है मेरा। एसएल मेरा तो इस लेवल पे है 4158। ट्रेड अभी रनिंग है। अगर आपको अगर थोड़ा सा भी अगर अनकंफर्टेबल लगे तो आप छोटे से लॉस में हमेशा निकल जाया करो, ठीक है। क्योंकि इस मार्केट में आपका हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको ही करना है एट द एंड, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड सही रहेगा, आप प्रॉफिटेबल रहोगे इस मार्केट में। इवन विद 100 USD और 1 लाख USD इज द सेम, दैट्स माई स्ट्रेटजी। देखो मैं यही बोलूंगा, आप जिस भी स्ट्रेटजी से प्रॉफिटेबल हो पाते हो आप वो स्ट्रेटजी यूज करो, नो इशू। क्योंकि मैं जो स्ट्रेटजी यूज करता हूं, आप शायद इस स्ट्रेटजी या मेरा जो सेटअप है, ये सेटअप, क्योंकि देखो सभी लोगों का अपना अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है, ठीक है। तो अपना अपने आपके अंदर कौन सा, आप किस ट्रेडिंग स्टाइल में आप कंफर्टेबल हो पाते हो, ये चीज आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। आप किस सेटअप में कंफर्टेबल हो पाते हो, कितने फंड से। देखो आप अगर 100 USD से कर रहे हो, ठीक है, रेगुलर आप 30 दिन या 2 महीने अगर आपने 100 USD से ट्रेड किया, ठीक है, और 2 महीना खत्म हुआ और आप उससे अगले दिन आप डायरेक्टली 1 लाख USD से अगर आप ट्रेड करने लग जाओगे, तो आप उतना मतलब आपका माइंड सही से, आपका माइंडसेट काम नहीं कर पाएगा। मतलब आप कहीं ना कहीं लॉस कर पाओगे उस मार्केट में, कर दोगे। मैं इनफैक्ट ये बता रहा हूं, अगर आप 100 USD 2 महीना ट्रेड किया और उसके बाद 2 महीना खत्म होने के बाद फिर आप तीसरा महीना जब स्टार्ट किया, आप डायरेक्ट 1 लाख USD से अगर आप ट्रेड करते हो, तो आप कहीं ना कहीं उसमें लॉस करने का चांसेस आपका उसमें ज्यादा रहेगा। आप समझ पा रहे होगे मेरा बात, ठीक है। फंड को हमेशा धीरे धीरे स्केल अप करना चाहिए। लाइक देखो आपने इस महीने 100 USD से ट्रेड किया, ठीक है, और उसके बाद 1 महीने आपने 100 USD से ट्रेड किया, तो आपका साइकोलॉजी क्या हुआ कि आपका $100 पे आपका साइकोलॉजी फिक्स हो गया। मतलब आप अब $100 का PNL जो होता है, $100 के अकाउंट में जो PNL जितना रन करता है, तो आप उस PNL को देख सकते हो, एटलीस्ट आप उस PNL को मैनेज कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, अब उसको थोड़ा सा स्केल अप करना है। आप अब $100 से क्या करोगे, $200 से ट्रेड करोगे। अब उसके बाद आपको फिर से 1 महीना उस पर प्रैक्टिस करना है। लाइक आप PNL एटलीस्ट देख पाओ, कैसे आप मैनेज करोगे ट्रेड को। अगर आपका लॉस भी चलता है तो कैसे मैनेज करना पड़ता है, तो वो आप
खुद प्रैक्टिस करके ही सीखोगे। एक बार में आप अगर आप जैसे एक दिन आप 100 USD से किए और अगले दिन 1 लाख USD से करोगे तो वहां पे लॉस होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे स्केल अप करो अपने फंड को, ठीक है। धीरे धीरे आप जैसे 100 USD से कर रहे हो तो एक दिन 100 USD से किया, अब अगले दिन $1 लाख से, ऐसा मत करो, इसमें लॉस होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। आप देख सकते हो जैसे कि मैंने ये ट्रेड बताया था, कुछ मूवमेंट दे नहीं रहा है और मैंने बोला था अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो हम अपना एसएल एक्सेप्ट कर लेंगे। जितने भी लोग इसमें थे अपना एसएल एक्सेप्ट करके निकल जाओ, मार्केट के साथ अभी फाइट मत करो, क्योंकि कुछ भी मूवमेंट नहीं है। आप अगर सुबह से मार्केट को देखोगे तो वीक बाइंग आ रहा था, ठीक है, उसके बाद एक ये सपोर्ट जोन को ब्रेक किया, उसके बाद एक हेवी सेलिंग देखने को मिला हमें, जो कि बहुत अच्छा मूवमेंट था। बट हमने इसमें भी प्रॉफिट बनाया था। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं इस स्ट्रीम पे उनको देखने को मिला होगा, हम लोग एटलीस्ट यहां से लेके यहां तक का कैप्चर किया था। उसके बाद ये मोमेंटम आया, हम लोग पुल बैक का वेट किए, फिर से यहाँ पे सेल ट्रेड ऐड किए थे, ठीक है। फिर मार्केट यहां तक आया, यहां तक का इतना दूर का मूवमेंट कैप्चर किए, फिर हम यहाँ पे एंट्री किए थे, री एंट्री किए थे इस वाले कैंडल पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, टोटली साइडवेज हो गया। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एसएल लगा दिया था सिस्टम पे, जो कि अभी एग्जिट हो चुका है मेरा ट्रेड। तो अगर आप लोग भी इस ट्रेड में एंटर थे तो आप लोग निकल सकते हो। कौन सा पेयर है? ये गोल्ड का पेयर है, XAU USD। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके लिखोगे तो ये चार्ट आपको विजिबल होगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ओके। तो थिंक पैड करके एक बंदा पूछ रहा है कि विच प्रॉप फॉर्म इट इज। ये कोई प्रॉप फॉर्म मैं यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ये मैं कोई प्रॉप फॉर्म यूज नहीं कर रहा हूँ, ये फ्लेक्सी मार्केट का मेरा रियल अकाउंट है। अगर आपको भी इसमें रियल अकाउंट ओपन करना है तो मेक श्योर आप इसके वेबसाइट पे जाओ और रियल अकाउंट ओपन कर लो, ठीक है। बहुत इजी मेथड है, इसमें आपको फंड डिपॉजिट विड्रॉल करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। तो अभी के लिए इस ट्रेड को क्लोज करते हैं हम लोग। इसमें एसएल अराउंड हमारा ये क्या बोलते हैं 40 पिप्स का, नहीं, मैंने 56 पे एंट्री लिया था, ठीक है। और एवरेज होते होते ट्रेड 54 पे आ गया था। तो अराउंड हमारा 20 पिप्स का एसएल इसमें गया, कोई इशू नहीं, हम इससे 1:3 या 1:4 का अगले ट्रेड में प्रॉफिट बना लेंगे, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड इस तरीके से काम करता है, ठीक है गाइज। अभी मैं आपसे कल मिलूंगा, बाय फॉर द डे। आपको अभी अब मिस्टर प्रियस ज्वाइन करेंगे। जिन लोगों को कुछ भी सीखने को मिला मेरे बातों से या मेरे एनालिसिस से, तो आप लोग मेक श्योर इस स्ट्रीम को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलता हूं मैं आप सभी से कल फिर इसी टाइम पे, ठीक है। अभी के लिए मिस्टर प्रियस आपको ज्वाइन करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि मार्केट का क्या है, ठीक है, कैसे मार्केट रन करता है, कैसे फंड मैनेज किया जाता है, एवरीथिंग, ओके। तो आज के लिए डन करते हैं, अब मिस्टर पीएस आपको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बाय एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट गाइज, ठीक है। बाय। राल्फ ट्रेडिंग, थैंक यू ब्रो, वी आर ऑलवेज विद यू, ओके, ओके, बाय।
So, hello guys, how are you? Welcome you back, and let's talk about the market. So, ThinkPad, which platform it is? ThinkPad, it's Flexi Market. Okay, Flexi Market. Okay. तो गाइस कैसा लगा आपको हमारे सुमित जी का कन्वर्सेशन? So I hope you guys have enjoyed his teaching and his learning. तो उन्होंने काफ़ी सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन दिया था. ठीक है, आई होप ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन वर्ड्स कुछ यूज़ ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने. एंड इट वाज सिंपल, इट वाज लाइक प्योर. लाइक अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो ट्रस्ट मी, ही इज़ योर मेंटर. ठीक है, एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, सो दैट आई वाज आल्सो लिसनिंग व्हाट ही वाज सेइंग. तो कोई टेक्निकल वर्ड्स भी नहीं यूज है, कुछ भी नहीं किया. इट्स सिंपल, प्लेन एंड ऑल, लाइक सिंपल थिंग. ओके, तो एनीवे उनका जो एनालिसिस का जो तरीका था, इट वाज गुड ऑल द वे. आई वाज आल्सो लिसनिंग. तो आई होप यू गाइज हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस. एंड चलिए गाइज, फिर आज हम लोग बात करते हैं. तो this all about now guys. देखिए, right now we have made some changes in the softwares. Okay, we have upgraded the softwares, so that's all it is. Okay, so still we are using guys dynamic hedger. Okay, we are using this dynamic hedger, and right now how many trades are going on guys? So right now we have a 5 trades which is going on over here, and behind this guys there are like four, I think four stop loss. One, I think stop target got hit up. So let me check guys whether the target hits or not. So okay, so I think the sell stop got hit up. So okay, no issue. No issue guys. यहाँ पे हमारा जो है लॉस हुआ. this one. Okay, we have only one profit and rest it's loss. It's loss from the morning. तो guys चलिए आज पूरे मॉर्निंग में देखते हैं क्या हुआ. So from the morning itself guys, this is 27th. ठीक है, we have made this profit, this profit, this profit, this profit, this profit. Guys, after this we have upgraded our software. Okay, bot. Now it comes with the AI features. Now it can take, technically it can take trades. Okay, so this is the feature that we have upgraded ourselves. And guys, if you are still using, अगर आप तो एक अपडेट मारोगे तो यू विल डेफिनेटली रिसीव एन ऑटोमेटिक अपडेट ऑन दिस वन. Yes guys, so chaliye guys, we have all upgraded. Hi, it's okay, fine. So there are a lot of comments guys and a lot of things that has been happening. Chaliye guys, Mohit Kamadash, Surinder Kumar said hi Surinder Kumar, how are you? आपका VIP टेलीग्राम है? Yes, it's all good. So let me see what it's this. सफर जी hi, hello. PNL said hi. लक्ष्य खान, मैंने एग्जिट कर दिया. It's okay, fine. You have taken the trades. It's okay. सर आपका फंडेड रियलमी 999445 क्या है? Yes, it is the real account guys. This is my account. This is me, Priyesh, Flexi Market. We have a Flexi Market server, and this is the account. On the first day guys, I have used this account. Okay, this was, so उसमें एक loss हुआ था, and then after that I have shifted to this one. Now we have this account. It's all running up. Okay, so this is the profit. This is something that is running up. Now anything else apart from this guys? Forex Expo me 2% day a trade. Refer trading 2%, 2% per day. So yes, it's a very good. Okay, but it depends upon the your quantity size. If you are a like beginners, अगर आप beginner हैं तो obviously 2% is good. Don't take more than that. Okay, and rest of the capital keep aside. Don't
कंसिडर दैट 2% टारगेट, बिकॉज ये आपको लॉसेस भी हो सकता है. तो अगर आप प्रोफेशनल हैं एंड यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस 1 years or 2 years more than that, then yes, you can take more than 2% profit. Okay, so don't limit yourself with proper like risk management and once you have an experience of 2 or 3 years, guys, then try to shift from systematic trading to discretionary trading. वहां पे आपका प्रॉफिट का रेशियो ज्यादा होगा, बिकॉज अलाउ योर सेल्फ टू बी लेस गेट एक्सपोज फॉर द मार्केट एंड ट्राई टू ट्रेक मोर ट्रेड्स. ओके, जितना ज्यादा आप ट्रेड लोगे उतना ज्यादा आप एक्सपोज होगे, जितना कम ट्रेड लोगे उतना कम आप एक्सपोज होगे मार्केट में लॉसेस से. तो गाइस, try to become move towards from systematic to discretionary one. Okay, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सिस्टमैटिक इट्स ओके, गुड गाइस. तो ये जो बॉट है रफल था कि थैंक यू सो की इट्स ऑल गुड रन. सो गाइस, आई डोंट हैव टू आंसर ऑन टू मच ऑन टू हेयर. इट्स ऑल गुड. चलिए गाइस, बॉट पे बात करते हैं. इट्स ऑल गुड ओवरऑल. गाइस, जहां तक कि मैं देख सकता हूँ बॉट्स में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया है. ए स्मॉल अपग्रेडेशन दैट हैज टेकन प्लेस. ओके, and this upgradation, guys, you can use it, no issue. और यहाँ पे सेम है, और स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस लाइक नथिंग चेंज, इट्स ऑल रिमेन द सेम 17. सो लॉट साइज जो इंक्रीमेंट होने वाला था इट वाज ऑल दिस मच, एंड इट्स ऑल लाइक सेल की जगह बाई पे आया है 157. so 154. so guys, we have only reduced the stop loss with the 5 points. Okay, now the market में movement ज़्यादा आएगा, it's okay, fine, but let's see what it does. Okay, so we have to do nothing now, let the market manage all the position, guys. Okay, Surendra Kumar said hi. Hello Surendra, how are you? कैसे हैं आप? How are you? How your trading is going on? Bala Murugan, how much loss in this account? So Bala Murugan, let's check out the losses. Yes. So right now it's running up in a losses of $24. Okay, so this bot right now, this two is done by me, and the rest of them is bot managing. Okay, over here. So it's okay, fine, it's okay. History, guys. Let's check. So guys, overall we are running like 7% drawdown. Okay, not more than that. It's okay. 7% in 3 days. It's okay, fine. It's acceptable. Not more than that. Okay, so it's good. इसको नहीं
So guys, let's talk. Yeah, volume is muted. Yes, it's muted. Yes, now it's okay. It's okay now. It's okay now. Okay, okay, fine. So Bala Murga, yes. Now you had put $5 stop loss. Yes, we have upgraded and now we have changed it to the $5. So let's see how the market reacts to this. Okay, and we have also changed. Now we are not seeing any growth. We are not seeing any good results so far, guys. So that's why we have like I have auto adjusted it. Okay, it's done by us. Gautam Chusuk, buy or sell. So Gautam ji, we are running with dynamic hedges. So I cannot tell you right now to buy or sell. Okay, this is not our choice. Well, अगर आप देख करके buy or sell करते हैं तो you must don't do that, but do trading with your own logic, with your own understanding, because देखिए nothing is going to work. Okay, neither SMC, neither ICT, neither indicators, neither any kind of technical software that runs on the market, that's available on the market. If you want to become a successful, then you can use either as a hedging software, a software that bases your target and stop loss instantly, which act as a protector of your account. Okay, and act as a sword that it just book the profit exactly the way it has to book. That's the thing that you want to have, guys, and rest of the thing, guys, we don't know about the stuffs, right? So anything that I don't know, I just don't have any comment on to that. This is what you need to do, and then you become just take trade with your own understanding. Even if you have a losses, then it's fine. Okay, no issue, guys. Just bear with the losses. What this software does is dynamic hedger. It just readjusts the position. Okay, if you have taken a trade, like buy, market goes against you, it's okay. It's automatically going to readjust your position. Okay, with higher lot size. So you don't have to worry much, guys. It's okay, fine. It's all going good, and everything is good. Now, in order to become a profitable trader, guys, it takes the time. Okay, you have to work a lot on yourself. You have to really work on your mental models. Apart from that physical model, guys, technical analysis and all those things, it's really need to have. ब्रदर, उर्दू में बात कर लिया को सबको समझ में आ सके, कोई लोग इंग्लिश स्किल्स ज़्यादा अच्छी नहीं होती है. सॉरी ब्रदर, बट इंग्लिश तो आपको सीखनी पड़ेगी ना. सॉरी, you have to learn English. So anyway, आप यहाँ पे इंग्लिश भी सीख लो. गौतम चौकसी, बाय और सेल. ओके गौतम, यू आर आस्किंग फॉर द बाय एंड सेल. सो let me give you, let me take let me see the chart, guys, how it's happening, what the market is doing. And okay, so what the market is doing, let me see over here. uh, yeah, so guys, the market is making an ascending triangle pattern. Okay, if you see on a monthly basis, it's making an ascending triangle pattern. Okay, let me jump up to the 1 hour time frame. So guys, in 1 hour time frame, the market is consolidating. Okay, now let's see, guys. Let me go back to 1 hour time frame, guys, and it's doing nothing. So either the market, okay, let me see. So check out this, guys. Okay, this is the market. Now on 1 hour time frame, guys, the market is literally going sideways. These are the position taken up by our softwares. So let me make it little, let me hide something over here. Trade positions that we need to hide, trade orders we need to hide, trade history need to hide, trade positions. Okay, now let me go back to the setting. Look, guys, everything is normal over here. Now you can understand things lot better. So see, right now the market is consolidating. We cannot do anything up over here. Either the market will go or either the market will go down. It's going to hit the SL. SL handling is going on, that's fine. So consider one thing, if the consolidation is happening, that means either two things are going to get happen. This you can consider as a new order formation. The market is having a new order, that is which is get formed, or there is a high volatility zone. Okay, the buyers and sellers are literally confused. Might be there could be a news event, or might be there could be something.
So after a long expansion, guys, if you see on today Asia expansions, like if you go on to the H4 time frame, guys, let's see how it has expanded. Like so very well, it has expanded. The market was expanded. Like you see from the 4035 guys level, it market came down to 4158. Okay. Now if you see, look at the daily time frame, guys. The daily time frame, it looks like this. Okay, it's just nothing, it's just an ascending triangle formation. Okay, maybe there could be a breakout, but guys, I'm telling you, the ZOW USD is going to get hit all time high. Okay, and when it does that, just mark my word, guys, it's going to hit exactly the way it's going to do. Now most of you are not familiar with it, but as I said, there is a lot of technical analysis is involved, and if I try to go deep into that, it will take time. आप लोगों को, you guys will not be able to understand, but yeah. So right now, guys, whatever you guys are doing, just hold a buy position. So right now, let me go back to again 1 minute chart or 5 minute charts. Okay, so guys, if you want to buy, then buy at 4160. Okay, target should be around, look, I should not give it or should not tell it, but still I'm doing Gautam Chokski, still I'm doing. Please get your learning fast from your Forex. Okay, we have the all education. I have wrote a book of here, you can ask for the book, it's out for the sale, guys, and all the lecture series, it's all out. So you can ask it and you can learn from this, because it's really very highly complicated stuffs are there, but explained in a very easy and simple way. Okay, you don't have to go anywhere, because that you have written so many books, guys. Most of the books which you are reading is written by non-trader. Now it's not going to help you. Me as a trader, I know what works in the market, so I have written only those points which required for you to become a trader. If you really look, I'm vibrating at higher frequency, right? If you want to vibrate yourself for the higher frequency, then you have to read me. Okay, and my works. Okay, there are people, so many people are coming and watching. Okay, this, right? Fine, that's how you're going to learn, that's how you're going to learn up your learning curve. Okay, if you don't learn my style, you will not be able to, because I'm an evolved one. Okay, now if you are evolving, then you need to learn everything. Okay, most of the stuffs. Well, anyway, guys, just look at this. Okay, okay, we are doing this, we are doing this, fine. Okay, this are the two things. Now when we go back to the 1 minute time frame, guys, look how market is so beautifully going up. Now let me show you all the positions. Okay, trade positions and trade history, trade orders, profit and loss, that's also getting showed up. So I don't have to show the profit and loss, because guys, they can show it over there itself only. So I'm hiding this one. Okay, we don't need this necessary. Okay, so trade quantity, I mean trade quantity is also, guys, not necessary for you to see. Okay, it's necessary. Okay, trade quantity is necessary, because only then you can able to understand ki, okay, this lot was taken up by the bot. Okay, now what bot does, how the bot is going to manage all those things. Okay, let's see. Okay, fine. Yes, yes. Okay, I'm listening. Some Tamil. It is a demo account. No, no, no. It's not. It's not a demo. So let me show you. Look, this is the real account, guys. And let me see. This is account. This is the flexi market. This is our broker. This is me, Priyesh. This is your Forex. Okay, guys. And this is the real account. Okay, this is the real ESG. So there is no such type of thing exists. You can, if I click it,
it's all like this. Okay, so you can see this is the login. Like if we click on to this one also, this is all registration and all that. Okay, so we have it's like all everything is real, guys. Now yes, now see one thing, guys. This is the real. Okay, so it's all good for you. I hope you have some Tamilan. It's okay. It's okay. Yeah, Hamid Muhammad Ali. Okay. Now it's all good. Like, let's see. So, guys, the market is rising. So, Gautam Chosky, as I told you, buy. Look how the market went. Boom, boom, boom. Boom, boom. So, look how perfectly the market went to the upside, guys. So, if I cannot right now close this position because, okay, there are three orders, na. So, let me to buy this. Okay, I'm buying 10 orders. Fine here. So, overall, the position opened is like five position has been opened right now. So let's see, let's wait for the market because it's going to go in the profit. So it's okay, fine. So we have one reverse position opened up. So that reverse position has nothing to do with it because this dynamic hedger automatically manages the losses. Guys, if you are a individual, if you are a beginner, guys, try to understand one thing. Don't go in the market without this proper risk management. And trust me, guys, if you don't have a risk management proper way, even if you have a strategy that pays you 90% of the time, that gives you a winning percentage, you're still going to end up losing money. Okay, so what you need to do is, guys, you need to manage your risk, okay, with a proper target and stop loss. What and who does faster than you? It's dynamic hedger. Okay, so this is what it does. And look, guys, right now, if you are having a too much big capital, like suppose in crores, if not in millions, okay, this dynamic hedger is automatically placed stop loss and target price. Okay, and now you can readjust it according to, look, if I want, guys, I can readjust. This is the target price. If I want, if I feels like the market is going, I can readjust it. Okay, according to myself. I can do that. That's what I can do. Okay. And if I can delete this order, I can place SL, I can place target price, I can do anything. Okay. It all depends upon me. So this this is the best thing. Okay. Just simply adjust like this. Okay. If the market is moving fast, guys, it is basically designed for the scalpers. Okay. If you guys do scalper, if you do momentum, just click buy, 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 buy. That's it. Done. Even if it go against you, go click on sell, sell, sell. That's it. Once you are done, guys, you are done. Okay, you don't have to do anything else apart from this. Okay. Yeah, okay, fine. It's okay. So at what price, like how far the market will go up, guys? Now let me check how far the market will go up. Okay, let me check over here. So the market goes up 4170, right? The market can go up to 4204. Okay, but still it's not that much active, guys. It can retrace from 4165. Okay, it can. Now so get ready. So let the 41 target one, target should be 4165, 4165, and next target 4204, next 4204 target. Okay, and make sure your SL should be cost to cost. Okay, that's what you need to do. So look, you can re-entry into in this market very soon. ठीक है, आप एंट्री कर सकते हो मार्केट में बार बार.
ठीक है, हर बार आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका लॉस हो गया तो फिर आप दोबारा एंट्री नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका ट्रेड, अगर आपका ब्रेक की मतलब जब बाई प्राइस से थोड़ा सा भी नीचे गया, अगर आप क्लोज कर दोगे तो आपका कैपिटल प्रोटेक्शन होगा। तो मेक श्योर गाइस फोकस ऑन कैपिटल प्रोटेक्शन एज मच एज यू कैन। Lots of losses this account and some previous accounts. Have you earned on this? Zubair Hussain, yes. Yes. Okay. It all it does is that manage it. So Zubair Hussain, you don't have to say a lot of things. It's just one time. It's okay. Fine. Okay. So chat system, if you text randomly, you will get blocked up by the bot. Okay. So we cannot do anything, and maybe you will get removed. So don't text so many times. Okay. The one time text is enough. Okay, because there are a lot of people that are looking onto this one. Okay, it's not possible for us to like see so many texts. Yes, we have, once we have texted, we have seen, that's it. Now it's up to us whether to respond. So thanks, Zubair Hussain. So Zubair Hussain, try to understand one thing, like this is a bot. Look guys, how it's going in profit. Look, it's going in profit. It's good, it's going over here. Now try to understand one thing. Okay, this market, whether it goes up, it goes down, wherever it goes, it doesn't matter. If you don't know anything about the market, okay, this momentum hedges, sorry, dynamic hedger is always going to manage your position. Okay, it's not never going to give you losses, even if you have a losses. Okay, even if you think that okay, you need too much money, too much profit, even though you made too much profit, but dynamic hedger, what it does, it makes sure that your position, either you get a small loss or either you get a small profit. Look, something is better than nothing. Okay, and that gives you a surety. This gives you a surety that yes, this market, it's all okay. Now don't have to go for this big profit. Yeah, it's okay. Yeah, it's okay. It's okay. Okay, so we don't mind that much. We don't mind that much. Zubair, you're from which country? Okay, Bangladesh. Okay, okay. So you are my neighbor, right? Then you are my neighbor. So I was born in WB. I was born in WB India, WB India, but now in Habibi Dubai. Okay, yeah. Yes. See guys, it's running up. Okay, it's running up in the profit. So it's still going up. It's okay, fine. All those things we have 75k, 75 USD profit. Slowly, slowly, let's recover this one. Let's see how it does. This so alhamdulillah, alhamdulillah. Uh, 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 so it's Radhe Radhe. I don't understand. Okay, what to say, because we both belong different communities. We both community brother, but purpose is one. And lots of love, guys. Lots of love to you, Zubair. So anyway,
Yeah. Now let's see. Let's talk about this one, guys. Okay. So right now we have it's going in the profit. It's okay, fine. It's okay, fine. See, guys, how the market is trading. It's going towards upside. Okay, the trend has been changed. It's moving towards upside. We see this as a small retracement, guys. Okay, if it does, that means the market is going will go upside. Okay, it's just a small order block. Okay, nothing else. Like over here, guys, let me show you one thing. Yeah, so most probably most of you guys got stuck up over here. So guys, look, this was the 14166.72. This was the high. Over here the market came down to this part. Okay, this part was the low, that is 4149.39. Right now, see, the market has retraced to upside. Now consider this as one as order block. Okay, now guys, trust me, it's like we have seen on Fibonacci. If you turn on to 0.68, that which is the golden ratio, from that point the market always shows a reversal no matter where you are. So if you drop this line from over here to here, the market will always like reverse. Okay, so what the market did, the market went down to the backside. Now, if the market is going towards the downside, okay, what is going to take? Okay, now we have a fair value gap, we have a suspension block, we have a proportion box, and we have institutional entry for bills. Now this considers the whole act as an order block, right? Now this is what you guys ICT students have been using. So keep smiling, guys. ICT students might be smiling. Oh my God, no more Kurtosis model, right? He started ICT. So anyway, guys, it's so anyway, let me this is what I said. So guys, you can follow that. Okay, it's okay, no issue about that ICT one. It's okay. Yeah, so my kurtosis is also is same, and in the ICT is also like, I'm not here to burn anyone bridges, anyone of you guys. So remember that my model is a little bit complicated, so over here, but right now I want to see that there is a proven statistical data, guys. Whenever you make a good profit, you book 25 or 50% profit. Yes, right now over here, guys, stop loss automatically gets hit. So that's what target automatically get hit. So see, all of this are running in profit. Some are running at the break even point. So right now we cannot do anything much further. So we have to stay over here. So now we have another order that is left, still left. Okay, like we have buy this or the limit orders like 1 2 3 4 5 5 orders that are still left. Okay, that has not yet been triggered. The market is patiently waiting for the this thing. Now look, we have a one cell candle. The better, if we see all the buy candles, okay, in a normal London PM session, it doesn't make feel comfortable because the market may expand, or like it gives us a sorry comfortable because the market seems that the market is trending. Okay, but if we don't see, like in New York session, if we see consecutive bull candle or consecutive bear candle, that means it becomes a very dangerous, man, because when and how the market is going to reverse, guys, it will be a lot more difficult, lot more difficult, guys. Okay, and look, the first foremost job is to protect your capital. Balaji Murugan, I like your confidence. Thanks, buddy. Thanks, buddy. Fazu Zulfiaz. Fazu, sorry, I couldn't read your name. Fazu Zulfiaz. I mean, yeah. So, yeah, nice. Okay, hi. Yeah. So, Bala Murugan, I really appreciate your this one, but
Remember, your goal is to become a trader, right? That is why you're watching me. Now, I cannot give you any concepts. I cannot teach you. I cannot come here and show you buy this, buy that. I did once. I know it's okay, but I know, but I wanted to show you that it is risky for you. Okay, it is risky for you. But one day when you will be walking at my shoes, this is what you will be doing. This is what you will be doing. Okay, so 400 lots, 500 lots, because it needs confidence. Okay, it comes with a confidence, so you have to. So you have to. Sorry, 5,000 lot is big much. It's like 500. Okay, not more than that. So it's, yeah, someday I wish you can reach, but all you can do is you have to sit for the execution, guys. Okay, you don't have to do anything else, but you have to sit. Okay, and learn the execution. Learn. Look, there are so many things happened in marketing electronic from 1980s, right? And till now, so far, like, people are still making losses. Okay, so many stuffs came still, but try to understand, those people who have mastered the market have mastered themselves, because it's all about the 90% psychology and 10% is technical. Okay, technical is easy, it can be managed, but only if you manage it in proper way. Okay, so this is the fourth day. Balamurgan, yes, it's fourth day. It's fourth day, sir. Bala Morgan, what you do, by the way? Just let me know a few information. Like, you've been watching us and you're not get connected. Like, I have never talked to you. So yesterday also you were there. Day before yesterday you were also there. So what you do as a profession? How long you've been doing trading? So, and you're from where, Bala Morgan? At the rate God Circle 3649. Hi. Hi God Circle. So why hi at the rate God Circle? Why 3649? Hi God Circle, I need to visit your channel now though. Okay, it excites me. Your number excites me. So it comes out to be Nilesh Patel. So yeah, you prepare for some exams, practical. Yeah, it's good. Yeah. So खत्म, कुछ नहीं.
Yes, Tamil Nadu. Okay, from South India. Okay, okay. Why? Very nice. I visit to Tamil Nadu. I visit to Kanyakumari and all these things. Kanyakumari, Thiruvananthapuram, and Tiruvinanthapuram. Amazing place. Okay, very nice, amazing place. So I visited to that one. It's amazing. So how Bala Murugan, like what you do as a profession? Like you are working or you just a student or you are a full time trader? Oh, super. Yeah. So yeah, right now we are in Habibi Dubai. That's okay, fine. Yeah, but remember, Balamurgan, this is more important for you to understand that in trading, there you have watched so many people, right? So many people come on YouTube, they give lot of knowledges like buy here, sell over here, do this, do that. Just do one thing, okay? Remember that following others is not going to make you a profitable trader, okay? Yeah, temporary you can be for profitable for temporary period, but if you see in the long run, you're not profitable. You have to work hard in the end, okay? No one is going to come to save you. You have to balance your bicycle by yourself. Okay, right now you're taking help of a mentor is good, but I want to trade using bots. So visit Forex AI and you can manage yourself, guys. Okay, look, one thing I have not told you guys, if you click on this one, you can manage the buy and sell position from your end, okay? And once you place the buy order, it automatically places buy. That's all. It's very good. I'm not doing anything because I'm just letting it go. Okay, let it go hit. Okay, what it does. So visit your Forex AI Premium. So the website looks like this: www like www.eoforexai.com, and the name of bot is dynamic hedger. Okay, so the past years I was making loss in trading. Okay, so fine. Now how much loss did you made so far? Like how much loss did you made? So right now, see guys, it's running up in losses, so it's okay, no issue, fine. About 5 lakhs. Okay, it's a big amount. It's a big amount actually. So if you want to recover your losses, okay, watch my executions video. Okay, watch my execution video. Okay, videos of previous days. So over there, guys, I have explained everything from lecture, and it's don't focus on PNL. The only way you have to focus on PNL is because I made 7 figures trade. I made almost like 1 millions, 2 millions, 4 millions a day. Remember, guys, those profit I just wanted to show how the professional traders make fun out from this. Okay, so I want you to learn from that, not from this. Now you can always manage your risk properly because you have seen that me taking from 44k to 6 million, and even some days I was like around 500 to 600k. I have turned it into 6 millions in a day. So I just want to show you how what's the power of executions looks like, what how the pro traders take trades and how they react, how they act and how they react. Okay, it may be very simple, but trust me, they are far more powerful than anything. Okay, now if you want to recover losses was, yeah, it's okay, fine. So Bala Morgan do one thing, it is very amazing.
Don't do any trading. Okay, just stop. Just focus on execution first. Master the mental model for yourself. Once you, what is the mental model? Look, mental model is like when you see the chart. What does it makes you feel comfortable? Does the chart look very super noisy, or is it disturbs you? If it disturbs you, it feels like you don't understand. Then skip to those chart that makes that looks super easy. Okay, there where you have see that it's a trend, then only enter into the market with proper risk management based on that. Look, I have seen people with indicators, they made profitable, they became millionaire. There are people who use smc ICD also, they become millionaire. Look, there is a, this is not a point where you become a millionaire, guys. This is a point where you are watching this euphorics premium, and me as a mentor, I cannot say that this work and that work. No, I have no anything. Okay, what is more important is, unless and until if you don't focus on yourself, you will never become a millionaire. Yesterday you closed the video in the middle. Yes, Balamurugan, I closed it because I had to go, because the live is still happen at 7 p.m. Okay, not more than that, and I had some work, so I had to go. So that's why I closed that one, right? So yeah, the trade was still running up. I understand. Yesterday close, yeah. So what you have to do is you have to focus on yourself, Bala Murugan. Look, write down your weaknesses, write down your strengths. When you look at the chart, make a journal entry, because look, no one is going to come and tell your mistake. You have to be honest from yourself. Like what you understand most. Okay, every professional trader have figured out themselves how. Every professional trader has tried to figure it out themselves, that what works for the market. It's not the concept, guys. It's not the a indicator, or it's not. Okay, a professional trader can make money using anything. Okay, drop me indicators, drop me any concepts. Okay, I can show you within a snap of fingers, guys. I can make profit out from them. Okay, you don't have to. Even though I have trained so many people with the indicators, and they use. I told them that, yeah, I'm not going to share my concepts. I'm not going to share my Katosis model. I'm not going to share my this and that. You come up with your problems, and I'm here to solve your problems, not mine. Okay, and by doing that, actually I am learning his mentality. Okay, if you don't understand me, how will I understand you? Okay, if you don't allow me to enter in your brain, then how will I solve the problems? Okay, and if I solve your problems, then you need to be open, you need to be honest from yourself. Only then I can able to help you out. Lalit Pawar said hi. Hi Lalit, how are you? So you have to allow me to enter in your mind. Okay, without allowing me, I will never able to understand your problem, because it could be a mental problem, it could be kind of a any problems. Okay, maybe you lack knowledge, maybe you are like worried about some sort of problems, that it could be your financial one, it could be your personal problems, it could be anything. Okay, there is no need for the problems. But if you don't, and you do have, sometimes when problems comes, you don't have solution because you don't know what to do, then you go to whom? The person to whom you trust. Okay, and you watch his guidance, or you implement on his guidance. So over here, try to understand, you need to bend yourself. Once you bend, then only you will make profit. Okay, see this, guys, this one, this is going it's going down. It's okay, fine. So let me be back. Okay.
So, guys, good sir. I like your way of trading. It's been interesting concepts. Okay, so I'm not trading actually. I'm not. Yeah, you can. But what previous videos? Okay, right now bot is trading. Right now, bot is managing risk. Bot is managing risk. Okay. So there was someone who asked that. I don't know. I have to just maximize this one, guys, once more because I'm not receiving any sort of this one. Okay, so HFT. No, it's okay, fine. So yeah, the viewers are still watching it. It's fine. Okay. Uh, yeah. Okay. So it's bot managing everything. Okay. So guys, it's bot managing everything. So let's see what it does. So I think initially some few entries were taken up. So it was I wouldn't have done that. So it's quite confusing. I know it's doesn't sound like this, and it's like 136. So guys, do one thing. Like right now, I'm going to close everything. I'm closing all the trade, guys. Okay, and I'm closing, deleting all the orders. Okay, I'm closing all the positions, and I'll delete all the orders. Now see, it's all done. Now let me see. Look back to the chart. What the market is doing. So right now, if I look at 1 minute time frame, guys, 1 minute time frame, like it has all been done. So it's all set. Everything has been closed up. Now, where the market will be heading, guys? So market will be heading sell side. Okay. So we'll do one thing. Close with loss. Done. Just I have to close few positions. Okay. And I have the order which I have all one order like delete. Okay, so I cannot do this. Stop loss order. So SL is over here. So I can delete SL. Yes, one order has been deleted. Okay, this order get deleted and this order buy stop is get deleted. Okay, fine. Rest of the orders it remains it's the same. Yes, one.
Okay guys, so we have placed the trade. Okay, now let's see what it does. So either two things will happen guys. Either the market will hit this target or the market will hit the stop loss. Now if you look at the stop loss goes over here. I understand this becomes a very choppy, this becomes a very this much guys, but let it see. Okay, we have closed everything. Now we are starting it for this one. Okay, let's see. So guys, see we have bought at 4158.21. Okay, we just did simple thing. Now the sell stop is like 0.17, so it have increased, and the stop loss is 4153. Okay, it will get executed at 4153. Now let's see the chart over here. 4153. Okay, it will get executed the sell orders, because right now we have bought it. We feel like the market will go up. Let's see where the market goes. Okay, whether it goes up, whether it goes down, it's okay, fine, but let us see how the market reacts to all those things. Now earlier guys, it was really super like choppy, it was like super difficult. Bot name, yes, the bot name is Forex, sorry, dynamic hedger. Dynamic hedger. So visit yoforexaivebsite.com. yoforexai.com. Let me make it clear. www.yoforexai.com. So guys, visit this one and then you will be like it's okay, fine. Okay. Hey guys, make some noise. Should we like let's see, let the bot does manage all the things. I know it's little bit executions orders, so past, so I'm going to hide it. Doesn't looks good. Like show trade position, trade orders, sorry, trade history. I'm going to hide this one guys. Okay, so it's just simple. So I've hidden that. Now it looks very simple, clear and precise. Okay, we have a buy side and we have a sell stops and we have a target price. It looks very clear now. Okay, now does it look good for you? Now it's okay, fine. So it's, this is the way guys it looks like. This is the way that you understand. Earlier things were like super choppy, super bad, and yeah, like it will be very hard for someone to understand actually what market is doing. Okay, now it's very simple guys. You can see if the market will go up or where the market will go down. Like if you want to see the price, how much it's going, we can add that also. So profit and loss, we can add that one also. Stop loss and TP level. So show period separators, no. Ask price, deadline, trade notification, no. Click panel, countdown to bar close, yes. Colors is okay. So period separator that we don't need guys. Trade positions. So position open in the price chart. So let me see like trade history, like okay, so it looks good now. Okay guys, we are running up the profit. We don't have to go multiple times. Like how much profit is going on. So consider this as a 5 times. Right now it's 39, so it's 7. So consider into multiply with this a 5. So you'll get the exact number. What is the profit that is running up over here? So it's okay, fine. So everything aligns in a very systematic way, guys. If the market goes above, it will hit this target price. If the market goes, it will hit the stop price. Now we have a reverse entry over here. Now reverse entry, sell stop. Okay, if you see little go down little further, we have our target price. Okay, this is the sell, this is the target. So these are the 4 things, guys, that you need to understand. And once this get activated over here, the market, because market goes sideways, okay, all you have to do is just let it go, let it ride.
Okay, guys. Now see how the market reacts like this. Now everything is visible up over here. Now the profit and loss color, it's okay, fine. So these are the stop loss. Like sell stop is over here. Total profit, it should be multiplied by 5. Okay, and okay, so this is now we are up over here. Let's see how the market reacts to this one. Okay, I hope this is very clear, guys, and you can understand this one. We have to just wait. Okay, we don't have to like rush for the market, like whether it's going, oh, whether it's going up or it's going down, guys. No, just wait and relax. So my few advice is, guys, those who have guys dynamic bot, please update it. Click on the update and you will get all the receipts, update receipts. Okay, guys, see how precise I bought it over here. Now market is reversing. Okay, let's see what happens. Now when we look onto the chart, just think one thing. Uh, okay, let me sign over here. Morning. So guys, this is the market, and yes, now this is what I have opened. Let's see, guys. Market is, guys, consolidating. You see from past yesterday, the range is between 4170, guys. Okay, now you look at this range, guys. Let me improve the timeline. If I go to H1, okay, I think all I need is H1, and that's what it could.
Now we look at this one, guys. So everyone over here, right now we have 4173, which is the highest point. Here we can see this one, and over here that is 4137. Okay, this also act as the high point. Okay, sorry, low point. Now you see, guys, from 4138, it has the market has rallied to this one. Now over here we can see that the market is still consolidating. Okay, either the market will go up or the market will go down, but we have little imbalance over here, guys. So let's see how market will react to this one. I believe that the market has to rally up, but guys, it will not happen right now. We have to wait for the New York session. Okay, without the New York session, there is not much momentum is going to come. The market remains the sideways. Now, do one thing, guy. If the market is going sideways, so get ready, because there will be a lot of momentum is going to come in the market. If I said so, sell. Oh God, yeah. So why did you said sell so? I don't understand. I don't understand, because if I trade with your logic, would you be able to explain? So you need to love Fikr. Just do one thing. You need to focus. Okay, you need to learn what is the chart. Okay, the like the model that you're using. I mean, it has to be good one. Okay, then only you can able to succeed. Otherwise, it's very hard for you to this. So mellow animations. Yes, I have given you all the information. I hope you can go and check it out from there. Now, okay, guys, this thing looks very simple. Target price, buy, sell, buy, sell. Okay, we have a reverse position that is opened up. Now all we have to do is set idle and then wait for the market movement. If the market shows a very positive movement, it's okay, fine. If the market didn't, let it be. Like, we are not running up in losses. Like, look, what's the amount of losses? It's only $7, right? This is the precision entry that everyone should have, but it comes with the time lag. So don't worry that all of you, please listen very carefully. Don't get like super frustrated that okay, I'm not able to get a very close proximity of buy or sell. Okay, it takes time. When you understand the market, it takes time. Maybe randomly you will make money initially, that's called a beginner luck, but it doesn't happen. Like, initially when I started trading, I still remember this day. The first day when I entered in the market, I entered with around somewhere around 10k Indian rupees. Okay, and I traded in the Indian market, and the first ticker that I took was Bank of Baroda. Okay, and what happened? I bought it at somewhere around 354 in Indian market. It's back 10 years ago. So what had happened that I just bought it, and then suddenly the market rallied up like anything. Okay, so I just had a one lot, and then I was like, oh my god, I just the one lot consists of nothing much, just made a few like pennies. Like, it was, I made somewhere around 10 Indian rupees. So I thought, okay, so I was happy, like, okay, the trade went. The next trade I took, okay, what I did, I entered in the future market, a bank. Okay, and in the future market, I entered with a lot. So the one lot consists of 1800 quantities. And what happened? I just like entered in the trade, and I sold it at 20 point. Okay, can you imagine 1820? I was ended up, making almost, guys, 40,000. 40. So it was like a big amount for anyone, because even if I deduct the taxes and brokerage and so many charges, I was like 30,000. So I made someone's salary, a monthly salary. I made it like that. Okay, and I was thought like, oh my god, what I did, so much money. I just started with 10k and I made this is amazing. I thought I'll be a millionaire, I'll be a billionaire. So the fun thing what happened, guys, I came back to the next day. Okay, market. So now from 10k to 38k profit, my balance was reflecting around 48k.
And what I did was that I re-entered the position. Okay, and I like okay, in out of thing, like I was thought I will become a lock. I will be dropping Lamborghinis and all, like all those things. I couldn't sleep, and the next day I took the trade. Okay, and what happened? I just triggered that in the future market, and it was an expiry one. Okay, so I just blew up my account. I just lost 58K within one shot. So I remember it was a Thursday and we had an option expiry on Thursday, every Thursday, and that doesn't works out to be well. So uh, I was left with 10K. Now I thought that okay, I have protected my capital, but still I had capital. I can do it back again. So consider that too. This is not a good day for me. Now I re-entered back again. Okay, in the market. What happened over then? Then I didn't took trades. So I thought I need to learn some stuff. So I was kept on busy learning the technicals and then this that. What happened after that, guys? I just took a re-entry again in the market. So on the expiry, yeah, I bought penny stocks. I bought the under one, and the market gave a. So guys, what happened after that? That it was an expiry day on Thursday. So there was some bank news, and it was a month of quarter. So quarter results have been out of the companies, and some of the like companies like Sun Pharma, Cipla, they're all like rising up. So, okay, HDFC Banks was the one of the greatest game changer at that time. Still now, still it's like going ahead. So suddenly Bank of Baroda it has a good news. Few fundamentals were quite good. The market suddenly like just shoot it up like 10%. Trust me, guys, that one 10K, okay, turned it into almost, you have no idea, guys. I've turned it into more than 6 lakhs, more than 6 lakhs. I just booked it. So I bought it at somewhere around zero point 0.5, and it shooted up like more than somewhere around 200. Yeah, 200 it shooted up. I was like, oh my god, what happened? Oh, so I shoot up 200, but I booked somewhere around 150. So I still remember that one. Now what happened that after that the market went down. So slowly that the beginner's luck was getting over. So I was losing the value. So it took me next 6 years to become profitable, guys. And after that I just became profitable. So it's okay. It's okay. Fine. It takes time. You as an individual, it will take time. Okay. Now, guys, the market is not going much, not doing further good. We have to wait. Okay. Fine. Now look at this guy. We have the buy side and we have the sell side. It looks perfect. It looks good. It's all running great. Now the market is still going down, so we are up running up somewhere around $50 losses. Okay, fine.
So guys, let's get started over here. So some Tamil, no, it's not like that. Okay, fine. Yeah. Trade Lux Infinity. How are you doing now that you- Swaraj India? Hi, bro. Hi, how are you? And how are you doing now that you have? I still don't understand. Still, that sounds vague. Is the market on sale or buy now? Okay, it's consolidating. It's consolidating. Trade luxury is consolidating. Okay. Yes. Yes. So don't do any buy or sell because I have just bought it, guys, just to see how the market react, because the market will react only at the New York open session. And for me right now, the market is consolidating, it's sleeping. Okay, it's not doing anything. So don't buy right now. Avoid trading, avoid trades, guys. Protect your capital. Okay, not every time is a buy time. Not every time is a buy time. Okay, so protect your capital. Trade in New York session. Trade in New York session. Okay, today holiday US market. Yes, it's holiday, that's why. Yes, US holiday is there. US holiday is also there, so we don't expect much movement. So guys, just see one thing from past, like over here we see the market is consolidating. Okay, yesterday there was the news, the market rallied in New York PM sessions. After that, stool, and in the morning AM Asia's AM session, market rallied up like anything. So after every expansion, guys, there's only one thing that happens, that's consolidations. Okay, and in consolidations there are two things that you should know. First is new order formation. So first is order formation or the volatility zone, or so this is what it's important, guys. So new order formation, volatility, or kill zone, or else the second part is expansion or reversal. So I hope you guys will understand, learn to understand this thing. If you understand consolidation particularly, you will not enter into the trade, and you will enter only when there is an expansion. Okay, so why people lose money in the market? Because they get trapped in consolidation. Okay, they don't know when to buy, when to sell, and they are hoping that, oh, the market will go up, oh, this is that, this and that. Well, the market is going near nowhere. Okay, try to understand, it's going nowhere. If you understand things properly, it will be easy for you to make an execution. Okay, based on your own observation. Now see, I didn't expect anything. I just kept it simple.
Let the market go wherever it goes. I don't have to do anything. Let the market stay over here. Now it's going negative that side. Okay, fine. How much trade is going on? It's going a loss of $53. That's okay, fine. I'm happy with it. Okay. I don't have to take too many trades in order to prove myself or where the market is going, why the market is going. No, guys. I don't have to. What I have to do is I have to focus on what market will be doing in coming future. That's what I need to focus on, because this is the temporary trend. It can change wherever it goes. Okay, but it cannot. Okay, we don't have any kind of confirmations, or we don't have any like control onto this market that yeah, we can control right now. No, we cannot. We have to adjust ourselves to the market conditions. That's the only way for the survival. So guys, let's see. It's running up. The market went against me. So the buy side was going against. Okay, let's see. We have a $154 losses. Let's wait. Okay, we will not do anything. We will just wait for this market movement and let's see what it does.
Okay, guys. Yes, I'm back. So, see, guys, it's really very difficult to trade the trade position in consolidation market. But what it does, okay, it how effectively it manages the position. Like you don't have to worry. Right now, the trade has been executed. Now it's running up in the losses. But I have a reverse trade that has been executed. If the market goes little fall downs, guys, these positions will get automatically okay, and if it executed and if the target will get hit, guys, this positions will automatically get cancelled. Okay, so you can see the time. Okay, let's see, the time is 13:12:03. The time is 13:12:02. Within a second, okay, it places the trade. This place was in nanosecond, 13:12:02. Okay, same timing, guys, over here, same timing, 13:12:02. Okay, same time, 13:12:02. So how many orders has been placed? Like one, two, three, four. Guys, four trade in like just nanosecond, just 1 second, and four trade is been placed with proper target and stop loss. See this? This is really phenomenal, guys. Now, if you're trading with more lot size, guys, I'm telling you, this is the best that you need to have as a trading tool, because this is how you're going to protect yourself. It acts as a sword and it acts as a shield for you as an individual, as a beginner, guys. I highly recommend you to have this one. Now it's all about this one. Let's talk about this one. Like once this trade was taken up by me manually, so 1 second, 1 second, and then 1 second, also 1 second. It was like two. So I'm just 1 second delay. Look, like manually. I just bought it manually. Okay. So all I did was this. All executed at the same price. Just 1 second delay. So it's okay, no issue. Guys, let's go back to this one. The market is doing nothing, it's going sideways, so we have to stay silent, guys. We cannot come up with any kind of conclusion over here. Look, if you don't know how the market reacts, just stay silent, guys. Don't over complicate trading, because trading itself is literally very complicated, but if you add something on to this, it will make super complicated, and what happens, you will end up losing everything. Now try to make one thing, okay, make trading simple. Then you have to make sure that your understanding is very clear. Unless and until if you don't backtest the data and you feels like the confidence is not coming up, you will not make money. Okay, first you need to understand the one concept, and you have to practice that for next 6 months. Only then, after seeing the 6 months, only then you will come to understand what went wrong. After that, guys, put a live money. That's how you're going to protect yourself. Okay, less than 6 months, mark my words, less than 6 months, you're not going to be a profitable one. Okay, you need to practice it. Muhammad Ullah said hi. Hi Muhammad, you're from where? MT5 वाला चार्ट हटाओ भाई, एक्सनेस का लगाओ. I understand, Naveen Laithar. I understand your problem. You want me to go live trading? Yeah, live trading, but sorry, we are running bot, but we are doing bot. Okay, but we are running bots. It is dynamic hedger. So see how the performance, how the market was rallying up. Now suddenly it came down. It's okay. Fine.
नहीं खरीद पाया बोले। Anyway, guys, uptrend में sell क्यों भाई? Yes, it's uptrend, but I have bought it. Okay, I have bought it. Okay, so the market is rising up. Fine, it's going up. Let's see how the market reacts. We have a sell side. Look, this act as a, it has been downside. Now it's going upside. Oh, guys, trust me. The market is literally unstable. Okay, because the US market is closed. US have a bank holiday, guys. We don't expect much movement because if the banking sector is closed, how can we expect much movement? So the market will not give any good movement, guys. Now, guys, the market is going up. Let's wait for the moment and let's wait how the market will react. So just wait and see, observe. We have nothing much, guys, to say. Look, it goes sideways. Entire day the market is going sideways. Nothing much to say, guys. Nothing much. We cannot come to logic. We cannot come to explanations. We cannot come to any conclusion. Like it's all going sideways. Okay, it's all going. It's really hard to find the trend. It's really hard to find the direction. It's like going in straight line, straight. They're like a heartbeat. So see, it's like for a long time it's doing like this. So we cannot come up with any conclusions. Trading is not meant for this side by market. We can try this on different pairs though. It's not that only we have to look for the this one. So let's check out some different quotes. Okay, if the market does it, let me check USD GPY. How does it looks like? USD GPY, guys. Yeah, we have seen some good moments in USD GPY. That's good. You want me to take trade, guys? We can take it. We can take some short position, but it's still rallying up. It's good. Now let's check about. Okay, so not much movements. Euro USD. That market is like closed. Euro USD market is closed, guys. No, it's not closed. I think it's closed. Yes. Maybe, yeah. No, it's not closed. Not. Yeah, it's moving. It's not closed. It's not reflecting on my one. So USD GPY chart. Let's see.
Yeah, GPY gives a very good movement, guys. It's really good movement. If you look at the higher time frame, what it does? No, it's like normal, guys. Nothing much. Nothing is simple. It's straightforward. No much complications. You can use the GPY. And let me go to the H1 time frame. If you're trading 4,200, is it possible, bhai? Yes. Yes, it's possible. It will go long. It will go long for sure. Was I taking the long position? So yes. Let's click on this one. Zao USD is let me go this one, guys. Yeah. Let it be. Now TP sell buy. Should I make it white, guys? Or should I make let me change the color. White. Let me make it white. Okay. I think yeah, it will look good. Let me go and customize the color here. Target price, stop loss, take profit line should be this. And stop loss line, take profit line, stop loss line should be this. Okay, sell line, stop loss line. So both have this have a same line. Stop loss line and profit line like same. The profit target, take profit line text should be white. Like it should be super white. Take profit line text should be super white, and sell line text, top line text, top limit price line. Okay, sell line text. I should it goes to be super white. Okay, now let me go back. Let me save it over this one. Let me go back to this one. So if you see, guys, we have a sell stop exactly at this number. We have a buy stop. Okay, target price is mentioned clearly over here, and this is the original target price for this one. So I think I need to target price for the buy side. Let me have to manage this one too. I'll have to go into the color. So chart line, it's okay, fine. Red is hidden, foreground is good. Ask line, ask price line should be this. Stop loss line, stop loss line should be right, and stop line text should be line text be red. Yes, buy line.
So guys, let's see. Market went downside. Now let me turn back to 1 minute. Okay. Look, our sell has been activated, and this is now. Let me go and check back history. Okay. So the stop loss got hit up, so it's okay, no issue. Let me go back. So our stop loss got hit like $51. It's okay, fine. Now we have a sell that is running up. Okay. Now with the higher lot, it's running up. Now we have another limit. Sell limit has been placed. Okay. Let's see how the market reacts. Okay. If this also got hit up, guys, the market will close. Okay. There won't be any other orders. Okay. If this get executed, then another something will happen. So let's see how the market reacts to this one. So we have the target price 4149. Let's see how it does. See guys, we are running up in the profit. The trend has been goes towards this one. So it's very important to have a manage. Managing the position is really very important. Let's see where this thing will go up. So we have a sell limit placed over here. Now let's see how the market reacts to this one. So with the higher lots, the sell limit is already placed 4158. When the market reaches to this level, let's see what it does. 41. What is this one? 4153. Okay. Now look, guys, the profit's already booked. So one big fall, the profit already booked. Like we are up now in the profit. See over here, we are right now. We are in profits. Let me go back. Look, $57. It's all profit, guys. The trade automatically get closed up. Okay. Now what it does? Now we will sell it once again. Okay, so we have sold it once again. Let's see how the market reacts. I think it's going to hit another target. Okay, it will hit another target, guys. So market first target was booked overall. Now we went short again. We have went aggressive onto this one. Yes. So it happened real quick. Okay. Let's see where it goes. So the entry was very precise. I understand, but let's
So anyway, guys, let's see what it does. Okay, now the market is running up, guys. So let's see how the market reacts to this one, guys. It's not something. Ish, Bhaguna brother, 0.1 lot का price का बताओ. So I'm just using 1 lot because this is the price. Okay, this is bot trading. Yes, it's okay. ठीक है, अभी थोड़ा बहुत नॉर्मल है। Ah,
Let's see how the market reacts to this one, guys. रात में डिनर क्या करते हो भाई? Let's see, guys, what we can do. So, not much, no trading today. So, we will avoid trading because the market is going down, and this one is managing the position. That's all it is. Now, let's see, 0.110 lot. So, we have a buy stop that is been placed over here, 0.17. Let's see. So, maybe I think if we see today history, like total 8K is lost, and the end day, guys, it's nothing but think so far we have made around how much, 1 2 3 4 5, so we made almost around 2700, like 2600 profits, okay, like this, $260.
So let's see, guys. Nothing much. Let this order to be get run up. Let's see what happens onto this one. We cannot expect anything. Let it run and let's see how this will get managed up. So we're not expecting something great from this, just because the market is not going, because we had made some profits over there before earlier. So it's okay, fine. Position has been reversed, guys. So guys, let's see the market. It's like going sideways. Nothing much has been happened. Brother, 0.1 lot का price बताओ. So I just entered, okay, over here. So the price is 4149.76. 4149.76. Okay. Now you will not be able to get into this price, but it's okay. You can take entries. Just hold on. Today is no trading day. Maybe the market will fall a little bit more because the New York section. So it's all this. So we don't expect any movement right now. Let's see, the market is going upside. So if it hits the stop loss, we'll be fine.
Okay, the market is going down, but it may reverse the position very soon and it may go upside. So let's see how the market will react, guys. So probably I don't think today is a day of trading, guys. So let it be, and let's wait that today is not a day. Let's see for tomorrow. Okay, and tomorrow is the end of the day because it's Friday. So I don't think so. Maybe on Monday we'll get some good moments. And tomorrow we'll be trading up in BTC, as you know, guys. Tomorrow you'll see some real good moments. Full target 4120. Yes, maybe you can keep that, but I have kept my target 4144. Okay, not much. I just kept it simple. This is what my bot is running. This is not me running, guys. Let's see what happens. Let's close this, guys.